With these lines, I, Nehal Mittal, extend a very fresh morning and warm welcome to you all on the third day of this international virtual conference, BICON 2020, which is running into its 15th year. The theme for today's BICON virtual conference is Rediscovering Career Passion, Training, and Job Opportunities in Social Sciences, Law, and Education. Biani Group of Colleges has been NAC accredited with Grade A. It has also been conferred with autonomous status by UGC New Delhi. It came into mainstream of education in 2002 as Biani Girls College. And under the umbrella of Biani Group of Colleges, we have 15 colleges imparting its education to youth in the field of science, management, nursing, law, pharmacy, education, yoga and naturopathy, and most importantly, skill development. As a team, Biani Group works on the transformation of creativity to inventions and from inventions to innovations. A research outcome of this is biosolutions and bioseeds with their offices in Japan and India. I feel honored to welcome our esteemed guests and speakers from all across the globe. Our chief guest, our guest of honor, Mr. Saeed Shahid Hussain, our guest of honor, Mr. Professor Naveen Mathur, ex-Vice Chancellor of Jagannath University, Jaipur, our Honorable Organizing Chair, Professor Manish Biani, Chairperson, Dr. Rajiv Biani, Director, Dr. Sanjay Biani, Principal, Dr. Neha Pandey, Dean Administration, Dr. Dhyan Singh Gotwal, Conference Convener, Professor Tarun K. Kumawat, HR Head, Ms. Renu Tanwal, and all the HODs, respected teachers, and most cherished dear participants. A holistic perspective of industry academia alliance collaboration is the new normal in the post COVID 19 era, leading to change and think about things differently. The Biani group of collaboration with the partner institutes that are Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan, Saitama University, Akita University, Kyosho University, Well Group, Kyoto University, ICF Food Incorporation, expresses its commitment to achieving the new normal goals in India by means of organizing BICON 2020. To search forth into this victory, we commence this session on an auspicious note according to the Indian tradition. In this tradition, we do the lighting of the lamp. We bow down humbly before Lord Ganesha, who is known as Lord of Knowledge, to seek his blessings. I now request all the dignitaries to light the lamp and symbolically inaugurate this ceremony. I request our Honorable Chairman, Director, Dean, Principal, and Conference Convener for lamp lighting ceremony. Please welcome our dignitaries.
Thank you very much, all the dignitaries. Now, I would like to invite Dr. Neha Pandey, Principal of Biani Girls College. Ma'am has 25 years of professional experience as a motivational speaker, career and psychological counselor, life coach for spirituality and personal development, designing strategies and policies for examinations and marketing, corporate marketing, business marketing, and many more. Ma'am has worked as a controller of examination and handled all pre and post examinations work. Now, I would like to request Ms. Dr. Neha Pandey, Principal of Biani Girls College, to give a welcome address and opening remarks to set the sparks flying for Day-3 of this International Conference 2020. Please welcome Dr. Neha Pandey. Why this is shaking. Okay. Namaskar. A very good morning to one and all from the lovely pink city, Jaipur. I welcome all the viewers all across the globe who are watching this virtual 15th anniversary of International Conference. It's my privilege and honor to announce the third day of this conference. And as the vision of Biani Group of Colleges is to be a global institution committed to its passion for innovation and knowledge, sharing through multidisciplinary research and development. And keeping this vision in mind, we have been organizing virtual conference this year for the 15th time. For last 14 years, we were having it in the campus, and it was a very vibrant environment where we had professors coming all across from Japan and from our partner institutes in Japan and most of the other countries. And in Japan, our partner institutes are JAIST, Saitama University, Kyosho University, Kyoto University, and we also have tie-ups with the industries so that the students can find jobs, are placeable, and for research and development, we can have student and faculty exchange. We have partners like ISE Foods and Well Group who are doing tremendously well along with Biani Group of Colleges for the mutual benefit of both the countries. And let me tell you, my dear viewers, that it has been great honor that 120 professors who have come from Japan to India, and that's a very big number for any organization. That is the belief system that the Japanese organizations or institutions and the government have developed in our institute. And 81 girls from Biani College have visited Japan through various international programs, be it conferences, workshops, and many other student faculty exchange programs. And apart from that, we've had 13 star placements. And these are the students who got the scholarship from Government of Japan or private organizations in Japan. And they completed their master's, PhD. And these girls who came from very rural backgrounds, studied their graduation at Biani Group of Colleges, and now are very independently working in USA, UK, and many European countries. And let me also tell you, friends, that we have more than 100 advisory members of the advisory board from various partner institutes from Japan. And these ties have been possible, the mutual relationship has been possible because of the great efforts by Professor Manish Biani sir. He has been organizing this conference for last 15 years. And the outcome is that we have great placements in Japan. We have students and faculty exchange programs. And apart from that, even the government recognized these efforts when Ministry of Foreign Affairs of Japan commended Biani Group of Colleges for developing mutual ties between India and Japan. And this commendation ceremony was organized at Embassy of Japan in India in New Delhi. So that was a big, great achievement for the college. And as you know, we are in the third day of the conference today, and the focus will be on rediscovering career passion, training, job opportunities in social sciences, education, and law. And purposely, we have kept the theme this time as a new normal India, academic and industry alliances, because as academician, I feel that we are doing our best. But when we go to the industry, and most of the studies also reveal that the students are not placeable,
that is the reason we need to bridge this gap and to understand from the academy persons, from the industry persons, that what is it that is really required during this point pandemic and post pandemic, that what talent, what skills will be required by the students so that they can become placeable. And during these sessions we'll have technical sessions related to education, law, humanities, fashion designing, journalism, all areas we would like to touch upon today. And I'm very happy that we have Professor Naveen Mathur sir. He has retired as a professor from University in Rajasthan. And apart from that, he held a very prestigious, very honorable post of Vice Chancellor at Jagannath University. So I really wholeheartedly welcome you, sir, for this program. We also have guest of honor, Mr. Syed Shahid Hassan Sahab, who is the chairperson of Bar Council of Rajasthan, and it's a very senior, very important kind of a position that he is holding, and that he plays a very pivotal role for the advocates for the Bar Council in Rajasthan. So with this, I would like to start this program today, and I wish all the speakers, great day today, and I think all the viewers and all the research scholars who are going to be watching the presentations, the deliberations given by the invited speakers, I'm sure they will be really benefited. Namaskar, Mathur sir. We really wholeheartedly welcome you. Thank you for joining us for this virtual conference today. So I think we have the chief guest now, so we can now move ahead with our program. So a great day to all of us and all the best for today's program. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite one and only motivational guru, the master of thoughtful knowledge, a dynamic entrepreneur with over 25 years of experience. His far reaching objective is to empower women and youth through the technical education, and he believes that there is tremendous scope in each and every youth. Our Director Academics Honorable Dr. Sanjay Biani for Presidential Address. Please welcome Dr. Sanjay Biani. Good morning. Good morning to all of you. Good morning. Good morning. And warm regards to Professor Naveen, sir. Sir, you are a guiding force and you are associated with our institution from very, very long period of time. Thank you Yes, yes. and accept my greetings of our third day of 50th BICON conference. That is the 50th time when we are organizing the same event with the Association of Universities in Japan. So thank you again. I would like to say thank you to Thanvi Sahab, who is the Honorable Vice Chancellor of Hardev Joshi Universities for the media side. And I would also like to say thank you, arigato, to the Syed Sahid Hassan from the law side. He is the chairperson, Law Bar Council of Rajasthan. Thank you so much. So I'm very happy to address in this great moment, that is a 50th time when we are organizing these types of symposium. So the basic theme of and the purpose of this symposium is to build a strong relationship between the person from the Japan and India. And second, the intention and the objective behind the organization of this symposium is to develop and to enhance the knowledge, to update the students of the all the current happenings and development uh, in the society. So this conference is focusing on the post-COVID effect on the media side, on the law side, on the technology side. But today we are focusing on the humanity side. It's very important. Science is good, more recognized nowadays, but earlier humanity is the main subject. So today
we are focusing on the humanity side. Today we are focusing on the law side, because law is also a coding of public psychology, the public thoughts, the right course of action. And today we will also discuss some management side. So again, I would like to say thank you to the organizing committee, Dr. Neha Pandey ma'am, Tarun sir, Dr. Malti Saxena ma'am, and my whole team. I appreciate your effort, and thank you so much. Thank you, Professor Naveed Mathur sir. Over to Professor Naveed Mathur sir. Thank you. Thank you very much, Dr. Sanjay Biani. I have read some of your books, also very motivational and encouraging books. It is indeed a matter of great pride and privilege for me to be associated with the Biani Girls College, which is organizing this BICON 2020 on a very relevant and vital theme, the new normal, especially discussing the post-COVID situation, the consequences of COVID pandemic, the solutions to the problem. Uh, Indeed, I am grateful and I compliment Dr. Manish Biani, the organizing chair and the research director, the convener, research and RD coordinator, Dr. Tarun Kumawat, who just telephoned me a couple of minutes back, Dr. Archana Yadav, Dr. Anju Bhatt, the co-convener, Dr. Rajiv Biani, and the senior principal, Dr. Neeta Maheshwari, and the principal of the college, Dr. Neha Pandey, and my close friend, Dr. Dhyan Singh, who is also the vice principal and dean administration in the Biani Girls College. I am really happy that Biani College is doing very well in the field of education and is furthering the cause of education, and is also at the same time promoting international cooperation and exchange of ideas between different countries, especially between India and Japan. So my compliments to all of you for looking after the Biani Girls College in one capacity or the other. And Dr. Biani, his quotations I often read in newspapers as well as in books. So my compliments to all of you. Dr. Biani, you rightly pointed out that this is the time when we have to think about the human solutions. And you often refer to the legal issues that also deserve attention in this post COVID situation. Uh, I firmly believe that we have to ensure social and economic justice. These two things have been written in the preamble to the Constitution of India, that we, the citizens of India, resolve to ensure, among other things, social and economic justice. So it is our duty to ensure social and economic justice. Although we have partially succeeded, not fully succeeded in ensuring social justice in the country, but this is the time to think globally. And it is good that you are talking about technology, and but you are more focusing on humanity. I also firmly believe that in this time, technology has exceeded humanity. Technology should finally lead to human cause. It should benefit the human beings. If you have read this new book, 21 Lessons for the 21st Century, since Dr. Biani, you are closely associated with education and you are writing a lot. I believe that you have read this book, and I'm just reading a quotation uh, in this respect, that what Ferrari has written, the great author, the great historian who has written in this book, who was well known for his bestsellers, Sapiens, and is also the 21 Lessons for the 20th Century, published about 2 years ago. Very wonderful book. I have read all these books. He's a great author on history, and his PhD in history from University of Oxford. He writes, I quote him, that technology isn't bad.
If you know what you want in life, technology can help you get it. But if you don't know what you want in life, it will all be too easy for technology to shape your aim for you and take control of your life. That means that ultimately we should be very clear about what we want in life. And what we want in life is happiness, not pleasure alone. Uh, Happiness and pleasure have to be distinguished. These two things are important. And I personally believe that there is great adverse economic impact of COVID 19, social impact too, psychological impact. But at the same time, we must know, we must ponder over that all the problems of this world have not arisen due to COVID 19. Problems existed earlier also. And therefore, we have to think in a very comprehensive way, take into consideration all the problems that existed before COVID, all the problems that COVID caused, and what is the future. And I think, as Dr. Biani has rightly said, that human values their promotion is the best solution to the present problems of the world is facing. If you make an analysis of the sustainable development goals, if you make the analysis of the millennium development goals earlier, which were framed between 2000 to be achieved by 2015, then these goals were reframed and renamed as sustainable development goals to be achieved during 15 and 30. That means 2015 to 2030. Honorable Prime Minister is talking now again and again about it. Even the new education policy, the second paragraph, says that the policy aims to achieve the sustainable development goals, goal 4 especially, as well as the other goals. In all these goals, poverty is the biggest problem. The first goal is to remove poverty. It was the first goal in 2000. It is again the first goal, how to remove poverty in 2015. And in many, I think this poverty elevation is not so easy to be removed, although there is some improvement in poverty uh, elevation. So, what I mean to say is that the best solution lies in promoting human values, in promoting humanity, and that distinction has to be made. Since you are an educational institution, Biani Girls College, and there are other also Biani groups, in fact, and you are directly connected with education. I think the students, if they are listening to me, I do not know whether they are listening or not, they must make a distinction between growth, progress, and success. Growth is just multiplying your profits, increasing your turnover, increasing your sales. Progress means if this growth is added with ethics, it becomes growth. There are some value system. But if this is added with humanity, if this is added with spirituality, if this is added with human welfare, then it becomes successful. So the ultimate objective of any enterprise, any organization should be success. And all the businessmen, Dr. Bayani, you are also a well-known entrepreneur. So you should, and you are doing it. I've read some of your books also. And so human cause, human welfare, humanity stands first. And this is the Oriental philosophy, welfare of all, and not welfare of the greatest good of the greatest number, which is the Occidental approach. I think this is the solution to the problem. I am reminded of what our Nobel laureate, the famous Indian poet Rabindranath Tagore said in 1913. His famous poem is "Where mind is without fear and is held high." Unfortunately, presently the mind is with fear and our head is not held high because lakhs of people are living pure. Even in this country, crores of people sleep hungry. Even on 19th of December 2020,
crores of people will sleep hungry. What for we are in this world? The current figures are that 690 million people sleep hungry. 690. There is great inequality of income. That has to be taken into account, and this is a better solution to face all these problems. And COVID is not the only problem which we are facing. A number of problems, a number of diseases have affected this world and our country in the past too. So what we require is universal brotherhood, universal trusteeship. Gandhi taught us about trusteeship. He said that all the businesses should be, all the business houses, all the businessmen should be trustees of the wealth of the society. This was the trusteeship concept promoted by Gandhi. Unfortunately, this is not happening. In 2018, it was reported that only 8% of this world, their wealth is equal to the wealth of more than 50% of the world population. In India in 2018, it was in 19, it was reported that 63 billionaires of this country, their wealth was equal to the union budget 2018-9. So total union budget of the country, that was lesser than the wealth of 63 billionaires of this country. See this inequality of income. We have seen the migration of the labor, how labor have faced during COVID-19. Laborers moved from cities to their villages, barefoot, on cycles with no money in their hands. See the plight of this labor class. See the plight of the poor people of this country as well as of the world. This applies everywhere. So, what is the solution? The solution lies in the human approach to all these problems. Neither our head is held high, nor his mind is without fear. Although Rabindranath Tagore wrote in context of the British situation, where there was lot of suppression, lot of oppression, and the Britishers used to terrorize people, and they used to adopt all means to get as much wealth as possible. And of course, this pandemic, COVID 19, has caused numerous economic problems, health problems, and now this world is realized. So I think the prayer of Tagore was, let my father India awake. I go beyond it. I say that my father, let the world awake. My father, let the world awake. This is, in fact, what is required at this present time of globalization, in this present time of mutual cooperation. And it is only through exchange of ideas between different countries, exchange and cooperation between different countries, that this problem can be solved. And I'm really happy that many of the persons they have spoken. I could listen on YouTube. Yes, the first day deliberations, and I could listen that some of the speakers they talked over in about the health issues, about the economic issues, and one or two on education and social issues. Really, very wonderful observations, and it is only through these such observations and interactions that the situation in the world can improve. And therefore, for moving towards a new world order, universal brotherhood, universal trusteeship, world happiness, and collective growth should form the basis of the new global philosophy. So, what the world requires is a new global philosophy which is based on the principles of happiness, which is based on the principles of trusteeship, a deep understanding of the Oriental philosophy, that is the welfare of the all Sarjan Sukhay Sarjan Hitay. That is, I think, the need of the hour. And the COVID-19 pandemic has taught all of us that what are the economic solutions, what are the economic um,
ways and means to achieve this, to face this challenge. What are the social solutions? But at the same time, the most important thing which we have learned, which this COVID pandemic has taught, is the human problem. That this world, the rich class, all the governments, all the people of this world, they have to think of the poor people first. Crores of people have been affected. In India, more than 1 crore people they have been affected by COVID, coronavirus, which has unfortunately become an household name, very infamous household name, Corona. Even a child knows what is Corona. He may not know anything, but he knows the word Corona. So it has just become an infamous household name now. So we have to think in a very long term, find out the long term solutions, and these solutions are based on humanity. These are not only economic solutions. There cannot be any social or legal solutions, and that I think is the main thing that we have to keep in mind. And this is the biggest lesson of COVID. And we have to think about the sustainable development goals, which talks about women empowerment. I was reading somewhere in Biani's folder that women empowerment. Just reading it. Women empowerment and technical education on the right side of your letter, which was written by Dr. Sanjay Biani to me, inviting me, I could see the mission is women empowerment and vision is technical education. I think these are very good ideas, and it will help in achieving the sustainable development goals of promoting gender equality or promoting women empowerment. And I think the Biani Girls College is contributing to it, and it is making its own contribution and for women empowerment. And I'm really happy when I find that girls are studying. Unfortunately, the education of women is not being so much emphasized even in the society, even in our home. That has to be in topmost priority. And Biani Girls College is doing very well, and it will definitely help in women empowerment. Who are getting even less wages and salaries than men. Women get about 23 to 30% less than what men are getting for the same work, for the same time, for the same job. That I think is the need of the hour, and your college is doing very well. So my compliments to you. I have about 10-15 minutes I have taken, as Dr. Tarun told me. I give we are teachers and can speak even for 1 hour, 2 hours, no matter whatever. So thank you very much, Dr. Biani, for inviting me, for sharing some of my views, and really very impressive. I've read some of your books and some motivational lectures and some of your quotations, which you give in newspapers also again and again. So thank you so much. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you Thank you so so much. much. You have rightly observed that the disparities of income, the unequal distribution of income, is the main problem, because 20% of the population is getting 80% of wealth of the society, and 80% population is getting only 20% wealth of the society. This is really problem. But you rightly observed that the main problem is ethics, that is spiritual knowledge, that is the knowledge of Lord Krishna, Buddha, Mahavir, Jesus, Muhammad. That is the long, long back, around 1000 year back, 1500 year back, 2005 year back, 5100 year back. So the root knowledge is a spiritual knowledge. But I personally feel there is a four types of body, five types of body. But our science focuses on the physical side of the body. But there is a mental body, there is an emotional body, there is a spiritual body, and our physical body is affected out of our emotion, out of our thoughts. But unfortunately it is so minute that science is rightly nowadays focusing on the quantum physics, but it is still not sufficient. So ethics and spiritual knowledge is the root problem of our society. And we believe in the theory of Krishna. In a Bhagavad Gita, Krishna plays an important role in front of Arjuna, but Shalya is also working for the Karan.
Shalya means doubt, a doubting mind. That is a logical mind that suspect, and that is the problem of the nowadays. Nobody in a position to believe. Everyone want to do experiment and logics and more logics, and that is the problem. And stress and depression is the root cause of all the problem. So there is a need to revise, there is need to revise the knowledge, there is need to enhance the knowledge of humanities. I think this is needed. So I believe that third day is plays very important role. We will focus on the law side, we will focus on the humanity side, we will Yes. focus on the mass communication side, because this is very important. Thank you, sir. Thank you for Thank enlightening. you. Thank you Thank for submitting your new and good ideas about the sustainable you. goal as well. But poverty is not problem. I feel the root cause of the poverty is lack of ethics, the corruption, the unequal distribution of income. So once from my top bottom of my heart, I would like to say thank you, thank you, thank you. In a If you Japanese, permit me to add a quotation, since you are a yeah, great yeah, author, yeah, yeah, uh, I am reminded of what Swami Vivekananda yeah, said about 100 years ago, more than that, in Colombo. In one of his essays, you will find it if yeah, you read the essays. He said, I am quoting it, that if there is any land on this earth that can lay claim to be the blessed Punya Bhumi, to be the land to which all souls on this earth must come to account for karma, the land to which every soul that is wending its way Godward must come to attain its last home, the land where humanity has attained its highest towards gentleness, towards generosity, towards purity, towards calmness, and above all, the land of introspection and spirituality, it is India. So, unquote. So, this is, I think, most important, and spirituality is the main requirement these days. And this is the soul of India, this is the spirit of India, and we can learn a lot from our scriptures. So, India has a great intellectual history. I think this I wanted to add, share with you so that yeah, you yeah, can yeah. add it somewhere in your Sir, writings. yes, I personally believe that the Quran and the Bhagavad Gita and Jainism, that is the great lesson to our society. So, so Many, even Lord Mahavir, I have read his book, Mahavir Ka Arthashastra by Acharya Mahapragya. I yes, yes, purchased two copies for Commerce College when I was the principal there, and I yes, have yes. read completely. So Lord Mahavir has great economic ideas that has So to be there is a promoted. need to correlate the management with the Yes, Jainism, management with the Buddhism, yes, yes, management with the yes, Bhagavad Gita, management with the Qurana, yes, because yes, it's give the ethics, because the corruption of the is the root and root cause of the whole the society, whole the world. So why it happens? We cannot control it through the technology, from the software, through the computers. yes, yes, So exactly, exactly. human is a very big entity, and we cannot cannot control the No, human, because yes, yes. no one can control the thoughts. So it's very important. So thank you so much, sir. And our we Thank would you, like to thank you. invite Shahid Hassan Saab. Shahid Hassan Saab, you are welcome, most welcome. And the most important thing that I personally believe in Quran is a namaz. Namaz is very important for today's lesson, because namaz means namja, means be become develop attitude of gratitude, namja, grateful ho ja. So it's very important lesson with important thoughts, important ideas which is mentioned in the Quran, which is in a very great lesson. Because when we are humble, when we are polite, we are learning, we can understand each other. But when we are egoistic, ego is our big problem. Egoistic person will never hear, cannot understand the problem of other. So I appeal all the persons to respect each other, to develop attitude of gratitude in a Muslim community. 5 times there is a time of namaz. It's a great lesson. So Shahid Hassan sir, you are most welcome. Sometime I will come personally and Mr. visit. Bihari, there is some audio problem with me. Okay, okay. So We can hear Aditi, you clearly, sir. Can you hear?
Your voice is very slow. Okay. So Volume is very slow. volume is very Volume is very low. okay. Can you hear me? Yeah, Yes, sir, we very can hear well. you. I think you can increase the volume at your end, sir, if you have speakers over there, because here we can hear very clearly. Yeah, we are listening well. So I invite you to please uh, uh, address us. Over to Shahid Hassan, sir. Thank you very much. I am Mr. Manish Bihani, Chairperson, Bihani Group of College. Mr. Sanjay Bihani, Director, Bihani Group of College. Professor Naveen Mathur and Dr. Rehana Khan. And since I am a Chairman Bar Council of Rajasthan, so it is my privilege to introduce the Bar Council, what the Bar Council is doing in Rajasthan. Bar Council is established under the Advocates Act, and it's a elected body, and every 5 year elections are being held. And from Rajasthan, there are 90,000 are affiliated, 90,000 lawyers are affiliated with the Bar Council of Rajasthan. And after every 5 years, we hold election. And from entire Rajasthan, 25 members are being elected. And from 25 members, we elect chairman, co-chairman, and vice chairman. So at present, I am chairman Bar Council of Rajasthan. The main function of the Bar Council is to enroll the new lawyers and to give license to the new lawyers to practice in Rajasthan. Apart Rajasthan and other part of India, because if a lawyer is registered with the Bar Council, he can practice throughout India. And the main function of Bar Council, I have said, the enrollment and the welfare of the advocate. We have a Rajasthan Advocate Welfare Act. So we doing welfare, we are doing uh, help to the lawyers. And apart from that, the third function of the Bar Council is disciplinary action. If we received any kind of complaint against the lawyer, then we take disciplinary action against the lawyer for professional misconduct. The Bar Council have a power under Section 35 of the Bar Advocates Act to take disciplinary action against the lawyers. So this is about the Bar Council, and I'm very happy to see that the Bihani Group of College has holding this virtual conference, BICON 2020, and the theme of the conference is the new normal on the 15th anniversary of the Bihani Group. And so far as lawyers in profession is concerned, and the future of law education, specifically women, is concerned, I'm very hopeful that the future of women is very bright in this legal profession. Earlier, only few women joined this profession 20 years back, or that I'm talking about 35 years back when I joined the profession in 84. Only there was few lawyers in High Court. But nowadays, more and more women are coming in this profession, and they are joining this profession, and there is a very healthy competition among the women who are lawyers. So the future of law education, specifically women, is concerned. And I said that women education in India plays a very important role in the overall development of the country. It is only help in the development of half of the human resources, but in improving the quality of life at home and outside. And law as a profession is in great demand these days due to changing social and economic circumstances and the ever increasing regulatory role being undertaken by the government. There is a rising demand of the women lawyers. Besides being financially lucrative, law is a advantageous, exciting career option. There are various areas of specialization in the field for women, which can choose from like civil law, criminal law, corporate law, taxation law, labor law, international law, family law, constitutional law, administrative law, and patent law, and other laws. So with the women, they can choose a specialization in these special laws. The need for law education, specifically women, is required in near future to gather the information of IT crimes against women, which is the most devastating factor against women in near future, because our society is heading toward the cyber law. And regarding to this fact, we need much more awareness from women in our society who needs to know the legal aspect of cybercrime. There are various national women commissions and state women commissions to help the needy women.
But in recent times, we need much more law educated women in future. So we need to develop our law education structure, more authentic law structure, which could be done only when women empowers with more law education in near future. In past, the law field was dictated by the man education. There was enough base for enough base for women to get the basic law education. But in the same time, the area has totally been changed and in more demanding need to make a basic structure of law education in future for educated women who could well cover the needs of society and welfare of needy women, which only be a law graduate woman could understand and is not possible for men dominating society. So in India, the need of education of women in law sector has a bright future, and it will help Indian law society to leap and bounce in various law sectors. The helping hand of women in this law society, Inter India will cover the utmost adversities of the needy women and also various legal sectors. So far as future of women is concerned, there are in Rajasthan judicial services. 30% of seats are reserved for women, and I have seen for the last 3 4 years more than 50% women are selected in the judicial services. So they can do better, deliver better justice. And apart from the litigation side, more and more women are coming and joining this profession, and there is a very scope in the law firms also. In the law firms, there is scope for women because in law firm the work of a woman is more effective, and they can do more work in the law firms also. So there is a very much scope in the judicial services side, litigation side, and the law firms for women. And I welcome and more women may join this profession, and the bar council will be happy if the more and women come to the profession. And the bar council is doing a lot of work in the welfare side also in pandemic also, during this pandemic, because the courts are very working in a limited manner, so the lawyers are in the financial crisis, and the bar council recently had distributed more than 4 crore rupees to the needy lawyers. So I'm thankful for the Biani Group of College for giving me this opportunity to join this conference. Thank you very much. Yes. Thank you so much, Professor Naveen and Mr. Shahid Hassan. I would like to enlighten our viewers about our guest of honors first. So, Professor Naveen Mathur is a president in Jagannath University, Jaipur. Formerly, he was professor and head in Department of Business Administration, administrative secretary to the vice chancellor, principal in University Commerce College, director in University Central Library, University of Rajasthan. And about our second guest of honor, that is Mr. Shahid Hassan. Mr. Hassan is a chairman in Bar Council of Rajasthan, chairman in Executive Committee, Trust Committee, and other committees of Bar Council. He has executed various welfare schemes for advocates. He has also been elected as member of Bar Council of Rajasthan in 2018. Mr. Hassan is member of various committees for Bar Council. Presently, Mr. Hassan is conducting cases on behalf of JDA, Jaipur Development Authority, State Bank of India, Indian Council for Agricultural Research. Apart from this, Mr. Hassan have good number of criminal, civil, and constitutional matters in High Court. Beside all of this, Mr. Hassan has conducted many cases for poor and needy clients free of cost. Mr. Hassan is since 35 years standing in Rajasthan High Court at Jaipur bench. I would like to thank Sir for enlightening us on future of law, especially for women. Now, moving ahead, great leaders don't set out to be a leader, they set out to make a difference. It's never about the role, it's always about the goals. As we move towards the conclusion of inaugural ceremony, I cordially invite
our day convener of Social Science and Head of Department of Social Science, Ms. Malti Saxena, for the vote of thanks. Please welcome Malti Saxena. नमस्कार। आज की सुहानी सुबह में मैं मालती सक्सेना आप सभी अजीज़ मेहमान जो हमारी बाइकॉन 2020 जिसकी की 15th एनिवर्सरी चल रही है उसमें जो अजीज़ मेहमान शिरकत कर रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। बाइकॉन कॉन्फ्रेंस की 15th एनिवर्सरी का तीसरा दिन, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं रीडिस्कवरिंग करियर पैशन, ट्रेनिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सोशल साइंसेज, लॉ एंड एजुकेशन, जिसमें आप सभी हमारे बीच पधारे हैं। हमारे आज के इनॉग्रल सेशन में गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल एक्स वाइस चांसलर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान के प्रोफेसर नवीन माथुर सर, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को भी हमारे बीच, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके बीच में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे सेकंड गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जनाब सैयद शाहिद हसन साहब हमारे बीच, जो कि चेयरपर्सन हैं लॉ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स का आपने उत्साहवर्धन किया। अभी मंथन होगा हमारी आज की कॉन्फ्रेंस में, एमिनेंट स्पीकर्स हमारे बीच आएंगे जिसमें रीडिस्कवरिंग करियर पैशन पे एक मंथन चलेगा सारा दिन। तो आप सबने यहाँ पर इस इनॉग्रल सेशन में हमारे बीच आज पधारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी सर हमारे बीच हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके मार्गदर्शन में हम इस कॉन्फ्रेंस को हर साल आयोजित करते हैं। इसके साथ ही मैं हमारी ऑर्गेनाइजिंग चेयर प्रोफेसर मनीष बियानी सर, जो जापान से हमारा मार्गदर्शन करते हैं हर साल, और हम इस कॉन्फ्रेंस को और बेहतर बनाने का प्रयास हमारी तरफ से करते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच हैं प्रिंसिपल बियानी गर्ल्स कॉलेज डॉक्टर नेहा पांडे मैम और कन्वीनर ऑफ द कॉन्फ्रेंस डॉक्टर तरुण कुमावत सर, जिनका कि मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, पुनः दिल से आभार। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Now, I feel proud to say this that more than 1,000 viewers are watching this conference live through Facebook and YouTube. With this, let me take this opportunity to introduce achievements of Biani Group of Colleges. In Biani Group of Colleges, we have study-based material website that is gurukpo.com. Its app is Guru KPO Plus and its newspaper is Biani Times, founded by Professor Sanjay Biani. GuruKPO.com comprises of study material and educational videos that are available free of cost from class 10th to university level. Guru KPO Plus is an e-learning app. That app offers comprehensive learning programs related to commerce, science, IT, humanities, fashion, nursing, etc., along with training in soft skills. This app also offers free live classes by the best educators. With this, I would like to invite all the dignitaries and our guest of honor to switch on their cameras for a group photograph. So it's a gallery view, and I request all the students, teachers, and guests, please open your gallery video so that we can take a snap. It's for the memory purpose, and uh, in this way, because the enthusiasm and positivity is everything. So show enthusiasm, because when we are getting knowledge, yeah, am I audible?
So, so please open your camera so that we will capture the memory of third day event and show the enthusiasm, because enthusiasm is the root cause of each and everything. So all the students, please keep your thumb open. Yeah, 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 Professor Ramesh sir. Thank you. You are smiling well. You are a very keen seeker, learner. I welcome you. So please, regards. Yeah, thank you so much. I would also like to mention this that Biani Group of Colleges provides facilities for overall development. We have Biani TV and community radio station Radio Selfie 90.8 FM to nurture the students. The institution publishes Biani Times newspaper every month. Biani TV has its own features with many documentaries, series of Srimad Bhagavad Gita, Sanjay Ki Nazar Se, and The Counselor's Show. With this, I would like to start our first technical session. Now, to commence the invited talks of BICON 2020, let's start with our first technical session. We have Professor Ramesh Makhwana, Mr. Prashant Pal, and Ms. Anila Choraria to enlighten us on this technical session. So, with immense pleasure, I would like to assert that Professor Ramesh is here with us for our first invited talk. Professor Ramesh is presently working as a professor in postgraduate department of sociology at Sardar Patel University, Vidyanagar, Gujarat, with 19 years of experience. He has been appointed as director of Dr. Baba Sahib Ambedkar Chair and convener of Research Committee RC18 Sociology of Crime and Deviance under Indian Sociological Society since 2008, as well as Secretary of Gujarat Sociological Society. He is awarded by Dr. Baba Sahib Ambedkar Award, Sardar Patel Award in 2011, handed by Honorable Sri Narendra Nath Vora, Governor of Jammu and Kashmir, India. Global Teachers Role Model Award, handed by Padma Shri Dr. Vijay Kumar Shah. Bharat Shiksha Ratna Award, awarded by GVG Krishnamurthy. Formal Election Commissioner of India. Maharaja Veer Bhadar Singh Ji Gold Medal, Young Sociologist Award. He has also having 5 recent published books at national and international level. Title of Mr. Ramesh talk is Teaching as a Career Opportunity. Please welcome Professor Ramesh Makhwana. Thank you very much, ma'am. First of all, I congratulate and thank you very much to Professor Manish Biyani sir and Sanjay Biyani sir for organizing such a wonderful India-Japan Fest BICON 2020 virtual conference on the new normal, and I feel immense pleasure to be part of this conference and thankful to all organizers, Dr. Tarun Kumawatji, convener, social science convener, Miss Malti Saxena ma'am, and principal, Dr. Neha Pandey ma'am, for inviting me and facilitated me as a speaker of this conference. Friends, today's my topic is job opportunities in social sciences. So first, we define social science. Social science means academic disciplines dealing with the study of the social life of groups and individuals. Social science is a generic term covering the scientific study of men.
It is a discipline or branch of social science that deals with the socio-cultural aspect of human behavior. The social science generally include sociology, history, economics, political science, criminology, psychology, and anthropology. Now I focused the importance of teaching social sciences. First, it helps to form man's social character. That is must and first for nation. Second, to provide the knowledge of natural and social environment. Third, to know duties towards human society. Fourth, to develop imagination and critical thinking. Fifth, to develop personality. And sixth, to develop comparison, analysis and evaluation. मतलब कि समाज विज्ञान के केंद्र में दो पहलू मनुष्य एवं समाज सेंटर ऑफ द पॉइंट है और समाज विज्ञान मानव समाज के विभिन्न पक्षों का एनालिसिस और अध्ययन करते हैं। जैसे कि समाजशास्त्र की बात करें तो वो मानवीय सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। भूगोल से पृथ्वी पर्यावरण के मानव के साथ संबंधों को जाना जा सकता है। इतिहास से मानव के विकास एवं ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान मिलता है। राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का विवेचनात्मक अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन और एनालिसिस करते हैं। अलबत्त सामाजिक विज्ञान समाज के सामाजिक भौतिक कारकों का विश्लेषण करते हैं। जैसे कि मनुष्य के वर्तमान जीवन में क्या है, उनकी विभिन्न आवश्यकता क्या है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है, आदि प्रश्नों को विश्लेषित करता है। साथ में सामाजिक विज्ञान समसामयिक मुद्दों एवं घटनाओं को सामाजिक पक्ष का अध्ययन और विश्लेषण करता है। जैसे कि समाज में कोई भी सोशल फिनोमिना उपस्थित होती है तो वो सोशल फिनोमिना का आंसर सोशल साइंस देते हैं। जैसे कि 2 साल पहले भारतीय समाज के सामने एक महत्वपूर्ण सोशल फिनोमिना आई थी, नोटबंदी। तो एज ए सोशल साइंटिस्ट कुछ सवाल नोटबंदी के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि नोटबंदी ने सामाजिक मुद्दों, भ्रष्टाचार एवं कालाधन की रोकथाम में क्या योगदान दिया। सेकंड, क्या इससे आम जनता का सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ। थर्ड, नोटबंदी ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए या उन्हें कम करने में अपनी भूमिका निभाई। फोर्थ, क्या नोटबंदी ने विभिन्न उद्योगों के संदर्भ में उत्पादन, खपत एवं बिक्री को प्रभावित किया। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसे सभी प्रश्नों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है और यही प्रश्नों के साथ सामाजिक विज्ञान भारत के भावी छात्रों को तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, समाज में जो बदलाव आते हैं, जैसे कि समाज में परिवर्तन आ रहा है, समाज मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, इनके बारे में भी छात्रों को, विद्यार्थियों को संज्ञान व आलोचनात्मक समझ विकसित करता है। साथ में सामाजिक विज्ञान विभिन्न सामाजिक समस्याओं
यथा अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि के कारण एवं उनके प्रभावों का वैज्ञानिक विधियों से समाधान भी प्रस्तुत करता है। मतलब कि सामाजिक विज्ञान छात्रों को एक नए राष्ट्र के निर्माण करने के लिए तैयार करते हैं। वो केवल भारत की समस्याओं पर ही फोकस नहीं करता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान विश्व के कहीं भी देश के सामने जो कोई भी समस्या, खासकर उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या प्राकृतिक घटना के साथ रिलेटेड हो, और ऐसी कोई भी घटना विश्व के कहीं भी देश में उपस्थित हो, तो उनका एनालिसिस करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि 2015 में अमेरिका में आई आर्थिक मंदी ने केवल अमेरिका में नौकरियों के अवसर को कम नहीं किया था, बल्कि अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया था। मतलब कि समाज विज्ञान का ताल्लुक केवल राष्ट्र से नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई सवालों, कई सोशल फिनोमिना का सोशल एनालिसिस करते हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक विज्ञान छात्रों को प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता जैसे राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्ति करने में अत्यंत उपलब्ध करवाते हैं। और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता का भी मूल उद्देश्य था कि भारतीय देश कैसा होना चाहिए, कि भारतीय देश एक समतामूलक समाज प्रस्थापित करने का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मूल ड्रीम था। तो समाज विज्ञान की यही अहम भूमिका है कि वो छात्रों को प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, समाजवाद के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, नेशनल बिल्डिंग के बारे में वो तैयार करते हैं। साथ में छात्रों को यही ज्ञान भी देते हैं कि उनको समाज, राष्ट्र और परिवार के साथ बेहतर कैसे समायोजन किया जाए। इसीलिए उनको हिस्ट्री का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको अर्थव्यवस्था का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको पॉलिटिक्स सिखाया जाता है, इसलिए उनको धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान देते हैं। मतलब कि सामाजिक विज्ञान समाज विकास के लिए प्रभावक भूमिका अदा कर रहे हैं। इसीलिए टीचिंग में एक बहुत बड़ा अवसर है। सामाजिक विज्ञान जो भारतीय संस्कृति, मूल्य, प्रथा एवं परंपरा को भी सुरक्षित, संरक्षित एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने में मूल्यवान भूमिका अदा करता है। इसीलिए तो हमारी भारतीय संस्कृति वासुदेव कुटुंब एवं हमारी एकता में अनेकता की बात करते हैं। वही बात हम हमारी नई पीढ़ी को हम हस्तांतरित करते हैं, और ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे युवाओं को ये पता होना चाहिए कि गांधी ने इस देश को आजाद किया था। क्योंकि आज 21वीं सदी के युवा ये नहीं जानते हैं कि एक दुबला पतला था आदमी ने इस देश की आजादी दिलाई। इसलिए सामाजिक विज्ञान का स्कोप जो हमारी परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा है, हमारा जो कल्चर है, और हमें जो वासुदेव कुटुंब की जो भावना है, उनको हमें सोशलाइज करने में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान संस्कारों व राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में भी युवाओं को ज्ञात करते हैं। इसलिए हमारे देश में आज विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी में काफी लीडर है, जो इसमें से ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस पढ़कर, सोशियोलॉजी पढ़कर, इकोनॉमिक्स पढ़कर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और वैसे भी आज हमारा देश युवाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हम
2011 की सेंसस पर नजर डाले तो हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा युवा देश भारत है। इसीलिए हम विश्व को बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास युवा शक्ति है और उनके पास एक जोम है, एक जुस्सा है, लेकिन उनको हमें एक सही दिशा बतानी होगी। हमारा राष्ट्र क्या है और राष्ट्र निर्माण में युवा क्या कर सकते हैं, इसके बुनियादी आधार पर, उनके बेस पर हमारा राष्ट्र का भावी होगा। इसीलिए सामाजिक विज्ञान कैरियर के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। जो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी, दोनों सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं और इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जैसे कि आज सर्वे रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। हम जो कोलगेट यूज करते हैं तो बार बार हम सब देखते हैं कि कोलगेट का कलर बदलता है। किस बेस पर बदलता है? वो सर्वेयर बताते हैं कि रेड या ब्लू लोगों की पहली पसंद है। तो आज हमारे युवाओं के लिए जो नौकरी के एक बहुत बड़े अवसर है, क्योंकि आज एक साइंटिफिक सर्वेयर की आवश्यकता है। हम साबुन भी हर रोज बदलते हैं और नए नए साबुन अपनी पसंद बन जाती है। क्यों? क्योंकि हर साबुन में एक नया फंक्शन आता है और वो फंक्शन हम जैसे लोग जब सर्वे करवाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं ने एक सर्वेयर, एक बेस्ट रिसर्चर के रूप में बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि बाइकॉन कॉलेज जो ये पूरा ग्रुप है, आज मैं भी जान सका और गुजरात में मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि बाइकॉन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उनके पास एजुकेशन का एक विजन है। कैसे मैं कह सकता हूँ कि जब आज मैं इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे ये एक चांस मिला मेरी बात रखने के लिए। इसी तरह हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए खासकर युवाओं को ट्रैक करती है और युवाओं के लिए एक अच्छा सर्वेयर बनना बहुत अच्छी बात है और इसमें अच्छा पे स्केल भी मिलता है। जर्नलिज्म, आज के समाज में हम सबको पता है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। मीडिया के बिना हम नहीं चल सकते। आज हम जब मोबाइल शुरू करते हैं सुबह से, तो बिना चाय हम सबसे पहले हमारे फ्रेंड का, परिवार का स्टेटस देखते हैं। स्टेटस देखने के बाद हर आदमी की सुबह की शुरुआत होती है और सबसे ज्यादा युवा सोते वक्त भी मोबाइल साथ में रखते हैं और सुबह जब खड़े होते हैं तब भी उनके पास मोबाइल। तो मीडिया का, तो मुझे लगता है कि जो हमारे युवा छात्र जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म में बहुत बड़ा पैकेज मिलता है। हमारे देश को एक सुपर पावर बनाने के मुझे लगता है कि जर्नलिज्म एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। स्टैटिस्टिक के बिना हम बात नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि युवा वो देश में सबसे ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास स्टैटिस्टिक है, 2011 का सेंसस है, इसीलिए मैं कह सका कि हमारे देश में युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि सोशल साइंस के युवा छात्र को एज ए स्टैटिस्टिशियन के रूप में भी काम करना चाहिए और एक बहुत बड़ा पैकेज इसमें मिलता है, क्योंकि हम कोई भी बात करते हैं तो विद स्टैटिस्टिक करने से हमारी बात ज्यादा ऑथेंटिक रहते हैं। तो गवर्नमेंट के काफी डिपार्टमेंट में आज उन पर ज्यादा नौकरी मिलती है। काउंसलर की आज बहुत आवश्यकता है और हम सबको पता है कि ये कोरोना काल में हम सब मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, मेरे पूर्व वक्ता ने लेबर की बात की, आज साइकोलॉजिस्ट की बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के युवा के सामने जो छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए तो वो टेंशन में आ जाता है, वो हताश हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं। और हमारे प्रख्यात समाजशास्त्री ने बताया है, जो सुसाइड की थियरी में इमाइल डर्खेम ने, कि ऐसे युवा सुसाइड की ओर चले जाते हैं। तो आज एजुकेटेड लोगों में खासकर काउंसलर के रूप में भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आज डेटा एनालिसिस की जरूरत है।
हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उनका प्रॉपर एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना ये अत्यंत आवश्यक है। अर्बन एंड रीजनल प्लानर की बहुत आवश्यकता है। जो हमारा बंदा खासकर जियोग्राफी से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, उनको अर्बन और रीजनल प्लानर में बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। कैरियर इन एनजीओ एंड सोशल वर्कर, इंडिया में ही नहीं, फॉरेन के हर कंट्री में सोशल वर्कर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। मैं जिस एरिया से आता हूं, आनंद वल्लभ विद्यानगर में, हमारे यहाँ से काफी युवा फॉरेन के विकसित देशों में एज ए सोशल वर्कर काम करते हैं। इंडिया में भी आज अच्छे सोशल वर्कर की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि बाइकॉन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो ग्रुप पूरे राष्ट्र में अपनी पहचान बना सके, इसके लिए उनके पास CSR और सोशल वर्कर होने चाहिए जो अपनी बात पूरे राष्ट्र के सामने, हर स्टेट के सामने रख सके। जैसे कि हमारे यहाँ एक ऐसी इंस्टीट्यूट है बड़ौदा के पास में, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो वो इंस्टीट्यूट में पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि उनके पास एक पूरा मीडिया सेल है, उनके पास एक युवा की बहुत बड़ी फौज है। उनके एक मैसेज एक दिन में हजारों लाखों लोगों के पास चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि डेटा बहुत आवश्यक है, और इसमें खासकर सोशल वर्कर और NGO एक बहुत बड़ा रोल आजकल अदा कर। सबको पता है कि इसमें हम टीचते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। कैरियर एज ए लॉयर, मेरे पूर्व वक्ता ने लॉयर पर लीगल एस्पेक्ट से बहुत अच्छी बात माइक्रो से लेके मैक्रो तक रखी। डेमोग्राफर आजकल आवश्यक है। लेबर ऑफिसर, सोशल साइंस में ऑफिसर, क्योंकि हमारा देश आज भी कृषि प्रधान है, 75% लोग आज भी कृषि से जुड़े हैं, और इसमें से ज्यादातर लेबर लोग हैं। लेबर ऑफिसर बनने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा चांस है। डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, जो हर स्टेट में इस तरह की पोस्ट आती है। एडवाइजर टू लीडर, आजकल लीडर को एडवाइजर की आवश्यकता है। लीडर को किस तरह से आगे लीडर तक किस तरह से हमें जाना है। आज हम सबको पता है कि जो लीडर के पास अच्छे अच्छे काउंसिलर है, वो अपनी बात हर रोज वीडियो के थ्रू, फोटो के थ्रू, जो अपने मत क्षेत्र में जो काम करते हैं, वो कार्य हर देश के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज ऐसे एडवाइजर भी बन सकते हैं अच्छे अच्छे लीडर के साथ में। जो HIV एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाको है, नाको में हर साल हजारों युवाओं की अपॉइंटमेंट होती है। इसी तरह यूनिसेफ में, इसी तरह हम पॉलिसी मेकर और प्लानर भी बन सकते हैं, एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि समाज विज्ञान में कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा मौका है, और उसके लिए युवाओं या छात्रों में कौशल भी होना अनिवार्य है। जैसे कि छात्र में अभिव्यक्ति और लिखने की क्षमता का कौशल होना बहुत जरूरी है, जो आज हम सबको पता है, हम सब टीचर है, ये एक बहुत बड़ा लेख है कि आज के छात्र में अभिव्यक्ति और लिखने की क्षमता बहुत कम है। मोबाइल और IT के युग में अब तो लेटर लिखना संपूर्ण बंद ही हो गया, और सोशल साइंस में तो लेटर लिखने पर भी रिसर्च हुआ था। थॉमस एंड जेनियाकी करके जो अमेरिकन 2 सोशल साइंटिस्ट थी, उन्होंने कृषि के साथ जुड़े हुए लोगों ने जो लेटर लिखे थे, वो लेटर पर एक एनालिसिस किया था और एक कृषि की एक थियरी प्रस्तुत की थी। लेकिन आज तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि आज लेटर का जमाना चला गया। आज केवल हम मोबाइल और IT की दुनिया में ही रहते हैं। तो अभिव्यक्ति की क्षमता इज मस्ट एंड फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग, छात्र में करने और उनका उचित समाधान और सुझाव देने का कौशल होना आवश्यक है। हम सबको पता है, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए सोशल साइंटिस्ट, कि आज के छात्र के सामने
सी समस्या आ जाए वो टेंशन में आ जाते हैं। हम सबको पता है कि हम सब इस स्टेज पर आए हैं तो कितनी समस्या झेल के आए हैं। पहले तो हमारे पास जब हम पढ़ते थे तो मोबाइल ही नहीं था, हमारे पास फोन भी नहीं था, हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं था। आज जो जितने स्क्रीन पर है इसमें से ज्यादातर लोगों ने थीसिस कंप्यूटर टाइपिंग से की होगी, जो पहले से 2000 से पहले किसी ने पीएचडी किया हो तो। लेकिन आज ये बहुत सिंपल हो गया है कि युवाओं के सामने छोटी सी समस्या आ जाए वो टेंशन में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं को ये समस्या से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि समस्या ही लाइफ है। सबसे पहले तो हमें ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम कुछ भी बन जाए, हम टीचर बने, हम कंपनी के मैनेजर बने, हम बाइकॉन कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाए, फिर भी समस्याओं के साथ बनना पड़ेगा और समस्याओं का सुझाव करना अत्यंत आवश्यक है। वो धीरूभाई अंबानी हो या अनिल अंबानी है, हर सुबह हर आदमी की समस्याओं से शुरू होती है और समस्या का समाधान ढूंढना हर सिटीजन की प्रथम ड्यूटी है। तीसरी बात है, उम्मीदवार में या छात्र में समय के प्रबंधन। आजकल पूरा समय हमारे युवाओं का मोबाइल में चला जाता है। हम भी अपने परिवार में देखते हैं, बच्चे पूरे दिन मोबाइल और इंटरनेट के साथ लगे रहो मुन्ना भाई की तरह लगे रहते हैं। और आजकल तो हमारे सबके लिए टेंशन हो गया कि हम होके भी हम अपने बच्चे को मोबाइल का प्रयोग मत कर। वो बोल देंगे मम्मा मेरा ऑनलाइन ट्यूशन चल रहा है, मेरा क्लास चल रहा है। लेकिन बच्चे, काफी ऐसी स्टडीज हुई और आप सब भी देख सकते हैं फेसबुक इंटरनेट पर कि सबसे ज्यादा 8 घंटे हमारे युवा छात्र आज मोबाइल में बिताते हैं। उनके पास टाइम प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट सबसे अति एवं मूल्यवान बात है। हम सबको पता है कि हम सब पढ़ते थे तो कितने कितने आवर्स हम काम करते थे, और आज भी एज ए एचओडी, एज ए वाइस चांसलर, एज ए बाइकॉन प्रेसिडेंट कितने काम करते हैं। पूरे दिन हमारा काम में ही चला जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि मेरा पूरा 12 घंटे कहाँ चला गया। हम खाना खाते वक्त भी हम मोबाइल से बात कर लेते हैं। तो आज मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट अत्यंत आवश्यक है। कंप्यूटर का नॉलेज आज खूब बहुत जरूरी है। सोशल साइंस में आगे बढ़ने के लिए इंटरनेट एंड कंप्यूटर मस्ट एंड फर्स्ट। और कार्य करने के लिए क्रिएटिविटी, आज जो हमारे बच्चे डिग्री तो बहुत एक्सेप्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज मैं पूरे इंडिया में आईआईटी दिल्ली सब यूनिवर्सिटियों में वाइवा में जाता हूं तो मैं पहला प्रश्न पूछता हूं उनको कि शोध का आशय है न्यू नॉलेज प्राप्त करना। आपकी थीसिस से मुझे इतना बता दीजिए कि आपने न्यू नॉलेज क्या प्राप्त किया। जयपुर में भी मैं यूनिवर्सिटी में आता हूं कई बार, सोशल साइंस में, सोशियोलॉजी में, तो मुझे पता है कि बच्चों ने 500 पेजेस लिखने के बाद भी पूरी थीसिस से 2 सेंटेंस भी न्यू नॉलेज या इनोवेशन नहीं बताते। अभी अभी हम सब ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि महाराष्ट्र के एक टीचर ने QR नाम का एक कोड प्राप्त किया और उनका सिलेक्शन ग्लोबल वर्ल्ड अवार्ड में हुआ और उनको ये अवार्ड मिला। प्राइमरी टीचर है, QR कोड ढूंढने के लिए, और फॉरेन के कोई कंट्री ने, आई थिंक कनाडा ने, उनको 6 करोड़ रुपीस अवार्ड के लिए दिया। तो मुझे लगता है कि आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए हमारे पास एक विजन और मिशन होना चाहिए और इसमें इनोवेशन होना चाहिए। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया में भी काफी ऐसे प्रावधान है जो युवाओं इनोवेशन के साथ आते हैं। 2 मिनट में, और लास्ट में समाज विज्ञान में सक्षम बनने के लिए मदर टंग के अलावा 2, एक नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि समाज विज्ञान समाज और उनके विभिन्न पहलुओं को समझने में मददगार है।
साथ में उन विज्ञानों का अध्ययन करने के लिए सामाजिक घटना को हमें गहनता से, खासकर सोशल साइंस का जो बेस है, कोई भी सोशल फिनोमिना हमारे सामने हो तो सबसे पहले हमें उनको व्हाट पूछना चाहिए, बाद में हमें व्हाई पूछना चाहिए, बाद में हमें व्हाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये 5 सवाल पूछकर हमें सोशल फिनोमिना का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तभी हमें सोशल साइंस में खासकर पॉलिसी मेकिंग की ओर जाने की अत्यंत आवश्यकता है। पॉलिसी मेकिंग बहुत आवश्यक है, वो देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी। हमारी हर स्टेट की या सेंटर की गवर्नमेंट पॉलिसी हर रोज बनाती है, तो सोशल साइंटिस्ट का रोल है कि वो पॉलिसी का हम एनालिसिस करें। पॉलिसी जिसके लिए बनी है वो प्रॉपर है, उसमें कुछ चेंज करना आवश्यक है, वो हमें बताने की अत्यंत आवश्यकता है। सो थैंक यू वेरी मच। आज मुझे मेरे 2 शब्द प्रस्तुत करने के लिए बाइकॉन ग्रुप ने मुझे एक अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं सबको वंदन और अभिनंदन अदा करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच प्रोफेसर रमेश सर। आपने बहुत ही खूबसूरती और एकदम सिंपल तरीके से बताया कि सोशल साइंसेज जो फील्ड है उसमें कितने सारे करियर ऑप्शंस बच्चों के पास हैं। शायद उन्होंने नहीं सुना होगा कि यूनिसेफ, नाको और एक पॉलिसी प्लानर, एडवाइजर फॉर द लीडर्स, इस तरह की भी जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के पास हैं। तो हमारे बहुत सारे हजारों व्यूअर्स यूट्यूब पे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, वो सब ये सब सुन के आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे। आपने बात बताई कि न्यू नॉलेज फ्रॉम द पीएचडी रिसर्च, ये बहुत ही इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम सब पीएचडी करते हैं और हमारे अभी भी स्कॉलर्स जो हैं वो पीएचडी कर रहे हैं। हम एक ट्रेडिशनल तरीके के लाइन पे चलते जाते हैं कि हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है और ऑब्जेक्टिव बनाना है, उस सब चीज़ पे ध्यान रखेंगे, लेकिन एक जो मूल चीज़ है रिसर्च की कि हमने क्या नया सीखा, उस पर शायद जोर नहीं दे पाते हैं। तो आपने इस बात को वापस से उठाया है कि बच्चों ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द न्यू लर्निंग फ्रॉम द रिसर्च, दैट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी रिसर्च दैट वी आर डूइंग, and how it is going to be useful for the society, that's another aspect. So thank you very much, Professor Ramesh sir, for sharing your views, and indeed we are very delighted. And I think, can I ask my technical team to take a group photograph now, because सब speakers एक के बाद एक अपने session के बाद चले जाते हैं, तो मैं चाहूंगी जितने लोग भी अभी जुड़े हुए हैं सब एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें, and we will have a group photograph, because this is the only way we can have the memories for this virtual conference. Thank you. Thank you. Are we done? Can I have a okay signal from technical team? Okay. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. And indeed, it's a pleasure having you. आपकी बहुत profound knowledge ने I think हम सबको बहुत ही लाभान्वित किया है. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद, sir. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। And I can see the next speaker, Mr. Prashant Pal. He's already joined us. Welcome, Prashant, sir. How are you? I keep getting your updates that your trust is doing a wonderful job. You're creating so many entrepreneurs, helping people in the society and uplifting their economic status. So let's hear from you, Prashant sir, now. Thank you, Neha ji. Really appreciate. Can you hear me? Yes, we can. Perfectly well. First of all, thank you, Neha ji, for inviting me, BICON Group of College. प्रोफेसर रमेश, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली आपने सोशल वर्क के ऊपर भी इतना शब्द बोले। मैं खुद कॉर्पोरेट में 17 साल रहकर अभी सोशल सर्विस कर रहा हूँ, एंड आई एम फुल टाइम इनटू इट, एंड दिस इज रियली रियली एक्साइटिंग और फुलफिलिंग करियर है। जो भी बच्चे अगर सुन रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, आई वुड रेकमेंड यू मस्ट ट्राई फॉर दिस करियर. This is going to be new normal in the future. Yeah. So coming back to my topic, दो चीज मुझे आपकी कॉन्फ्रेंस में बहुत important लग रही हैं. And before that, I also want students. You have your chat box, and I want to know how many students do we have on this call. क्योंकि नेहा जी और जो हमारे लीडर्स हैं उनको अगर मैं कुछ बोलूँगा तो थोड़ा मुझे मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है. उनके लिए मेरी कॉन्फ्रेंस नहीं है. आई एम हेयर जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ओनली.
प्रशांत जी, इस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब पे लाइव किया जा रहा है, बच्चे वहां पे ज्यादा देख रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, हमने क्लोज वेरी ग्रुप गुड। ही रखा हुआ है, इसमें बहुत चुनिंदा बच्चे ही हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं अरे हमारे वाह, साथ चलो में। कोई नहीं। लेकिन आपकी बात ग्लोबली जा रही है, इस बात को निश्चित मानिए। एक्सलेंट, एक्सलेंट। सो दो तीन चीजें मुझे जो इस कॉन्फ्रेंस में खास लगती है। एक तो आपने बात की न्यू नॉर्मल्स की। सो न्यू नॉर्मल इज समथिंग दैट वी लर्न रिसेंटली, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि न्यू नॉर्मल एक्चुअली हमेशा से वर्ड रहा है, हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी जैसे प्रोफेसर रमेश जी बता रहे थे कि हमारे जमाने में तो लाइट नहीं थी, हमारे जमाने में टाइपराइटर पर हम पीएचडी थीसिस लिखते थे, अब कंप्यूटर आ गए, अब बच्चों को मोबाइल आ गया है, और अभी तो स्पीच एनालिटिक्स होता है, और इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, एआई आ गया है, एल्गोरिथम, इतना सारा आप डालकर अपने काम कर सकते हो। सो ये सारी चीजें क्या है, हम जैसे जैसे अगर सिचुएशंस को समझें तो न्यू नॉर्मल एक्चुअली हमेशा से ही हो रहा है। हमने पहली बार कोविड की वजह से न्यू नॉर्मल वर्ड्स को समझने की कोशिश की है। अब मैं एक दिन मेरी बेटी से बात कर रहा था, तो मैं बोल रहा कि हमें पता है 5 किलोमीटर दूर पैदल जाता था मैं जब 6-7 क्लास में पढ़ने के लिए, और 8th क्लास में मुझे साइकिल मिली थी। तो मम्मी, मेरी बेटी बोलती है मुझे कि अपनी मम्मी को बोलती है कि पापा और ये लोग क्या हमेशा कंप्लेंट ही करते रहते हैं लाइफ में, इन लोगों की लाइफ में अगर कुछ नहीं था तो हमारी प्रॉब्लम है क्या? So that's what, similarly it's happened with our parents as well. So this is what is the new normal. Most important thing कि अभी जैसे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैंने अभी सुबह देखा, मेरे एक SBI फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं निक्सन जोसेफ, उन्होंने अपना एक पोस्ट दिया था, उसमें बोला 125 कॉन्फ्रेंसेस वो अटेंड कर चुके हैं, उसका उन्होंने पोस्ट डाला और उसके पिक्चर्स डाले थे, स्नैपशॉट्स। मैंने बोला कि पिछले 7-8 महीने में सर यही कर रहे हैं, काफी ज्यादा। सो one is the new normal. I think everybody has to understand this is part of our life and we have to learn it, and this is a keep on happening, and this will be our life in the future as well. Second मेरा टॉपिक है unemployment. एक मिनट, मेरा टॉपिक है एजुकेशन फॉर employable skill development. I'll just take you to the history. ये अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड, नेहा जी स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप यू आर द लीडर ऑफ दिस कॉलेज। ये अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड जो बना है ना, ये बना है 16 अगस्त 1947 को, आप लिख लो चाहे तो इसको। 16 अगस्त 1947 से पहले अनएम्प्लॉयमेंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता था हिंदुस्तान के अंदर। उससे पहले हमारे समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि हर आदमी के पास अपना काम था, वो क्या काम करना है, कैसे करना है, उसको सब पता था, और उसका पूरा एक सामाजिक ढांचा जो है ना इसी तरह से बना हुआ था। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि अग्रवाल समाज के लोग जो है बिजनेस का काम करते थे, पैसे का लेन देन का काम करते थे। ठठेरा समाज बर्तन का काम करता था, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, मोची का काम जो है जनरली बैरवा समाज के लोग करते थे। कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी युद्ध में जो है किसी दूसरे समाज के लोग मरे हो, सिर्फ राजपूत समाज के लोग ही युद्ध लड़ने जाते थे। तो राजपूत समाज का काम ही ये था कि भाई तुम्हें देश की रक्षा करनी है, युद्ध करना है, दुश्मनों से लड़ना है। ब्राह्मण समाज का काम पूजा पाठ का था, हरिजन समाज का काम साफ सफाई से संबंधित था, आज जिसको हम हाउसकीपिंग बोलते हैं एक्चुअली। तो अंग्रेजी में हमने थोड़ा नाम अच्छे से दे दिया तो उसमें हमें बुरा नहीं लगता है। माली समाज जो गार्डनिंग का काम करते हैं, सैनी समाज का काम हमेशा से ये रहा था, खेती बाड़ी में फल सब्जी करना या गार्डन कैसे बनाना है उससे रिलेटेड। कायस्थ समाज स्पेशली सक्सेना, माथुर, इनका लिखा पढ़ी का काम था। इनके जो पूर्वज हम लोग मानते हैं चित्रकूट जी महाराज, वो यही काम करते हैं, राइट। इसी तरह से राणा समाज राजस्थान में होता है जो संगीत बजाने का काम करता है। भाट जो होते हैं गांव गांव में जाकर स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं, जिसको एक नया वर्ड आजकल हो गया, स्टोरी टेलिंग आपको आना चाहिए लाइफ में। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही अपकमिंग फील्ड है और इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी लोग कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ अगर आपको सबसे अच्छा वो स्टोरी टेलिंग सुनना है तो आप घाट समाज में जाइए। आप जो है वो जिस तरह से दिए के साथ पूरा स्टोरी बनाते हैं सब चीजों की, इसी तरह से आप पांडे हैं, आप हरिद्वार में जाओ, आप वाराणसी में जाओ, आपके पूरे पुरखों की हिस्ट्री उनके पास लिखी होती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हिंदुस्तान में इस तरह से बनी हुई थी कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट एक कायस्थ समाज की बेटी कायस्थ समाज में शादी होती थी, इसी तरह से कुम्हार की बेटी का समाज कुम्हार के परिवार में, क्योंकि जो उसके समाज में जो चीज वो सीख रही है बचपन से जो पैदा हो रही है, उसने जो चीज देखा, जो स्किल जिसकी वजह से उनके घर में इनकम हो रही है, वो इनकम वो दूसरे अपने ससुराल में जाके उसको फॉलो करती है। अब ये चीज जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद कुछ
मैं नॉन पॉलिटिकल बात करते हुए बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने काम में डिफरेंस बताना शुरू किया लोगों को, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। और जब लोगों को ये चीज भर दी उनके कान में कि अच्छा ये काम बेकार है, खेती करना बेकार है। अब किसान आदमी काम खेती नहीं करना चाहता, वो जाके भाई मैं शहर में जाके जब मजदूरी करूंगा और बिल्डिंग में काम करूंगा, कंस्ट्रक्शन साइट में काम करूंगा, लेकिन खेती नहीं करूंगा क्योंकि खेती का काम बेकार है। सिमिलरली जो है दूसरे आदमी को बोल दिया कि भाई आपको ये छोटा काम है, बड़ा काम करना है। तो इस तरह से आदमी के दिमाग में उस काम के प्रति जो इंटरेस्ट है वो कम होता चला गया, और इंटरेस्ट कम होने की वजह से वो ऐसे काम करने के लिए कोशिश करने लगे जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है या जिसके अंदर उसका पैशन नहीं है। अभी संजय बियानी जी ने शुरू में बोला था कि पैशन इज द रूट कॉज फॉर एवरीथिंग, एंड आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड पैशन। अगर आपकी लाइफ में है किसी चीज के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं कॉर्पोरेट में 17 साल रहा हूं और काफी अच्छी पोजीशंस पे भी रहा, मैं अच्छी खासी सैलरी भी मैंने ली, लेकिन लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं था। मेरा पैशन हमेशा से सोशल सर्विस के लिए रहा, और मैंने 2017 में अपना कॉर्पोरेट छोड़ा। अब 17 से 2020 में मैं हूँ इस वक्त, और एनजीओ का मैंने एक्सपेंशन जो बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान, हम सब जगह कर चुके हैं। हमारी एक बहुत अच्छी टीम है, 24-25 लोगों की बहुत ही एंथुजियास्टिक टीम है, जिससे हम हर एक गांव में महिलाओं को उनका अपना बिजनेस शुरू करवा रहे हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और हमारा फोकस ही ये है महिलाओं के लिए कि आप लाइफ में जो पसंद है आप वो बिजनेस शुरू करो। अगर आपको टेलरिंग पसंद है, ब्यूटी पार्लर पसंद है, आपको हैंडीक्राफ्ट पसंद है, दोना पत्तल बनाना पसंद है, आपको जो पसंद है वो बिजनेस करो, और उस बिजनेस के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। सो वी प्रोवाइड देम ए ग्रांट ऑफ 15,000 रुपीज। इट्स नॉट अ लोन, इट्स ए ग्रांट। और उनको 1 साल की मेंटरिंग देते हैं जिससे वो महिलाएं जो काम करना चाहें, जहां करना चाहें, अपना पैसा कमाएं। पिछले साल 60 महिलाओं को हमने बिजनेस खुलवाए थे। 60 महिलाओं का नेट प्रॉफिट नेहा जी 15.5 लाख रुपीज था। इतना मेरे कॉर्पोरेट डोनर्स ने मुझे पैसा नहीं दिया, उससे ज्यादा मेरी महिलाओं ने प्रॉफिट कमाया। इस साल हम लोग 200 विमेन्स को एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं। और अभी मैं बैंगलोर में हूँ इस वक्त, बैंगलोर के रूरल एरिया में, गांव में, बस मैं आपकी कॉल के तुरंत बाद रूरल एरिया में जाऊंगा, और मेरा सिर्फ काम रूरल में जाकर लोगों से मिलना है, महिलाओं से मिलना है कि वो क्या काम यहाँ पर हम शुरू करवा सकते हैं। सो वी हैव कपल ऑफ गुड कॉर्पोरेट्स जो हमें अब पैसे देना शुरू किया है, एंड हम जगह जगह काम कर रहे हैं। जयपुर में हम शाहपुरा, विराटनगर, करौली डिस्ट्रिक्ट्स, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हम लोग पेपाल के थ्रू काम कर रहे हैं। शाहपुरा में एयू बैंक के साथ काम कर रहे हैं। जयपुर में हम मेटलाइफ के साथ काम कर रहे हैं। बैंगलोर में हम जो है ENY है, अर्नेस्ट एंड यंग के साथ काम कर रहे हैं। तो ये मेरा पैशन है जिसकी वजह से इतने सारे कॉर्पोरेट्स हमसे जुड़े। और जो काम मैं कर रहा हूँ, एनजीओ के भी बहुत सारे काम होते हैं, आप एजुकेशन में करो, आप हेल्थ में करो, आप एड्स के लिए आप काम करो, लेकिन मेरा फोकस रहा कि मुझे एक महिला जो घर में मदर है, उसकी जेब में अगर पैसे होंगे, उसके पास अगर पैसे होंगे, तो घर में उन बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, उनको लिविंग स्टैंडर्ड उनका बढ़ेगा। तो मेरा फोकस सिर्फ ये है कि घर में एक मदर के हाथ में पैसा देना, और मदर के हाथ में सिर्फ मुझे पैसा नहीं देना है, उसको पैसे कमाने वाला बनाना है। सो मैं आई एम प्राउडली सेइंग, में हमारी कई महिलाएं हैं जो हर महीने 20,000 रुपए से ज्यादा कमा रही हैं, जो 1 साल पहले घूंघट में रहती थी घर में। उनके घर से कोई उनको बाहर निकलने का परमिशन नहीं था। पिछले महीने हमारी एक महिलाएं हैं, पलक ब्यूटी पार्लर, हमने उनको खुलाया। आप मेरी वेबसाइट पे ये सब चीजें देख सकते हो, मेरे फेसबुक अपडेट्स पर देख सकते हो। कल जो है हमने 10 महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाया जयपुर में। उससे पहला मेरा, नेहा जी आपने पोस्ट देखा होगा, तो हमने 3 महिलाओं को नोएडा में विमेन एंटरप्रेन्योर बनाया। अभी आज मैं बैंगलोर आया हूँ, हमें अगले 3 महीने के अंदर 35 विमेन्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। और ये सब वेराइटी ऑफ बिजनेसेस है। इवेंचुअली हमारा गोल है कि ये सारी महिलाओं को एक दूसरे से जोड़ें और ये हिंदुस्तान में एक रूरल मार्केट नेटवर्क क्रिएट करें, जहां से जो भी महिलाएं बैंगलोर में बैठ के कोई भी प्रोडक्ट दिल्ली में बेच सकती है, जयपुर में बेच सकती है, और जयपुर की महिला बैंगलोर में बेच सकती है। दैट्स व्हाट इज आवर फोकस। सो नाउ मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं कि हमें वो स्किल पर फोकस करना चाहिए। हमें हमारे स्टूडेंट्स को और यूथ को ये आइडेंटिफाई करने के लिए एनकरेज करना चाहिए कि लाइफ में आप वो चीज आइडेंटिफाई करो जो आपको पसंद है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया मुझे क्या पसंद है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, MBA ही करना है। आप
किसी भी फील्ड में आप जाओगे आपको सक्सेस मिलेगा, उसमें पैसा भी है। और इसी चीज को करते हुए हमने लॉकडाउन में, नेहा जी अगर आप देख रहे हैं तो मैंने एक बुक लिखी है 100 करियर ऑप्शंस, और ये हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। प्रोफेसर रमेश, ये मैं बुक आपको भेजूंगा, आप अपना एड्रेस मुझे भेजिए। ये इसमें हमने 100 करियर ऑप्शंस दिए हैं और इसके अंदर 300 क्यूआर कोड्स डाले हैं। यूट्यूब के बेस्ट करियर वीडियोस इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो बच्चे, कोई भी किसी बच्चे को 8th क्लास से हम लोग एनकरेज करते हैं कि लाइफ में आप वो स्किल आइडेंटिफाई करो या वो करियर आइडेंटिफाई करो जो आपको पसंद है, और अगर उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया मुझे क्या पसंद है, तो उसमें वो आगे बढ़ सकता है। मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। हमारी एक बच्ची है थानेश्वरी, जो एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है, और उसका ऑब्वियसली हर पेरेंट्स का फोकस रहता है कि पढ़ाई में अच्छा करे, और बेचारी 9th क्लास में फेल हो गई। गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट थी, हमारे एनजीओ में पढ़ने आती। हमने एक दिन ऐसे ही स्पोर्ट्स से सेलिब्रेट किया और उस दिन मैं भी वहीं था, तो मैंने देखा रेस करवाई, कबड्डी खेल करवाया मैंने, तो ये लड़की थानेश्वरी बाकी लड़कों से भी डबल स्पीड से आगे भागी। तो मैंने बोला ये तो टैलेंटेड है, और उसी दिन से हमने उस बच्ची को ट्रेनिंग दिलाना शुरू किया, एंड आई एम प्राउड टू से शी इज अ नेशनल कबड्डी प्लेयर टुडे। वंडरफुल। And she is also a cross country marathon winner in Delhi state as of now. और जो लड़की, आप सोचो 7 बहन भाई हैं वो, जिसके पापा टेंट हाउस लगाने का काम करते हैं, टेंट हाउस के ओनर नहीं है, लेबर हैं, और उनके लिए लाइफ में पूरे घर को फीड करना भी मुश्किल है। आज उसकी बच्ची अगर नेशनल प्लेयर है तो एक काफी बड़ी बात है। इसी तरह से फार्मिंग के अंदर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं। स्पेशली मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कॉर्पोरेट से अपना रिटायरमेंट लेकर फार्मिंग के अंदर आ रहे हैं। बस्ती में जहाँ हमारा प्रोजेक्ट है वहां पर मैं देखा, हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने जो हम लोग सलाद खाते हैं 5 स्टार होटल्स में, आप देखेंगे जाके, उस तरह का उन्होंने खेती करना शुरू किया। और जो पहले कुछ भी नहीं करते थे, आज उनका टर्नओवर अगर हम लोग देखें तो कम से कम 60 लाख के आसपास। So that's what they are growing. So इस बुक के अंदर भी हमने लिखा है कि आप इसको एजुकेशन फील्ड में आप जाओगे, लेक्चर्स, टीचर्स, लाइब्रेरियंस, डेफ एंड म्यूट ट्रेनर। आपने कभी देखा है कोई बच्चा सोच रहा हो कि मुझे मूक बधिर बच्चों के लिए टीचर बनना है? कोई नहीं सोचता। लेकिन इस करियर में अगर आपने डीएड किया, डीएड करने के बाद एग्जाम पास कर लिया, आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। So we don't even focus on कि आप गवर्नमेंट जॉब पर फोकस करो, लेकिन ऐसे बहुत सारे करियर हैं जिनके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट हमारे इसी करियर के अंदर हम लोग बात करते हैं फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी के बारे में कोई ऐसे करियर, बहुत मुश्किल से कोई सोचता है कि मुझे फायर सेफ्टी एक्सपर्ट बनता है, लेकिन इतनी सारी कंपनियां हैं। आपका बियानी कॉलेज इतना बड़ा कैंपस है, उसके अंदर आपने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगा रखे होंगे, आप हर साल ऑडिट कराते होंगे, तो जो ऑडिट करने आता है उसको आप पेमेंट करते हैं। सो इसी तरह से जयपुर में हर एक शहर के अंदर इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं जहां पर हमें फायर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना होता है। सो इफ एनी स्टूडेंट कैन गो टू इन दैट फील्ड एज वेल। एविएशन, कमर्शियल पायलट, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, ट्रैफिक कंट्रोलर्स, डिफेंस ऑफिसर्स, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर में आप जनरली हम लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना है, हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ डॉक्टर पे आप फोकस मत करो। यू शुड डिसाइड कि आपको नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, आपको डेंटिस्ट बनना है। यू शुड फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बी। डॉक्टर एक बहुत ब्रॉड करियर है। सिमिलरली रेलवे के अंदर आपको जाना है तो रेलवे के अंदर इतना बड़ा इंडस्ट्री है, आपको क्या बनना है आप उसके बारे में आप फोकस करो। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम सब सोचते क्या है कि हॉस्पिटल में रिसेप्शन का काम है, लेकिन आप हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर आप जाओगे तो बहुत सारी रेंज ऑफ करियर्स हैं। इसी तरह से आप हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो हम डॉक्टर सोचते हैं, लेकिन डॉक्टर के अलावा इतने सारे अलग करियर्स हैं। हॉर्टिकल्चर भी हॉस्पिटल के अंदर होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको फ्रंट डेस्क के लोग होते हैं, उसमें हाउस कीपिंग के लोग होते हैं, होटल मैनेजमेंट। एक बीच में रोकना चाह रही हूँ, पर आपका जो एरिया ऑफ फोकस है वो है एज ए एनजीओ यू आर वर्किंग अमंग द सोसाइटी पीपल। तो मैं ये जानना चाह रही थी फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स के सोशल सर्विस में वो क्या करियर बना सकते हैं, क्या स्किल्स एक्वायर करें बच्चे जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं या यूजी फाइनल ईयर में है? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू मैम ये क्वेश्चन पूछने के लिए स्पेशली। जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों के लिए, जो इंडिया एक फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने CSR लॉ एक्ट पास किया है 2014 में,
जिसमें कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, या उसकी नेट वर्थ 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, या जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, उस कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% सोशल सर्विस में खर्च करना ही है। एंड दिस इज अ कंप्लायंस। इफ दे आर नॉट डूइंग, तो उनको 25 साल की जेल भी हो सकती है, उनके डायरेक्टर्स को। तो इसमें इतने ज़्यादा कंट्रोल्स हैं, और हर एक कंपनी जिसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा है उनको करना ही है। तो अगर आप देखते हैं तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, आप रिलायंस इंडस्ट्री की आप बात करो, उनका नेट प्रॉफिट होता है 23,000 करोड़। 23,000 करोड़ का आप 2% लगाओगे तो कई हजार करोड़ आता है। तो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट आप जो बिजनेस है उसको आप CSR में करने के लिए आपको डेडिकेटेड लोग चाहिए। सिमिलरली आप टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप जाओ, हर एक कंपनी में आप जाओगे तो आप एक दो कम से कम CSR के लोग होते ही हैं। और CSR फील्ड में आपको अगर फुल टाइम करियर बनाना है, आप MSW करिए, आप मास्टर इन सोशल साइंस। आप इग्नू से डिप्लोमा इन सोशल वर्क कर सकते हो, आप BCA कर सकते, BSW कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से ये कोर्सेज कराए जाते हैं। इनफैक्ट इन कोर्स के साथ आप NGOs के साथ वॉलंटियरिंग वर्क करो आप। तो जिससे क्या है, अब जैसे मैं मेरा एग्जांपल, अगर मुझे मेरे बचपन में किसी ने बताया होता कि आप सोशल सर्विस में जाना चाहते हो तो आप ये काम करो, आप ये पढ़ाई करो, तो शायद मैं अपना 17 साल कॉर्पोरेट में बर्बाद नहीं करता, मैं सीधे इसी करियर में आता और शायद मैं आज जो हूँ उससे ज्यादा कुछ कर पाता। लेकिन मुझे 17 साल कॉर्पोरेट में निकालने के बाद अन्ना हजारे जी से इंस्पिरेशन मिली कि यार अन्ना जी ने अपनी लाइफ दी है, वो आज इस लेवल पर, तो शायद हम लोग कर सकते हैं, और मैं सब कुछ छोड़कर अब इसमें लग गया हूँ। तो सर, अगर बच्चे जैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या उनको कॉर्पोरेट्स में डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए जिनके पास CSR फंड्स हैं, या फिर उनको किसी NGO को ही अप्रोच करना चाहिए? नहीं, फर्स्ट उनको अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। एजुकेशन पूरा होने के बाद, एजुकेशन होने के बाद वो CSR कॉर्पोरेट में भी अप्लाई कर सकते हैं और NGOs में भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड कि उनको क्या इंटरेस्ट है, किस फील्ड में काम कर रहा है। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं NGOs के अंदर। जैसे आप हेल्थ पर कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग जो है विमेन हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर काम करते हैं, कुछ हेल्थ के अंदर भी कई कैटेगरीज हैं। जैसे सिर्फ आप मेडिकल कैंप्स आप लगाते हैं, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर काम करते हो। जैसे मैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करता हूँ, विमेन एम्पावरमेंट में स्किल डेवलपमेंट भी है। आप बहुत सारे लोग रिसर्च के ऊपर काम करते हैं। जैसे आपने कोई अभी आप देखो कोटा के अंदर आप बहुत छोटे छोटे बच्चों की डेथ्स हो रही है हॉस्पिटल्स में, आपने देखा होगा, जो लास्ट ईयर भी काफी बड़ा इशू बना था। तो इस तरह की जो ये डिजीज है इनके ऊपर ज्यादा कोई फोकस नहीं होता, लेकिन इस पर रिसर्च अगर कोई स्टूडेंट्स कर सकते हैं, एक पूरा डेटाबेस तैयार करके, और आप सबमिट करो ये थीसिस गवर्नमेंट को या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस फील्ड में काम करते हैं। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिसेफ बताया, वर्ल्ड बैंक बताया, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह के स्टूडेंट्स को लेती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना अच्छा है। बहुत सारे प्रीमियर कॉलेज हैं जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट अच्छे कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं या अच्छे बड़े NGOs में भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे जो जैसे जयपुर में हैं या राजस्थान में कुछ छोटे स्कूल से भी, जैसे आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, आप उससे करते हैं तो आपको अच्छे जॉब्स मिलते हैं। हमारे पास भी एक दो लोग हैं जिन्होंने BCA करने के बाद हमारे यहाँ ज्वाइन करा है। ऑब्वियसली हम लोग छोटे हैं अभी NGO, तो उतना सैलरी पे नहीं करते, बट ये कि यू डेफिनेटली कैन गेट अ वेरी गुड सैलरी in corporate. Started small and then make it big, sir. Absolutely. And this is what in every career. Yes, I think we should be motivating our students to go for the volunteering job, along with their studies, so that they can understand what is the social work, how a NGO functions, and then they can carve their career post their graduation or master's degree. I think we can join hands with the NGOs that you are functioning or you are associated with for the benefit of the students. And it's been, I think my technical team is saying that we are already... Time is over? Yeah, time is over. Absolutely, thank you. We will be in touch with you and we will come back to Jaipur, and then I think we can organize a session in the campus also for you, because we have the skill development classes going on, as the government has already opened the college for skill development students. So certainly we would like to have a session for those students with you, and so that you can motivate them for, entrepreneurship. There are a lot of girls who are doing multiple, skills, that they are acquiring multiple skills, be in fashion designing, some are doing in journalism, some are doing software related computer courses, how they can start something small and then make it big.
So I think you've given a great, insight into the social work field, Prashantji. And we know that you had a marvelous corporate career also, and then you're doing extremely well in women entrepreneurship also. We are really obliged and thankful to you for joining us from Bangalore today. Thank you, Prashantji. Thank you Thank you so very much. much. Thank you very Thank much. you. Thank you. And the next speaker we have is Anila Chauradia, ma'am. I think she's already joined. So before Prashant sir goes, can we have another group photograph, please? Because I know he's a busy man. He has to move to his villages, to the rural background now. So if I can just ask everyone to please switch on the videos so that we can have a group photograph. All the students who are there, please join in. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. And now may I welcome Anila Chauradia, ma'am, who is the assistant director in MSME Jaipur, and she's going to tell us about how the industries are functioning, how the students can get the loans, and what is the role to strengthen the bilateral relations. So over to Anila, ma'am, now. Thank you, Neha ma'am. First of all, I would like to thank Biani Group of Colleges to make it possible to organize such kind of event, including the Japanese, I mean, international counterparts into this. To start with, I agree with Mr. Prashant ji that it is always a new normal. Basically, like when you start thinking doing something new, it is a new normal for you because everything changes. You need to think it other way. He also said that there are a lot of opportunities which you can choose out of it. Now the dilemma comes how to choose. So there is one mantra you can use. I think before starting my presentation, I would like to add that he stated around 100 opportunities are over there. Go through all those 100 opportunities. Second day again go through those opportunities. You will automatically cut some of the opportunities, thinking into that I might not find the market for this. I might not find the raw material for this. There are a lot of things like even if services are also there, you can think it from that way also. So choose is that way. Even after that also you think no, where I would find the market, then government have created one platform for you, that is central procurement portal. Go through this. In that you will find there are a lot of tenders which are government throwing into it, be it PSUs, be it government of India, be it state governments. I am focusing on this tender thing. Why? Because from there you will get the idea what I need to start with as a starter, be it as a startup, be it as a MSME. You will get one idea because you are already getting a market for that. Because if there is a tender of government, there is a full-fledged and sure-shot market for you, and you can think that this is the area of focus I can start with. So another thing Mr. Pal focuses on was the identification of skill. In this way, you can identify your skill. And one thing also he strengthened, there is a need of industria-academia relation. So I would request BNE Group of College, who is already working a lot along with the Japanese counterparts to strengthening your skills. So, ma'am, I will start with my presentation so that I can link the skills and industry academia collaboration. Please allow me to do the same. I think before you start your presentation, we Yeah. have a brief introduction about you, which I would like my anchor to please Yeah, introduce the ma'am, please. speaker to everyone. Thank you, ma'am. I would like to enlighten this that Miss Anila is working as Assistant Director in MSME Jaipur for Export Facilitation Cell, IPR Facilitation Center, PI, MPR, Newsletter, Facebook, and Twitter. Ma'am has also worked with Japan Plus, a cell at Department of Industrial Policy and Promotion, and Department of Commerce, Ministry of MSME. Ma'am has done post graduation in MA Economics. Along with her post graduation, she has also completed her post graduation diploma in IPR. She represented India in a workshop organized by World Intellectual Property Organization at Georgia in September 2019. With this, let me invite Ms. Anila to deliver her talk
on the topic empowering MSMEs and their role to strengthen bilateral relations. Please welcome, ma'am. Please Thank continue. you. Thank you, ma'am. I think there is some technicalities included in the screen. I think only the host can share the presentation. I would request if someone from your side, ma'am, can host the presentation, please. I have already shared with you. Ma'am, Yes. can you see your presentation? Yes, I can see. Is it visible to rest of Yes, you? ma'am, it's visible. Okay, fine. Thank you. Can we get to the next slide? Yes, ma'am. So starting with new normal, I would like to focus on, since my theme is about the Government of India initiatives for the MSMEs, I would, keeping into the time constraint, I will strictly confine to those things only. So as we know, the COVID had already created such a kind of like topsy-turvy in our life. So the outbreak of the pandemic have made each and every country to rethink on strengthening their local supply chains, where we basically focus on the startups and the MSMEs. And in this view, startups and MSMEs are a major growth driver for this. So government have already announced a package of Atmanirbhar Bharat or self-reliant India, as you all know, under which this following major announcement has been made. The definition of MSME has been changed, and a package of 3 lakh crore loans to MSMEs has been announced. A rupees 20,000 crore subordinate debt for stressed MSMEs like those who have turned into NPA, it has been announced, and rupees 50,000 crore equity infusion for MSMEs through fund of funds has been announced, and a global tender is disallowed up to rupees 200 crore. Now I will focus some of this one by one. Next slide, please. So earlier our definition mainly focused only on the plant and machinery criteria, but recently in May 2020, Government of India have added one additional criteria of turnover along with the investment in plant and machinery. And this was mainly done to facilitate MSMEs to grow in size and help them deal with the difficulties which have pandemic brought down. And this step will help attract investment as well as create more job opportunities in the MSME sector. Now let's see what is the criteria quickly. Like micro enterprises are those whose investment in plant and machinery is up to 1 crore and their turnover is up to 5 crore. And small are those whose investment in plant and machinery is 10 crore and annual turnover is up to 50 crore. And medium are those whose investment in plant and machinery is, can you hear me? Is 50 crore and annual Yes, turnover ma'am, is you're more audible. than 250 crore. Now next focus on the next slide, please. Now, what are the major trends nowadays in the wake of COVID-19 crisis? I mean, what your business or what angle side you change to make your own position? Next slide. The one is brand building. The other one is upscaling and rescaling of skills. As Mr. Professor Ramesh Makwana already emphasized on the role of media, here comes the role of digitization. Then there is technology upgradation. Since digitization come, I think you need to technologically upgrade yourself. That is very much important. And the most important thing which the startups and MSME face is the crunch of finances. So I will speak little bit about the financial schemes also. And as I already told, government have taken the initiative of Atmanirbhar Bharat, Make in India and Skill India, and the umbrella under this is local hoga global. Next slide, please. So for brand building, I would focus on intellectual property rights first. Brand building has traditionally been neglected by our MSME. It is a proven, like we all know about it. But given this era, we need to focus on this because the need for the new customer to trust us without meeting us physically is to build our own brand for a stronger today and tomorrow. Now, what Government of India is helping you in this? Like Ministry of MSME have their own scheme under which we are organizing awareness and sensitization programs. Apart from that, we are also providing reimbursement. As the researchers has also joined us in this, I would like to focus on if you are making any kind of innovation or something and going for a patent. So if you are applying for a domestic patent, we are reimbursing amount of rupees 1 lakh. If you are going for international patent, we are reimbursing amount of rupees 5 lakh.
And if NGOs or SPVs like services include multiple people, so if you are going for GI registration kind of thing, I will give one example of this is Blue Pottery of Rajasthan, which has got GI. We are reimbursing you rupees 2 lakh per case. And another I talked about and focused on brand building. If you're not going into innovation or something, but starting your own business or startups, you can go for a trademark. Like trademark is something which creates a value for you. When we see a Bisleri bottle, I would just quickly give one example. We clearly see whether it is a counterfeited product or a original Bisleri, because it is the shape of the Bisleri or the logo in the Bisleri that signifies it. So you can get a trademark of yours, creating your own brand building, and for that also Government of India is reimbursing you rupees 10,000. Next slide, please. I spoke about need for upscaling and rescaling of skills, as it is very much necessary. As you can see with the COVID, some of the industries have taken a boost in our country. One of them is the healthcare industry, be it medical equipment, the sanitizer industry or the chemical industry, which were not profound earlier, but now they are very much profound in our country. So in the post-COVID world, MSMEs need to adopt new technologies and new ways of working. And when we talk about new technologies, you need funding also, which we will talk later on, in order to survive and compete. So Government of India have already developed specialized institutes and training programs to create a pool of skill resources in order to help the local industries. In our ministry, we also keep organizing time to time the skill development programs, as well as be it 1 day program, be it 5 days, be it 30 days programs. For skill training, we organize that also. Now let's focus on how our country is associated with our Japanese counterpart to upscale our for the skill development. In 2017, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship India and the Ministry of Economic Trade and Industry, this is METI Japan, signed a memorandum of cooperation on TITP, the Technical Intern Training Program, that paved the way for sending Indian technical interns to Japan. And the technical interns trained under the TITP would be an asset for our Skill India initiative. And National Skill Developing Corporation is the implementing agency for the same in our country. Next slide, please. And under this cooperation, Japanese companies in India are participating in skill development through the establishment of Japan-India Institute of Manufacturing and Japan Endowed Courses. Till now, 10 gyms are there across India, and one of them is again in our Rajasthan. You can avail that opportunity also. BICON has set up a gym program in Nimrana since 2017, and its graduates are already working actively at the forefront. I would focus, Japanese have always invested a lot, and that they have focused a lot in Rajasthan also, because Rajasthan is the first country who have given the ease of doing business to our Japanese counterparts. Japan and India will continue their efforts in skill development in India through this GIM and JEC, and thereby further contributing to Skill India and Make in India. So in this way, our counterparts are also focusing a lot on the skill development of our country. Next. As Mr. Makrana told, media plays a role, so I would focus a little bit on digitization also. Digital tools have become popular in both B2C, business to customer, and business to business space. MSMEs and startups therefore need to build strong digital capabilities and digitize parts of their business model. I would again focus, please strengthen, if you are thinking of your own business, strengthen your digital capabilities to stay competitive in this global world. So now let's see how our Japanese counterpart are helping out in this also, to leap ahead together in the era of technology and to tap into the synergies and complementaries between Japan's Society 5.0 and India's flagship programs like Digital India, Smart India and Startup India. The two nations will cooperate in the areas of artificial intelligence and Internet of Things. Again, to help this out, Government of India, the Ministry of Technology and the METI Japan has signed a memorandum of cooperation with a special emphasis on digital technologies with the scope of India-Japan Startup Hub. As I have bold it out, there's a website, India-Japan Startup Hub. You can go there, register yourself, and you can interact over there with your stakeholders also. So you can check it out. Next slide, please.
Can we get to next slide? So I spoke about technology upgradation also. There are few of the scheme. I would parallelly speak about upgradation as well as the financial schemes. So there is credit link capital subsidy scheme of Ministry of MSME again, in which you can upgrade your plant and machinery, which include both the imported machineries as well as domestic machineries. You can avail any of this. You will get a 15% upfront capital subsidy for the same. However, for the aspirational districts and the SC/ST candidates, there is no restriction on the identified sector. No restriction means there are categories and listed technologies which others can avail, but for this group of categories, you can avail any kind of technologies under this scheme. There is lean manufacturing scheme. Lean is basically cutting down the wastages being made in your industry. So financial assistance government of India is giving in the way of paying to your consultant who would guide you how you can minimize the wastages being made in your industry by paying up to rupees 36 lakhs per mini cluster. The only clause in this that you have to form a mini cluster, that is a group of 4 to 10 units for a period of 18 months, in which government of India's contribution is 80% and 20% the beneficiary have to contribute. Another, you have heard about government of India announced about zero defect, zero effect. Basically, there would be no defect in your product and no effect on the environment of your product. For that certification also, government of India is giving you reimbursement. 80% for the micro units, 60% for the small units, and 50% for the medium units. Next slide, please. As students are with us and researchers are also with us, we have a scheme of business incubation, the support for entrepreneurial and managerial development of MSMEs through incubators, under which up to rupees 15 lakh per idea we are providing to the host institute. And I would add to this, we have 8 registered host institutes of Rajasthan with us. One of them is MNIT. Up to rupees 1 crore for procurement and installation of relevant plant and machinery, including hardware and software in business incubator, and up to rupees 1 crore as seed capital support to appropriate incubators in the form of soft loan or interest-free loan. So this is for the students. Now, another scheme is design expertise to manufacturing MSME sector. So, design under the design project, Government of India, that is Ministry of MSME, is providing financial assistance by engaging design consultants for design intervention, in which Government of India's contribution is 75% for the micro enterprises, 60% for the small and medium enterprises, up to a project cost of rupees 15 lakh to rupees 40 lakhs. And for the students, the financial assistance to the parent design institutes for reimbursing is 75% of the cost, provided they are working for a project for the MSME. Next. Another is the PMEGP scheme. This is one of the very popular scheme under which many are getting the projects. And this government is providing rupees 25 lakhs of loan to the manufacturing units and rupees 10 lakh for the service sector units. As you can see in the table, it varies ranging between, the subsidy varies between 15% to 35%, provided the category of unit it is and the area where the unit has been established. In this, the women are getting an extra advantage of 5% and 5% to 10%. And one additional criteria has been added to this scheme. Like earlier, it was only given 25 lakhs, but after 3 years, now you can upgrade your loan amount to rupees 1 crore for the manufacturing sector and up to rupees 25 lakh for the service and the trading sector. And the maximum subsidy would be the 15% of the project cost. Rest would be given by the loan. Next. Next slide, please. Yeah, this is the Stand Up India scheme. I would focus on this because most of the women entrepreneurs are joined here with us. Like this is the scheme exclusively for the women and the SC/ST entrepreneurs. Either the women need to have the 51% stake in the unit thing, and you can apply for a loan up to rupees 10 lakh to rupees 1 crore, starting from 10 lakh to rupees 1 crore. And you are getting a composite loan of 75% of the project cost. The only thing you need to keep in mind for this is that project should be a greenfield project. Next slide, please.
This is I in my earlier slide mentioned about local hookah global. This is old scheme of ours, public procurement policy. Under I would little bit highlight before getting into it. Under this scheme, Government of India is procuring 25% of all its procurement from the MSMEs, of which 3% is mandatory from the women entrepreneurs and 4% from the SC/ST entrepreneurs. And one new thing government have added into it to encourage Make in India and promote manufacturing and production of goods and services in India by increasing the local content. Now this also government have divided into three categories: class 1 local supplier, class 2 local supplier, and non-local supplier. That means encouraging all type of categories. Basically, if the government local content is having a local content of more than 50% is the class 1 supplier, and if you have a local content, that is domestic content, of more than 20% but less than 50%, then you are categorized as class 2 local supplier. So if government think that already in India we are maintaining some manufacturing capacity and competition is already available in India, then we go for procurement from the class 1 local supplier who have a local content more than 50%. This is basically to encourage our MSMEs. And if we think there is not much of production or capabilities in India, and then we go for the class 2 local supplier who have a content in between 20 to 50%. So, and another criteria in this has been added that up to rupees 200 crore, the foreign or global tenders won't be allowed. So, it is an opportunity for the MSMEs to get into these tenders also. There is less competition into it. Next, please. So now let's marketing. I told about marketing. I told about finances. Now comes the angle where we are going to sell it, right? Like if we have made everything, where you will sell it. So government have created a gem market place also for this. You can access it through gem.gov.in. Under this, new filters had been, government is enhancing it every day by day. New filters had been added to it, like country of origin, local content percentage one can see and procure accordingly. Buyers can choose to buy only those products that meet the minimum 50% local content criteria. Further, we are upgrading every day and we are taking significant steps to promote Make in India and Atmanirbhar Bharat into this. As I have already mentioned into this, GEM now has 10301 product categories compared to 4701 a year ago. So you can see there is an increase of 119% into the manufacturing products. And for the service, if we see, it has increased to 173 from 119. That is an increase of 45%. So if any one of you are creating your own product, you can register yourself on the GEM. Sure shot you'll get a like government is procuring, be it state government, be it central government, be it PSUs. We all are procuring from GEM. So you can register your product over there as a seller, and we will reach out to you. Next. Another is a champions portal. Ministry of MSME, keeping into mind the COVID, created a one-stop solution. There were a lot of queries of the MSMEs, the startups. Through this one-stop solution, they could reach out to us, register your grievances. They can ask any question related to manufacturing or any aid they need from Government of India. The respective ministries are addressing this to help the MSMEs in this difficult situation. And next slide, please. I will highlight some of the icons into it which are available into the Champions portal. Next slide. You can access it through champions.gov.in, like new announcement, new amendments, whatever the government has made, they are updating it on this portal. You can make suggestion, you can register, as you can see it over here, you can register your grievances. So this is about my presentation, but since some of the, I think this is the last slide, right? Next slide, please. Yeah, I would add one thing into this, like the startups are over here. There is Startup India. Under this, government is protecting you and nurturing you. So you can avail the business incubation scheme also of our ministry. Apart from that, you can avail the scheme of Startup India also, in which Government of India is providing you
like the protection, basically tax protection is for you, and apart from that, nurturing is for you, mentoring is there for you. You can avail that also. So if you have any of you have any queries, feel free to ask him. I'd be more than happy to answer you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for a wonderful presentation. And very briefly, you have made us understand about all the details about how our students can get the loans and to start up their own business. One question that comes to my mind is that in many of the government projects, there is a EMD amount, some security, proposal security, and Yes. performance security has to be deposited. So, is it exempted under MSME? Yes, ma'am. Sorry, I didn't focus into that. I talked about public procurement also. The tenders over there have a category of MSME, and the EMD fee is exempted for the MSME, provided you get the MSME need to get a Udyog registration for themselves, and it is free of cost. It's a self-certified. You need to go to the My MSME portal. There is a icon Udyog Aadhaar Memorandum. Go there, register your details, and a certificate would be generated for you. No, there is why I'm asking you, because there is an organization registered under MSME. Hmm. They applied for some project wherein they have to deposit a performance security of say about 5 lakhs or something. So, is it exempted for MSMEs? See, ma'am, performance security is different, EMD fees is different. So, Yes, so I just EMD needed that. fees are exempted out of that, but performance security is not. Everything is clear cutly given into the tender, but EMD fees is exempted. They can avail that. Okay, okay. In fact, we would be very nice. It would be great if you could sometime, have a session for our students who are actually doing courses related to fashion designing, where they would be budding entrepreneurs. Certainly, the girls would start up their own business. There are students who are doing computer-related courses, three Yes, years and short-term courses also. For them, I think we need to have a session wherein they can get the complete detailed knowledge. This is a very brief session, I yes, suppose, right. and we can have a great session with you again sometime, wherein you can guide the students how they can start up their business and what are the grants, what are the facilities being given by the government. So thank you so much, ma'am, for your wonderful presentation and sharing Thank your you. the government side viewpoints. Thank you so much, Anila, ma'am. And I think there's no time for the break now. So I'd request my anchor to go to the next session of Invited Talks to session two. Thank you, ma'am. Before moving ahead, can we have a picture with Anila, ma'am? Yeah, so I request all the participants whom I can see on the screen to please switch on their videos so that we can create some memories by having the group photograph on virtual mode. Rubina, Hema, Sunita Kumari, may I request all of you to please switch on your cameras. Good morning, Manish sir. Thank you so much for joining us. Riddhi ma'am, can you please start your video? Muskan, Ayushi, because very few of you have started your videos at the moment. Are we ready? Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. So, before starting the next technical session, I would like to introduce Biani Biosolutions, an Indian company founded by Professor Manish Biani in 2015, and Bioseeds Corporation originated as a venture business laboratory from Japan Advanced Institute of Science and Technology, founded in Ishikawa, Japan in April 2018, with Professor Manish Biani as representative director and president. During this pandemic situation, Biani Research Group invented Rose Aqua alcohol free hand sanitizer based on Japanese functional water technology. Apart from that, our other inventions are Depsir technology, that is Depsir TVC and Depsir M. Currently, the research team is working on water filtration and healthcare technology. Thank you. Now we are moving towards our next technical session. For that, we have Dr. K. Rattu, Mr. Chiranji Lal Sehni, and Ms. Shobha Gupta as our invited speakers on this session.
Moving ahead with this, I invite Dr. K.K. Rattu. I feel glad to introduce him. Dr. K.K. Rattu is a director in journalism and mass communication in Jaipur National University and ex-director of Doordarshan, writer and educationist. Sir has been selected by UPSC, worked in BBC, London, UK in its South Asia news desk. He is member of Syllabus and Curriculum Development Committee of Central Universities of Punjab, Himachal Pradesh, Rajasthan and Manipur for the programs on media, journalism, and mass communication. He has 40 years of administrative leadership, teaching, and research experience in strategic media management and production, especially in news and current affairs, direction production, writing, mass media, and communication and journalism. He is of more than 70 multilingual books in English, Hindi, Punjabi, and Urdu, including many national award winning books on various subjects of media, language, literature, and different social aspects. With this, I would like to invite Dr. K.K. Rattu with his today's talk as New Avenue and Changing Trends in Media Industry. Please welcome Dr. K.K. Rattu. Welcome, sir. Good morning, all of you. I am here in Pink City, Jaipur. Welcome, all of you. My topic today is new avenues and changing trends in media industry. As you know, the area of media industry nowadays is so vast. इतना फैल चुका है कि more risks and more boldness exists with the media industries now. In present scenario, if you underline the story of growth of media industry, then you can easily find that growth in billions. If I share the idea of industrial growth and the increment for the media industry, for the media experts, for the media tools, that's all the tools of the communications, that is with the total revenue in the world in the year 2015, 2015 से लेके 2020 तक जो है वो $622 बिलियन है और 2022 तक after 2020 to 22 it can be raised in the $822 billion. So this is the underlining graph of the media scenario of industries. So far, so the Indian scenario. जैसे कि मैं आपको बहुत पहले से ही बताना चाह रहा हूं कि now the risk taking factor. The time is so crucial pre-post and post-COVID. पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक से बाद का ये जो दौर है वो हमें ये दिखाता है कि मीडिया की ग्रोथ और मीडिया इंडस्ट्री की ग्रोथ में एक उछाल आया है। वो जो लोग कहते हैं कि देयर इज ए डिक्लाइन इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री बट OTT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ infrastructure, lot of new readers, viewers, listeners for their product. ये प्रोडक्ट जो मैं आपसे यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट इसलिए है कि OTT प्लेटफॉर्म is an alternative platform nowadays for the tool of communication in the new trends. As I told and discussed with you the new trends, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ मीडिया के सारे विशेषज्ञ और के सारे विद्यार्थी आप ये समझ सकते हैं कि नाउ द सिचुएशन इज वेरी रिस्की, द टाइम इज सो इम्पोर्टेंट, यू कांट मैच विथ योर माइंड्स एंड सोल्स बिकॉज पूरे देश में टर्मोइल सिचुएशन ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, टर्मोइल सिचुएशन either in the society or in the trouble in our minds also occurred.
यदि मैं ये कहूं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर हम एक राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ एक सामाजिक लड़ाई भी अपने दिमाग में लड़ रहे हैं और मीडिया उसमें बड़ा भागीदार है। और दूसरी बात ये जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये समय बहुत नाजुक है, ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। देश में किसान आंदोलन चल रहा है और मीडिया की भूमिका जो आप देखते हो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया इज नाउ ऑन ए बोल्ड, एक बोल्ड लाइन है और जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहकर क्रॉस करके छोड़ नहीं सकते। मीडिया आज आपकी अभिव्यक्ति और मीडिया की अपनी क्रेडिबिलिटी ये साफ दांव पर लग गई है कि कौन सा मीडिया देश का मीडिया है, कौन सा मीडिया देश के लोगों का मीडिया है, हु रिप्रेजेंट द crores of the peoples and masses of this democratic country that is called Bharat versus India। ये आप दिल्ली में बैठे हुए किसानों के धरने से देख सकते हैं। न्यू ट्रेंड्स के साथ मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया की भूमिका है कि वो सूचनाओं का आदान प्रदान आप तक कैसे पहुंचाता है। आज सूचना का प्रवाह जैसे सेंसर हो रहा है, जैसे सूचना की नई से नई दुनिया आपके लिए पैदा हो रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाउ द न्यू लाइट ऑन द मीडिया स्लेव, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है वो टर्न टू बी द बिलियन tons of money created by the media, but earned media, owned media, paid media, and now the new term in the terms of media, that is the fake media। पेड मीडिया तक हम आ गए थे, अब फेक मीडिया है। इन द अर्लियर टाइम ऑफ द ट्रम्प टाइम, द अमेरिकन प्रेसिडेंट is invention a new word for the media platform, that is the fake news and fake media। ये बातें पहले भी होती थी, हमारे देश में भी होती थी। देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मीडिया ट्रेंड्स किस तरह बदलता है, उसको राजनीति कैसे प्रभावित करती है, उसको सामाजिक स्थिरता कैसे प्रभावित करती है और लाखों करोड़ों लोग उससे कैसे प्रभावित होते हैं। ये आज का डिजिटल सिनेरियो है और जिसमें पॉसिबिलिटीज पैंडेमिक ने दी है, आपको न्यू ट्रेंड्स दिए हैं, वर्चुअल जॉब एंड वर्चुअल इंडस्ट्री जो एक नई तरह की मीडिया की क्रिएशन है वो पैदा की है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि जॉब लॉस्ट इन्वायरमेंट, पैंडेमिक का जॉब लॉस्ट इन्वायरमेंट हमें ये दिखा रहा है कि वी आर एबल टू क्रिएट hundreds millions of new jobs also on the digital platform। Media industry is so fast and so growing with the richness of the content, with the richness of the new technology that can become a miracle। Now, if you create the particular situation in the media, then you see the contribution of the Indian media so far। In a democratic system, each and everyone on the platform of digital in between the lines of the tolerance and intolerance, so hundreds times more possibilities and 100 times more jobs create on the OTT forum platform through the media industry। So boom in the media industry is there। Many of our budding journalists, students, our experts eager to know how we create the large number of budding students in the for the right wing of left wing of the media in India। We are on the crossroads। The Indian scenario, भारतीय परिदृश्य मीडिया के तरह आज इस तरह से उलझ गया है कि आप देख ही नहीं पाते कि सही सूचना का प्रसारण, सही सूचना का समन्वय आप तक कैसे पहुंच सकता। तो मैं अपने उन मित्रों को जो मीडिया में जाना चाहते हैं, मीडिया इंडस्ट्री के नए ट्रेंड्स के बारे में बात सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये बताना चाहता हूं कि मीडिया की इस नई इंडस्ट्री में 260% का उछाल अनुपातक आया है, जिसको आप गुलाबी पन्ने वाले अखबार से लेकर इंसान आंदोलन की कवरेज तक आप
आता हुआ देख सकते हैं। ये उशार सोशल मीडिया की वो इंडस्ट्री है जिसको आप व्हाट्सएप से लेकर और पॉडकास्ट तक की दुनिया में देखते हो, जिसमें फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, और हैंडआउट और आदान प्रदान है मैसेजेस का, और व्हाट्सएप का जो प्रसार प्रसार है, ये सूचना का आदान प्रसार है, ये नई संभावनाओं का आदान प्रसार है। मैं इसके बाद एक बात आप जोड़ दूं कि नई संभावनाएं कैसे क्रिएट होती हैं। आज जब पूरा देश किसान आंदोलन की कवरेज के लिए देख रहा है, तो कल रात उन्होंने ट्रॉली टाइम्स एक अपना अखबार निकाला है, और कल का दिन मैं समझता हूं कि भारत के लोकतंत्र के मीडिया की विदा में एक उस तरह का एक नया दिन था, जब उस प्रचलित मीडिया को, द पॉपुलर फॉर्म ऑफ मीडिया इन दिस कंट्री इज टर्न टू ए ट्रॉली टाइम्स, a little 4 pages newspaper which is published by the farmers who are sitting from the last 26 days on the border of nation's capital. So इस त्रासदी के बीच में यदि मीडिया नई संभावनाएं तलाश रहा है, तो उन नौजवानों के लिए क्यों नहीं, जो इसके लिए नई पत्रकारिता का एक नया भविष्य और नया चेहरा हो सकते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हजारों की हजारों नौकरियों की तादाद में कंटेंट राइटर से लेकर, कॉपी राइटर से लेकर, प्रेजेंटेशन से लेकर, कैमरामैन से लेकर, और इस तरह की कितनी इंडस्ट्री में कितनी दौड़ है, और सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह का एक नया इरादा और जिस तरह का एक नया दायित्व समाचार संप्रेषण में बन गया है, समाचार के आदान प्रदान में बन गया है, वह अद्भुत है। पिछले 70 सालों में हम कह सकते हैं कि हमने मीडिया के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन देखे हैं, बहुत सी तकनीक को मीडिया के द्वारा बदलते हुए देखा है, परंतु ये सच है कि 2020 के 2020 के इस दौर में पहुंचता हुआ मीडिया एक उस नए मीडिया का एक नया इतिहास लिख रहा है, जो शायद इस सदी का पहला वो इतिहास होगा जिसके द्वारा मीडिया अब व्यक्ति की आवाज को दबने की बजाय नए तरीकों से, तकनीक की नई दौड़ से, तकनीक के नए दायित्वों से अपने आप को जिंदा रख रहा है, अपने आप को समाज की नब्ज को देखता हुआ एक नए दिशा की ओर बढ़ रहा है। पॉसिबिलिटी है, रियलिटीज है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल वीआर और एआर के बीच में उलझा हुआ जो मीडिया, वीआर और एआर मीन्स वर्चुअल रियलिटी और एगमेंटल रियलिटी, एआर और वीआर के बीच में फंसा हुआ ये मीडिया आपको क्या दिखा रहा है? आपको वो दिखा रहा है जो पैंडेमिक ने आपके लिए छोड़ दिया है, जहाँ परिवर्तित होती जिंदगी के द्वारा मीडिया की एक नई पहचान का चेहरा। Here is a crisis of identity for the Indian media. Credibility crisis is also there. और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आज आप मीडिया का चेहरा जो भारत के नेशनल प्रेस से आप देखते हो, उसका चेहरा नई संभावनाओं का कितना संप्रेषण आप तक पहुंचा। आप कह सकते हैं कि सरकार की सारी योजनाएं और सरकार का सारा प्रसार, सारे का सारा प्रचार प्रसार एक पर्टिकुलर तरह का मीडिया तो दिखाता है, परंतु लोगों की आवाज, लोगों का दुख दर्द और लोगों की समस्याओं का उठान और उन खबरों का फॉलोअप, जिन खबरों से सरकारें डरती है, जिन खबरों से अधिकारी डरते हैं, वो खबरें कौन सा मीडिया आप तक पहुंचाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स, ये मान के चलिए कि आज मीडिया के नए प्लेटफॉर्म ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने परंपरागत चीजों को छोड़ते हुए नई संभावनाओं को तलाशा है, और इन नई संभावनाओं के पीछे ही एक नया लोकतंत्र चेहरा जो इस देश का बन रहा है, और जिसमें मीडिया की अति महत्वपूर्ण भूमिका को आप छोड़ नहीं सकते। Let us see the growth of the entertainment industry as well as the social front industrial cause. The cause of reality, the cause of to create a new
identity in the media industry, and of course, the content variation. विषयों की विविधता के साथ हम जो देख रहे हैं, विषयों की विविधता के साथ जो हम देख रहे हैं, वो हमें नई विविधता की ओर लेके जाता है। और यदि मैं ये कहूं कि भारत के 70% लोगों की कवरेज जो आज नहीं हो रही है, और मात्र एक नुक्ते से और उन बिंदुओं के साथ जुड़ गई है जिन बिंदुओं से उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो अल्टरनेटिव मीडिया क्रिएटेड बाय द न्यू टेक्नोलॉजी, एंड न्यू टेक्नोलॉजी is a cause for the new media industrial growth. लोगों ने, दोस्तों ने और नए पत्रकारों ने नए तरीके इस टेक्नोलॉजी के जरिए इजाद किए हैं, और इन नए तरीकों के पीछे एक नई तकनीक, एक नई सोच है, एक नए लोकतांत्रिक देश की नई परिभाषा और नया दायित्व है। और उन्होंने कितने ही मौके, और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया का उछाल रोजगार के कितने ट्रेंड्स और कितने मौके पैदा कर रहा है, इसमें भाषा का दायित्व है। एक वो भाषा जो आज से आप कुछ वर्ष पहले तक देखते थे, वो भाषा का मनोवैज्ञानिक से लेकर व्याकरणीय ढांचा, द स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज इज नाउ ब्रोकन। A new language of media is created by the modern publications, modern communication tools. You see the language of the Twitter and the Facebook also in this regard. और उनको करने वाले लाखों के लाखों, जिसको आप यूजर कहते हो, ब्लॉगर कहते हो, और ये लिखने वाले कौन है? ये सारे के सारे वो लोग हैं जो इस मीडिया को नई परिभाषा के साथ और नए जाविये के साथ और नई संभावनाओं के साथ देखते हुए नए मौकों की तलाश में है। और ये सचमुच नया ट्रेंड है जो रोजगार के एक नए अवसरों की बाढ़ लेकर आया है। लोग कहते हैं कि पैंडेमिक ने ये नुकसान कर दिया, पर पैंडेमिक ने हमको सिखाया है कि बोल्डनेस क्या होती है। तो क्रिएटिविटी क्रिएट ए न्यू ईरा ऑफ new inventions in the area of modern sensibility and modern journalism of Indian scenario. इस सिनेरियो में आप देखते हुए भारतीय परिवेश में पत्रकारिता का, संप्रेषण का एक नया इतिहास डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा रचा गया है। और अब आते हैं विज्ञापन की दुनिया में। विज्ञापन की दुनिया से जुड़े हुए जितने लोग हैं, यदि 100% के आंकड़े के साथ मैं आपको अनुपातक आंकड़ा बताना चाहूं, तो उसमें से आज की तारीख में 80% से लेकर 87% लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ जुड़ गए हैं, और कंटेंट सिर्फ 13% लोग ही उसमें फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर ट्रेंडिंग होना, हैशटैग से दुनिया को बदलने का नारा देना, ये एक बात हो सकती है। लेट अस अंडरलाइन द सोल, द डायलॉग ऑफ सोल, द पीपल हु आर ऑन द रोड साइड। हाशिए के बाहर पड़े हुए। I'm sorry for the interruption. Sir, sorry for the interruption, but we are joined by the Honorable Chief Guest, Shri Om Thanvi ji. So I'd like to extend my hearty welcome to Om Thanvi ji also, because of his busy schedule, he's here for a very short time with us. So I think I'd request the anchor to please, give the introduction of the Honorable Chief Guest, and then we can switch over to the the invited talks. I'm sorry for the interruption, sir. Why you are so sorry? Let it be, I wind up. Sir, because Dr. Thanvi... If chief guest is so important, then why you are invited the other guest also? No, sir. Let us wind up, please. When you invite the chief guest, what a fun to invite a guest. No, yes, please continue, Dr. Ratu, please continue. Please conclude, sir. Please complete, please complete your session. ये कोई तरीका नहीं है। Request to complete your session. मैं जैसे पहले कह रहा था कि पैंडेमिक के दौर से we are creating the lots of and 100 times opportunities avenues there, और इस देश को यदि
नए ट्रेंड्स के साथ, मीडिया की नई इंडस्ट्री के साथ यदि चलना है तो जितने नए मौके हैं वो नई पीढ़ी के लिए सुधार कर और नई तकनीक के साथ जोड़कर और इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे और भारत के चौथा स्तंभ की सार्थकता को देखते हुए रखने चाहिए। और इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूं और मुझे लगता है कि चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता की और अभिव्यक्ति की आजादी का मसला जो मैं अभी तक कह रहा था वो जहां भी साबित हो गया है। आप लोगों ने सुना, धैर्य के साथ सुना और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की सार्थकता को एक संवाद दिया और मुझे भी इस अवसर पर मौका दिया। मैं प्रबंधकों का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Definitely, the credibility of media industry has increased with the change in time, and undoubtedly, it holds great significance in today's era. With this, I would like to invite our honorable guest, chief guest of the day, Shri Om Thanvi ji, Vice Chancellor of Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication and Rajasthan ILD Skills University. Please, sir, enlighten us. And also, I would like to invite Dr. Sanjay Bayani to enlighten us about a little bit about Sri Om Thanvi ji. Thank you. Yes, sir. Thank you so much for your valuable time. From top bottom of my heart, I welcome you, and I request you to please share your wisdom word. And we are with Dr. Dhyan Singh sir. Dhyan Singh sir, could you tell something about sir? Sir, unmute yourself. Unmute. Yes. रेस्पेक्टेड सर, आपको सुनने के लिए हम लोग हैं, तो प्लीज़ अपने वैल्यूबल समय को निकाल कर आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो प्लीज़ अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें सर, प्लीज़। Thank you very much. I'm very grateful that Gyani group of colleges has invited me to express my views on this conclave. But first of all, I apologize. I never meant that Professor Rattu conclude so fast, and I was hearing him with great interest. He's my old friend. When I was in Rajasthan Patrika, he was one of our contributors. So I'm sorry, I didn't want to intervene. Anyway, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने चुना ऐसे मौके पर जब दुनिया जो है एक महामारी के संकट में है। और इस संकट में जैसा कि और संकटों में भी होता है, उसमें कई तरह के अवसर भी हमको मिलते हैं, कई तरह के उपाय हमने सोचे हैं। और जो कम्युनिकेशन की दुनिया है, संचार की दुनिया है, इस संचार की दुनिया में आप देखते हैं कि आज हम लोग अपने अपने दफ्तरों में या घरों में जहाँ भी हैं वहाँ बैठ करके ही संवाद कर रहे हैं। पहले भी ये सुविधाएं तो उपलब्ध थीं, लेकिन इन रास्तों को हमने ठीक से पहचाना नहीं था। तो जो है कई दफ़ा संकट भी एक तरह का अवसर लेके आते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोग जब पहले संगोष्ठियाँ करते थे, उन संगोष्ठियों में अगर आप किसी को अमेरिका से बुलाना चाहते हैं, मेक्सिको से बुलाना चाहते हैं, तो बहुत जतन करना पड़ता था, पैसा खर्च होता था और आकर के तो अपना 10 या 20 मिनट का जो उद्बोधन देना है वही दिया जा सकता था। लेकिन उस सब में जितना उद्यम लगता था, ये सारा इस तरह के संवाद में वो उद्यम जो है वो तिरोहित हो गया और हम बहुत आसानी से दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने में बैठ करके और संवाद कर सकते हैं। आपने इस सुविधा का ये बहुत अच्छा उपयोग किया और इतना व्यापक 3 दिन का ये जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। अब ये जो मीडिया की दुनिया है, इस मीडिया की दुनिया के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या-क्या
नई चीजें हमारे सामने आएंगी, क्या क्या नए माध्यम आएंगे, ये और मामलों में भी होता है। आज से 100 साल पहले कोई नहीं कल्पना कर सकता था कि टेलीविजन की क्या भूमिका होगी या टेलीफोन की क्या भूमिका होगी। हमारे वक्त में जो टेलीफोन की भूमिका थी वो मोबाइल के आने के बाद में उसकी बिल्कुल तस्वीर बदल गई। फिर स्मार्टफोन जब आए तो उसके बाद में आप ये देखिए कि पत्रकारिता जो है उसका इतना जुड़ाव हो गया है कि बहुत से अखबार, बहुत से टेलीविजन, बहुत से ओटीटी के जो भी माध्यम हैं, वो लोग मोबाइल के जरिए आने वाले वक्त में क्या चीज हमारे सामने आने वाली है हमको मालूम नहीं है। उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आविष्कार होते रहते हैं, प्रयोग होते रहते हैं, और ये चीज एक विश्वास के साथ में मैं कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में जो मीडिया में, पत्रकारिता में, संचार के माध्यमों में क्रांति, जिसको हम अभी कहते हैं कि क्रांति है, ऐसी कई क्रांतियां होंगी, ऐसी कई क्रांतियां आगे होने वाली हैं। और जैसा प्रोफेसर रत्तू कह रहे थे कि रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जरूर ये जो महामारी के दौर में लोगों की नौकरियां चली गई अखबारों में, टेलीविजन में, या और भी जो ऑनलाइन माध्यम हैं उनमें, लेकिन इससे कोई दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। भविष्य पत्रकारिता का, मीडिया का और लोक संचार का बहुत उज्जवल है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक मीडिया के संस्थान से जुड़ा हुआ हूं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आने वाले दौर में इसमें रोजगार की विपुल संभावनाएं पैदा होती हैं। अब ये है कि मौजूदा जो परिवेश है, मौजूदा जो माहौल है, ये इसमें हम लोग क्या भरोसा बांध सकते हैं और क्या जिम्मेवारियां हम पर आयद हैं, मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहता हूं। मीडिया की तस्वीर बदल गई। ये तो शुरू में जैसा मैंने कहा, प्रिंट मीडिया एक माध्यम था जो बरसों से चला आ रहा है और ये रहेगा, ये क्योंकि प्रिंट का, छापे का जो भरोसा है, छपे हुए अक्षर की जो कद्र है वो कभी कम नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे माध्यम हैं उन माध्यमों की अहमियत कम हो जाती है। दूरदर्शन और रेडियो, अब खबरों के मामले में रेडियो जो है अभी कम से कम भारत में आप कह सकते हैं कि अभी वो पालने में भी नहीं है। तो सिर्फ गाने बजाने के लिए आप एफएम सुन सकते हैं, एक सरकारी माध्यम जो है उससे खबरें हमको मिलती हैं, लेकिन एफएम के बीच में भी कहीं कहीं आपको खबरें सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन रेडियो का माध्यम पत्रकारिता में अभी लगभग अछूता है। लेकिन अब ओटीटी के चलन के बाद में आप ये देखते हैं कि ये जो आपका ऑनलाइन ट्रांसमिशन शुरू हो गया, उसके साथ में बहुत चीजें आ गई। यूट्यूब भी आ गया, यूट्यूब से पत्रकारिता हो गई, क्योंकि जो सैटेलाइट से या केबल के जरिए जो काम हो रहा था उसकी मोनोपोली को ओटीटी ने तोड़ दिया, उस जड़ता को ओटीटी ने तोड़ दिया है। तो आप ये देख रहे हैं कि बरखा दत्त हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, आपको कितने ही पत्रकारों के ओटीटी के जो चैनल हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मैं मनोरंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिनेमा, सीरियल वगैरह में जो ओटीटी की भूमिका है वो भूमिका तो जग जाहिर है, और वो इतनी सफल हो गई है कि और जगहों पे केबल सैटेलाइट वालों को सोचना पड़ रहा है कि हमको बचाव के लिए अब क्या करना पड़ेगा। लेकिन मैं मीडिया की बात तक सीमित रखना चाहता हूं, पत्रकारिता की बात तक अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं। तो ये जो ओटीटी के जरिए जो संचार में क्रांति हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन रेडियो में अभी एक मामूली पदचाप, आहट आप सुन सकते हैं, पॉडकास्ट। ये जो पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट ने जिसको आप इंटरनेट रेडियो कह सकते हैं, ये जो इंटरनेट रेडियो पॉडकास्ट के जरिए जिसने प्रवेश किया है, ये रेडियो में एक तरह की वापस ताजगी लेकर के आया है कि आप सुन सकते हैं। टेलीविजन सुनने देखने के लिए आपको उसके सामने बैठना पड़ता है, आप बंद के बैठ जाते हैं, इसलिए देखने वाला कुछ और काम नहीं कर सकता है, इसीलिए शायद उसको एडिट बॉक्स कहा गया। लेकिन रेडियो, आप किसान खेत में काम करते हुए, हम जानते हैं कि जिस दौर में रेडियो का बहुत देश में चलन था, टेलीविजन नहीं आया था, तो लोग रेडियो सुनते रहते थे, अपने काम भी करते रहते थे, और साइकिलों पर रेडियो बांध के लोग जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने काम कर सकते हैं, रेडियो को सुन सकते हैं। लेकिन रेडियो का माध्यम खबरों के मामले में जो बिल्कुल अछूता था,
पॉडकास्ट के जरिए थोड़ा बहुत आया है, खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूज फीचर्स जो हैं ये मैं देखता हूं। अभी इन्होंने जो इंडिया टुडे ग्रुप है उन्होंने जो पॉडकास्ट शुरू किया है उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो समाचारों से या सामूहिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये मैंने एक माध्यम की बात आपको कही। रेडियो टेलीविजन, इसकी मैं हवाला इसलिए दे रहा था कि जो हमारा पारंपरिक प्रिंट मीडिया है, कन्वेंशनल, तो प्रिंट मीडिया के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उसकी अहमियत, उसकी क्रांति, उसकी सफलता की वजह क्या थी कि प्रिंट मीडिया में, अखबार में या पत्र पत्रिका में उसको पढ़ने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आपका साक्षर होना जरूरी है। लेकिन रेडियो कोई भी सुन सकता है, टेलीविजन कोई भी देख सकता है। तो ये जो भारत जैसे देश में जिसमें निरक्षरता भी थी, लोग साक्षर नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि लोग अज्ञानी थे। कई बार ज्ञान और साक्षरता को लोग जोड़ के देखते हैं, बिल्कुल फिजूल की बात है। जो व्यक्ति साक्षर नहीं है लेकिन ज्ञान उसके पास में है, विवेक उसके पास में है, और हमारे देश में गांव के लोग आपको इतने विवेकवान मिलेंगे। आज लोगों को हैरानी होती है जब किसान आंदोलन में उनको लगता है कि अरे यहाँ पे तो बैठ के लोग किताब पढ़ रहे हैं या ये तो अंग्रेजी भी बोल रहे हैं वगैरह, तो उनके दिमाग में एक छवि बनी होती है कि गांव का व्यक्ति या किसान वो एक पिछड़ा हुआ व्यक्ति है और ज्ञानी तो वो है जो शहरों में रहता है। ऐसा नहीं है। जो गांव कस्बे के लोग, उनमें बहुत विवेक था, ज्ञान था, संस्कार था, लेकिन उनके पास में साक्षरता नहीं थी। उसकी जरूरत भी शायद नहीं थी, क्योंकि वाचिक परंपरा चली आती थी, सदियों से चली आती थी। और कितना साहित्य, कितनी कविताएं, कितने पंचतंत्र, कितने कठोपनिषद, कितनी चीजें जो हैं वो वाचिक परंपरा से चली आती थी, यानी लिखी नहीं गई थी, बोली जाती थी, याद रखी जाती थी, सुनी सुनाई जाती थी, धीमे धीमे उनको लिपिबद्ध किया गया। तो ये जो गांव का जो संस्कार है, गांव की जो समझ है, उस पर कभी भी सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन हाँ, साक्षरता नहीं थी, अखबार शायद अगर आप उनके यहाँ पे भेजेंगे तो उनका अभ्यास उसका नहीं था। तो टेलीविजन ने और रेडियो ने आकर के उनको सूचना से जोड़ दिया। तो जो सूचना आप देना चाहते हैं, जो जानकारी आप बांटना चाहते हैं, क्योंकि आप ज्ञान नहीं बांट सकते, ये माध्यम जो संचार के हैं, ये सूचना के हैं, जानकारी के हैं, इतनी ही सीमा है। लेकिन वो जो जानकारी है, जो सीमा है, अगर कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो आपको उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, वो जानकारी चूंकि वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन एक आधुनिक जानकारी आप उसको या नई जानकारी देना चाहते हैं, उसके लिए जो नए माध्यम थे ये बहुत कारगर साबित हुए और इनकी पहुंच बहुत बढ़ गई। भारत जैसे देश में ये इसलिए बहुत जल्दी सफल हुए क्योंकि इनको बहुत लोग पढ़े लिखे भी और ऐसे व्यक्ति भी जो साक्षर नहीं थे लेकिन जिनके पास ज्ञान तो था, उनमें भी इसकी पहुंच बढ़ती चली गई। लेकिन जो मीडिया है या पत्रकारिता है, उसमें इसका कोई बहुत लाभ हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। होना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर जो हमारे समाचार माध्यम, रेडियो तो मैंने कहा कि उसका तो प्रयोग ही हमारे यहाँ नहीं हुआ अब तक और सरकार की मोनोपोली में वो कैद है। लेकिन टेलीविजन जो है उसको आपने खोल दिया, लेकिन उन्होंने भी मनोरंजन जो है उसको प्रमुखता दी। न्यूज चैनल्स के नाम पे उनका पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, उनको लाइसेंस मिले, लेकिन उन्होंने भी मनोरंजन के कार्यक्रम ज्यादा देने शुरू किए। बाज दफा तो ये भी हुआ कि खबरों को भी उन्होंने मनोरंजन की शक्ल में तब्दील कर दिया। हम जानते हैं किस तरीके से बहुत जल्दबाजी में फटाफट 100 खबरें, 200 खबरें, और उनमें भी ज्यादातर अपराध की खबरें, सिनेमा की खबरें, हल्की फुल्की खबरें वगैरह। और उसके बाद में जो सरकार और पूंजीपति, इनका जिस तरह से नियंत्रण हुआ इस देश में, तो वो आजादी घट गई। जो मीडिया की आजादी है, तो क्रांति तो हो गई, आपको बहुत सारे माध्यम मिल गए, बहुत सारे साधन मिल गए, लेकिन उन साधनों के साथ में जो आपकी स्वाधीनता थी, जो आपकी आजादी थी, वो घट गई। क्योंकि सरकार को, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, कि आपकी गोद में बैठ करके आपकी जो जैसा आप चाहते हैं उस ढंग से काम करे। और जो सरकार के जो पूंजीपति जो पहले से उनकी गोद में हैं, वो अगर 100, 200, 20, 50 चैनल खरीद लें, जैसा हमारे यहाँ इस देश में हुआ, तो एक तरह से ये एक संकट हमारे सामने अभिव्यक्ति का आया है। इस अभिव्यक्ति के संकट की काट सोशल मीडिया से हुई है। सोशल मीडिया
भी आप जानते हैं कुछ वर्षों पहले तक जिसकी मामूली सी आहट थी, लेकिन अब घर घर में लोग सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। और सोशल मीडिया जो है वो एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया, लेकिन उस व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के माध्यम से उन चीजों को भी आपको जानने समझने में मदद मिलने लगी जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो उसको छुपा के रखना चाहता है या छुपा के रखना चाहता होगा, और वो चीजें आपके सामने नहीं आ सकती थी, अब सोशल मीडिया के जरिए आती हैं। प्रोफेसर रत्तू सोशल मीडिया का जब जिक्र कर रहे थे तब मैं सोच रहा था कि सारे सोशल मीडिया को आप जो है वो पत्रकारिता में शरीक नहीं कर सकते। ब्लॉग का जिक्र उन्होंने किया, ब्लॉग पत्रकारिता नहीं है। सोशल मीडिया में दो चीजें देखनी चाहिए, एक तो सोशल मीडिया में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। कोई कह सकता है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, वो भी तो एक तरह का अभिव्यक्ति ही है, उसको क्यों नहीं हम लोग मीडिया के परिभाषा में शरीक कर सकते हैं। मैं इसलिए उसको शरीक नहीं करता हूं क्योंकि अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, निजी अभिव्यक्ति आपकी रहती है, एक आप मीडिया के रूप में, पत्रकार के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, तो पत्रकारिता में हमेशा लिखने वाला कोई है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको जांचता भी है। कोई संपादक भी होगा, तो आपने जो लिखा वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, कितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए, किस भाषा में पहुंचना चाहिए, उसको कोई दूसरा व्यक्ति देखता है, वो उसको मांझता है, उसमें सुधार करता है, उसमें संशोधन भी करता है। लेकिन अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप ही लिख रहे हैं, आप ही छाप रहे हैं, जितना चाहते हैं उतना छाप रहे हैं, जिस भाषा में चाहते हैं, अच्छी है बुरी है, तो मैं उसको पत्रकारिता नहीं मानता हूं, उसको मीडिया नहीं मानता हूं। वो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति जरूर है और उसकी आजादी है। तो सोशल मीडिया में कितना मीडिया है और कितना अभिव्यक्ति है, इसके भेद को जरूर जो है वो लकीर खींच के अलग अलग कर देना चाहिए कि इसमें पत्रकारिता कहाँ है और इसमें व्यक्तिगत अभिव्यक्ति कहाँ है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि ओटीटी में जो आपके पास में चैनल आ गए हैं, यूट्यूब चैनल आ गए, और भी माध्यमों से आपको पत्रकारिता है, उसमें पत्रकार हैं और उसमें पूरी टीम काम कर रही है, उसमें कोई आपकी माफ कीजिए, आपकी जो कॉपी है उसको सुधार रहा है और उसको एडिटिंग कर रहा है, प्रस्तुति की चीजें भी आ रही हैं, वो बिल्कुल एक अलग तरह से काम कर चीजें करती हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया में जो अखबार हैं, टेलीविजन है, उनके माध्यम भी आप पाएंगे कि उन्होंने भी जो है फेसबुक पर, ट्विटर पर, उसके जरिए, बल्कि व्हाट्सएप पर भी वो अपनी खबरों का प्रसार कर रहे हैं। उनके अपने एक तरीके से प्लेटफॉर्म, अखबार का प्लेटफॉर्म आपको सोशल मीडिया के अलग अलग जो माध्यम है उन पे मिल रहा है। ई पेपर आपको मिल रहा है, वो अखबार ही है। इसी तरीके से अखबार का अपना वहां पे एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लगातार खबरें अपडेट हो रही हैं, सुधार हो सकता है। और आप देखिए अखबार में जो छपता है उसको आप सुधार नहीं सकते हैं, अगले दिन आप उसका भूल सुधार छाप सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो मीडिया काम कर रहा है उसमें त्रुटि को सुधारा जा सकता है। दूसरा, उसमें सीमा भी जो है आपको ज्यादा मिलती है। आप 2000 शब्दों का लेख अखबार में छापते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप 4000 शब्दों को द वायर के ऊपर पढ़ लें तो आपकी इच्छा पर है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर वहां दिया जा सकता है कि ये इतना जो है, क्योंकि वहां जगह की आपके सामने संकट नहीं है जो कि आपकी और जगहों पे रहता है। टेलीविजन में भी आपके सामने एक सीमा का संकट रहता है। तो ये जो ओटीटी का माध्यम है वो कई तरीके से आपके सामने एक रास्ते खोलता है, संभावनाएं लेकर के आता है, और उसके साथ साथ रोजगार की संभावना इसलिए बढ़ जाती हैं कि ये माध्यम बढ़ेंगे लोगों के लिए भी। ये जो पब्लिक रिलेशंस का जो काम है, भले बहुत सीधे सीधे पत्रकारिता नहीं है, लेकिन लोगों में जो भी सेलिब्रिटीज हैं, खिलाड़ी हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, लोगों को, संस्थाएं हैं, उन सबको अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को संचालित करने के लिए पेशेवर लोग चाहिए। इसलिए हमने अपने विश्वविद्यालय में इसके लिए पूरा कोर्स, मेरे ख्याल में सबसे पहले हमारे यहाँ शुरू हुआ सोशल मीडिया को, हमने बाकायदा पाठ्यक्रम बना करके और उसको पढ़ाना शुरू किया है। ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल मीडिया, बल्कि न्यू मीडिया का एक डिपार्टमेंट भी हम लोगों ने अपने यहाँ पे बनाया है। अंत में मैं जो बात जिस पे कहना चाहता हूँ कि मीडिया का ये विस्तार हुआ, इसका मैंने थोड़ा संक्षेप में आपके सामने बात रखी,
और ये विस्तार आगे बहुत जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा और इसमें बहुत रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, ये भी मैंने आपको कहा। लेकिन जिस चीज के ऊपर ध्यान देने की जो जरूरत है, जिसको मैं मानता हूं कि सबसे अधिक अभी भी गौर करना चाहिए, और आने वाले दौर में जब आप और ज्यादा इसका प्रसार हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, तब इन चीजों को समझने की और ज्यादा जरूरत होगी कि एक तो भाषा, नए नए माध्यमों के साथ में भाषा का पतन हुआ है, अवमूल्यन हुआ है। अगर आप हिंदी की बात जैसे करें या अंग्रेजी की बात करें या और भी भाषाओं में, जो व्यक्ति बोल रहा है, खड़ा है कैमरे के सामने, उस वक्त उसका संतुलन और संयम भाषा को लेके, शब्दों को लेके, शब्दों के चुनाव को लेकर के कितना रहता है, इसमें आपने पाया है कि बहुत एक तरह का विचलन आ रहा है, ढील आ जाती है। कुछ भी बोला जा रहा है, शब्दों का घालमेल भी हो रहा है, कई बार लापरवाही भी हो जाती है, क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जो मुंह से आपके निकल गया वो हवा में गया और लोगों तक पहुंच गया। तो ये जो भाषा है, इस भाषा की दीक्षा, उसकी शिक्षा, वो बहुत गहराई के साथ में होनी चाहिए कि अच्छी भाषा पत्रकार को या आप मीडिया कर्मी कहिए, वो किस तरीके से उपलब्ध हो, वो उसकी उपलब्धि एक महत्वपूर्ण उपादान होगी। भविष्य में इस बात का ख्याल कैसे रखा जाएगा, क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन कितने विश्वविद्यालय हैं जो अच्छी भाषा पढ़ाते हों, या ये कहते हों कि जो पत्रकार बन के जाएगा व्यक्ति या मीडिया के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षक ही बनने के लिए जाए या टेलीविजन की दुनिया में, ओटीटी की दुनिया में, अच्छी भाषा लेकर के जाए। अच्छी भाषा आपकी अभिव्यक्ति को मांझती है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। आप दूसरों तक पहुंचते हैं अच्छी भाषा के जरिए, ज्यादा संप्रेषणीय होके और ज्यादा प्रभावशाली होके। लेकिन दुर्भाग्य से अभी जो देखने में आता है कि विस्तार होता चला गया है मीडिया का, लेकिन भाषा का पतन हुआ है। जैसा मैंने कहा, बहुत खराब भाषा बोली जाती है, लोगों के पास में अच्छी शब्दावली नहीं है, उसकी वो कोशिश भी नहीं करते हैं। दूसरी जो चीज है वो है विवेक, कि आप अगर मीडिया में हैं, नए नए माध्यम आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन नए माध्यमों में आप किस तरह से क्या चीज समाज के सामने रख रहे हैं, परोस रहे हैं, इसमें विवेक चाहिए। जैसे मेरी दादी कहा करती थी कि बेटा अकल बाजार में नहीं मिलती है, अकल बाजार में नहीं मिलती है, आपको उसे अर्जित करना पड़ता है। एक समझ को, एक संवेदनशीलता को, एक विवेक को। आज अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या समझ, क्या दृष्टि हमारे पास में है? क्या हम सरकार के कहने पे उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह देंगे, या हम वहां जाके मौके पे कोशिश करेंगे कि हम समझें कि वो लोग सचमुच किस बात के लिए सड़कों पर हैं, या जो नए 3 कानून थे वो नए 3 कानून वास्तव में क्या कहते हैं। तो ये जो विवेक है ये बहुत जरूरी है। इस भारत जैसे देश में जिसमें इतना जातिवाद है, इतनी सांप्रदायिकता है, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और उसको संविधान में शुरुआत में ही हम लोग उसके आमुख में, प्रियम्बल में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल है। अब उसको आप धर्मनिरपेक्ष कहिए चाहे पंथ निरपेक्ष कहिए, लेकिन उस संविधान को चोट पहुंचाने वाले लोग समाज में व्याप्त हैं, और वो जब इतना समाज में चोट पहुंच रही है धर्मनिरपेक्षता को, तो मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया ऐसा है जो एक विवेक को जगाने में, विवेक को कायम रखने में, और समाज में एक सौहार्द और एक सर्वधर्म समभाव की जो कल्पना है संविधान की, उसको कायम रखने में, और जिसको गांधी जी बार बार जिस पे जोर देते थे कि आप अपना कोई भी धर्म है, आप उस धर्म में ही रहिए, लेकिन दूसरे धर्म की रक्षा कीजिए। इस किस्म की जो चीजें हैं जो भारत को खोखला कर रही हैं, उसको मजबूत करने में, हमारी जड़ें गहरी और जो है वो सचमुच सेकुलर बनाने में मीडिया क्या भूमिका अपना सकता है, इसके लिए विवेक चाहिए। इसलिए भाषा, विवेक, और तीसरा मैं कहूंगा सरोकार, कंसर्न। अगर आपका सामाजिक सरोकार नहीं है तो आप मीडिया में सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए हैं, फिर आप खबरों को भी मनोरंजन की चीज बना देंगे। उससे बचने की जरूरत है। मीडिया एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसलिए जिम्मेदारी का काम है कि वो समाज को बदलने का काम करता है, और समाज को बदलने में अगर भूमिका इतना बड़ा अगर आपके कंधों पर
एक जिम्मा है, मैं बोझ नहीं कहूंगा, वो जिम्मा है। इसका एहसास मीडिया कर्मी को होना चाहिए कि मैं मीडिया की दुनिया में क्यों आया हूं। ये सिर्फ रोजगार नहीं है, ये दूसरे किसी भी रोजगार से, टूथपेस्ट बेचने से, जूते बेचने से, ये अलग किस्म की चीज है। ये आप ज्ञान को बेच नहीं रहे हैं, आप एक समझ का साझा कर रहे हैं। वो जो समझ का साझा करना तब संभव है जब वो समझ पहले आपने खुद अर्जित की हो। सिर्फ कहीं पे डिग्री ले लेने से, भाषा सीख लेने से नहीं, भाषा के साथ में आपको समझ, एक विवेक भी अर्जित करना होगा। उसकी वजह से जो सरोकार पैदा होता है, वो सरोकार अगर हासिल होता है तो मेरा मानना है कि मीडिया के ये जो नए नए माध्यम, और मैंने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत माध्यम खुलते चले जाएंगे, लेकिन जो चीज खुलनी चाहिए वो है विवेक का खुलना, भाषा का खुलना, सरोकार का खुलना। वो बहुत संकट में आज के दौर में है, और आने वाले दौर में अगर सजग नहीं रहे तो उसमें और भी लापरवाही आ सकती है। और अगर आती है तो जितनी भी उपलब्धि हम माध्यमों में हासिल करते हैं वो हमारे हाथ से फिसल जाएगी, छीज जाएगी। क्योंकि रोजगार तो होंगे, लेकिन विवेक और भाषा और सरोकार के बगैर जो उपलब्धि समाज में मीडिया के जरिए समाज को हासिल होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। मैं एक बार फिर आभार मानता हूं कि आपने मुझको अपनी बात कहने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर, आपने ये 3 जो बातें बताई, भाषा, विवेक, सरोकार, ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। और ये जो आपने पूरा 10 मिनट के अंदर जो अपनी बात रखी, उसमें मुझे लगता है कि पूरी बुनियादी और फंडामेंटल बातें कवर हो गई है। देखिए ना, शब्द ब्रह्म भी है, उससे कुछ पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है, और शब्द जो है वो शस्त्र की तरह विनाश भी कर सकते हैं, किसी चीज को डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। सारा खेल शब्दों का है, और पूरे ब्रह्मांड में शब्द गूंज रहे हैं। और सर ने जो बातें की भाषा की, वो भाषा की शालीनता हमने इन दिनों खोते हुए देखा है मीडिया पे। और एक तरफ हमने वो मीडिया भी देखा है जो बहुत तरह से, बुरी तरह से दबा हुआ था। हर चीज में संतुलन चाहिए, हर चीज बैलेंस होगी तभी अच्छा है। अगर हम पूरी सतोगुनी हो जाते हैं तभी प्रॉब्लम है, और अगर हम पूरी तमोगुनी हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। तो देयर इज ए नीड टू बैलेंस। पर मुझे आपकी बातों से ये आभास लगता है कि देयर इज सम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो भाषा की शालीनता को, देश के कानून को, देश के संविधान को, देश की मानसिकता को लेते हुए कुछ स्टैंडर्ड तय करें, और उसी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए हम इस गुणवत्ता को, और जो क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी जो समझ है, उसको हम बढ़ा सकें। तो मैं सर से ये भी जानना चाहूँगा कि क्या हम कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसी संस्था तय कर सकते हैं जो ये तय कर सके कि भाषा की मर्यादा, संविधान की जो इंटेंशन है, उसे तो कहीं धूमिल नहीं कर रही है। दूसरी बात जो मैं सर ये शेयर करना चाहूँगा कि जो हम OTT प्लेटफॉर्म की बात की, इंटरनेट रेडियो की, इंटरनेट टीवी की, और आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या हम इसे दोनों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? क्या हम टीवी की भाषा और रेडियो की भाषा को अलग अलग रखते हैं, या एक ही माध्यम से हम इन दोनों को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं कि हम विजुअल भी दिखें और ऑडियो रेडियो में, इंटरनेट रेडियो के रूप में भी दिखे, या दोनों के लिए टेक्निकली अलग अलग होना चाहिए, ऐसा हम इसको समझे? देखिए, दो चीजें आपने कही। एक तो रेटिंग एजेंसी की बात है। मेरा मानना यह है कि ये जो व्यापारिक शब्दावली है उससे नहीं बात बनेगी, क्योंकि रेटिंग एजेंसी आप बनाएंगे तो उसको भी कौन लोग होंगे जो तय करेंगे। कि ये तय करना कि विवेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सरोकार आपके क्या हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। कौन उस रेटिंग एजेंसी को जो है, कौन उसको चलाता है, संचालित करता है, वो किसके कब्जे में है, तो उससे सारे के सारे नियम बदल जाते हैं। सारे के सारे फेल और पास करने के जो नंबर होंगे बदल जाएंगे कि किसने क्या किया। इस झमेले में मेरा मानना नहीं पड़ना चाहिए। होना ये चाहिए कि अच्छे शिक्षण संस्थान हो, उनके पास में अच्छा पाठ्यक्रम हो, अच्छी पाठ्य योजना उनके पास में हो, और वो अच्छे विवेकवान शिक्षक लेके आए जो अपने छात्रों को अच्छी समझ देने के लिए, अच्छी भाषा की दीक्षा देने के लिए, और सरोकारों की समझ पैदा करने के लिए। वो कोई एक राजनीतिक
विचारधारा के हिसाब से या किसी एक कहना चाहिए कि कोई बंधा बंधाया फार्मूला हो, उससे नहीं चल सकते। ये बहुत मुश्किल है कि लोग आते हैं अपने भीतर, मन में इतनी गांठें पहले से उनके पास में होती हैं, वो एक विचारधारा की गांठ लेकर के आते हैं और उसके हिसाब से चाहते हैं कि सबको ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तमाम विचारधाराओं की जानकारी दीजिए, तमाम तरह की जो धाराएं हैं उनकी शिक्षा दीजिए। उसके बाद में जो आपका छात्र है उसकी अपनी एक समझ बनेगी, विचारधाराओं के बारे में भी बनेगी, समाज के बारे में भी बनेगी। हो सकता है कि वो एक विचारधारा का पिछलग्गू हो जाए, हो सकता है दूसरी विचारधारा का पिछलग्गू हो जाए, उसकी आजादी है, लेकिन उसको असली समझ और दीक्षा ये दी जानी चाहिए कि वो अपनी विचारधारा को अपने मीडिया के कर्म में हावी नहीं होने देगा। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो सकते हैं, किसी भी जाति के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप समाज में जब चले जाते हैं तो हर वक्त जनेऊ को कान पे लपेट के नहीं घूमते रहते हैं। ये जो संकीर्ण और ओछे जो प्रतीक हैं कि कोई तिलक लगा रहा है, कोई टोपी अलग रंग की पहन रहा है और उससे आप एक पहचान बनाना चाहते हैं, मेरा मानना है कि पत्रकारिता में आने पर ये प्रतीकवाद खत्म हो जाना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत विचारधारा कुछ भी हो, इसकी आपको आजादी है, लेकिन आप समाज के सरोकार के लिए क्या कर रहे हैं तो इसको नापने का काम कोई एजेंसी नहीं कर सकती, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन शिक्षा कर सकती है, शिक्षण संस्थान कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने की, ये जो ओवर द टॉप मीडिया या ओटीटी आप कहिए, इस ओवर द टॉप मीडिया का जो भी चलन है, ये तो इसका विस्तार तो फैलता चला जाएगा, लेकिन इसके ओटीटी के मामले में भी आपको, चूंकि आने वाले वक्त में मैंने कहा कि और भी माध्यम आने वाले हैं, और भी माध्यम इसमें आएंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे ये रुक जाएगा मामला, लेकिन इसमें और चुनौतियां सामने खड़ी होती चली जाएंगी। मनोरंजन और सूचना, मनोरंजन और ज्ञान, उसके बीच की दूरी जो है वो बढ़नी चाहिए। ये बहुत बड़ी खाई है दोनों के बीच में, लेकिन दुर्भाग्य से वो दोनों चीजें ऐसी जगह ले आई जाती हैं व्यापारिक कारणों से ही, आप जानते हैं कि वो दोनों का भेद ही धुंधला हो जाता है और खबरें मनोरंजन की चीज बन जाती हैं। तो आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो दृष्टि है, वो दृष्टि उस दूरी को और ज्यादा बढ़ाने की होनी चाहिए, न कि उस दूरी को पाटने की होनी चाहिए। ये मेरा कहना। सर, जो अभी इन दिनों देख रहे हैं, हम न्यूज़पेपर भी देखते हैं, हम आए दिन टीवी भी देखते हैं, तो ये जो नेगेटिविटी है हमारी सोसाइटी की पहचान बन गई है। हर आदमी स्ट्रेस से गुजर रहा है और नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो एज ए सीनियर पर्सन आप इस चीज़ को एक लंबे समय से सब चीज़ें देख रहे हैं, तो इस नेगेटिविटी को किस तरह से हम कम कर सकते हैं? क्योंकि जापान में जब जाते हैं तो वहाँ मीडिया एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, उसका अपना इम्पैक्ट है। कोई वहाँ पे देखेंगे तो उस मीडिया का इतना इम्पैक्ट है, जैसे कि वो लोग जो है उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और वास्तव में वहाँ पे लोगों में कर्टसी, हम्बलनेस, ग्रेटफुलनेस, वो सब चीज़ें भी देखने में मिलती है। लेकिन हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो इतना सुबह टीवी ऑन करते ही क्राइम्स की, मर्डर्स की, इस तरह की खबरें हमको मेनली दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि शायद हमारा देश का यही चरित्र है, शायद यही चेहरा है, और इसका इम्पैक्ट हमारे पूरे वर्ल्ड पे बहुत नेगेटिव जाता है, जबकि ये सब चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी और सभी जगह इस तरह की घटनाएं होती है। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो आपके पास कोई आइडिया जिससे हम पॉजिटिव न्यूज़ को बढ़ा सके, पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर सके, सोसाइटी को बेहतर बना सके? इसके लिए जो है आपकी जो दृष्टि है, आपकी समझ, मैंने कहा कि एक मांझना शब्द मैंने इस्तेमाल किया कि जैसे हम बर्तन को मांझते हैं, ये धीमे धीमे उसका जो परिष्कार है, अपने विवेक का, बुद्धि का परिष्कार भी होता है। वो कैसे होता है? वो पढ़ने से होता है, ज्ञान के अर्जन से होता है। आप दुराग्रह लेकर के ही अगर चलते हैं समाज में तो आपको बहुत हासिल नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक लिबरल, खुला दिमाग लेकर के चलते हैं तो आपका दायरा बढ़ता है और आप एक खुली दृष्टि लेके मीडिया में आते हैं। अगर आप मीडिया में आते हैं तो उसी खुली दृष्टि का भी आप प्रसार भी करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हम लोग आगे बढ़ने की बजाय कई मामलों में तो उल्टे चल रहे हैं, बजाय देश आगे जाने के लगता है पीछे जा रहा है।
अरे कोई कुछ समय पहले तक इसकी बात नहीं करता था किसने किससे शादी की है। ठीक है, अभी भी समाज में लोग जातिवाद जैसा मैंने कहा कि है, तो लोग अपनी जाति में विवाह करने की सोचते हैं, तो ठीक है, उनकी आजादी है, आप इसमें किसी को दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन संविधान के हिसाब से कोई किसी से भी विवाह कर सकता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अगर कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में करता है, और वो भी खास एक धर्म से दूसरे धर्म, उधर से इधर नहीं, तो आप कहते हैं ये तो लव जिहाद है, ये जेल में डाल दिया लोगों को। तो ये जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, उन चीजों के प्रति जागरूक करने का काम कौन कर रहा है? मीडिया उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है या आग पे पानी डालने का काम कर रहा है? वो दोनों काम कर सकता है। अगर करता है पानी डालने का काम, तो लोगों में विवेक जागृत किया जा सकता है कि इसमें क्या बुराई की बात है, ये तो किसी का अधिकार है। और सच्चाई तो ये है, ये जो राजनीति के जो भी लोग हैं, आप अगर सूची बना के देखें तो जो इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उनके घर में तो पहले से ही इसी किस्म की शादियां हुई हैं। लेकिन उनको अब अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इन चीजों को जो है अपराध की तरह पेश करना पड़ रहा है। एक जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा जो है वो संविधान विरोधी काम समाज में होने लग गया है। ये नहीं है, ये सब राजनीति है, और उस राजनीति को उजागर करने का काम मीडिया का है। मीडिया खाली सूचना देने का काम नहीं करता। मैंने पहले एक बात कही थी कि मीडिया समझ का साझा करता है। उस समझ का, विवेक का जो साझा है, जो संचार है, कि वो समझ लोगों तक पहुंचे कि देखिए ये लोग संविधान विरोधी काम कर रहे हैं अगर दो वयस्क लोगों को अपनी मर्जी से शादी नहीं करने देते हैं। ये विवेक जो है, ये लोगों में, कम से कम पत्रकार में, क्योंकि वो दूसरों से थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी का काम लेकर के इस दुनिया में आया है, तो इसलिए उसमें वो समझ चाहिए। वो समझ खुद अगर उसकी परिपक्व नहीं है, और वो खुद सांप्रदायिकता से, ओछेपन से, जातिवाद से, या राजनीतिक दुराग्रहों से, या विचारधाराओं की संकीर्णताओं से झगड़ा हुआ है, तो वो आगे जाकर के भी वही काम करेगा। तो इसलिए फिर वो आग में पानी डालने की बजाय आग में घी डालने का काम करेगा। ये दो चीजों का फर्क समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही सर। जाते जाते मैं एक बात जो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हमारा संविधान जो है वो सर्वमान्य है और वो आज की भाषा है। हमारा कोई भी मजहब रहा होगा 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, पर आज जो करंट भाषा है वो यूनिवर्सल सिविल कोड, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा अपना संविधान है, उसकी मर्यादा है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम कोई किसी कल्पना करें किसी एथिकल एजेंसीज की, तो वो इस बैरोमीटर को लगाए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जैसे एक बोलने की स्वतंत्रता है, तो दूसरे धर्म की इज्जत करने की भी हमारी ड्यूटी बनती है। अगर ये दोनों को तालमेल बनाकर इस पैरामीटर पर अगर हम इन सबको कसें, तो मुझे लगता है कि फिर हम सही डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि हम सब लोग मिलकर ही एक हैं और पूरी कायनात एक ही है। पर हम सब जब अलग अलग बढ़ते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, तो ये दुनिया विकराल और थोड़ी अजीब सी दिखाई देती है। सो अगर कुछ इस तरह से हो कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी ट्रिब्यूनल बने जो इस बात पे देखें कि कोई ऐसी भाषा, कोई ऐसी बातें तो नहीं हो रही जिससे द्वेष पैदा होता है समाज के अंदर, जिसमें लोगों के अधिकारों का हनन होता है, जिससे जिससे कोई छोटी या अल्पमत वाले लोग दबते हैं, तो ऐसी चीज़ों को रोका जाना चाहिए। अदरवाइज ये जो मीडिया जो ताकत है, ये हमारे लिए चुनौती और अभिशाप भी बन सकता है। हमारे पास बहुत सारे हमारे को साधन मिले हैं, पर बहुत सारी हमारे को मुसीबतें भी आ सकती है। सो आपने सर जो विवेक और संपादकीय की बातें कही, वो वास्तव में बहुत ही मार्गदर्शक रही और आपका सेशन सबके लिए उपयोगी रहा। मैं रत्तू सर को नहीं सुन पाया, पर वो इतने अनुभवी लोगों का हम बच्चों के बीच में आना और अपना अनुभव साझा करना वास्तव में हमारे लिए उपयोगी रहा है। मैं आपको तहे दिल शुक्रिया देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. From the depth of our hearts, we thank our chief guest of the day, Sri Om Thanvi ji, for all the words of wisdom that radiated a source of energy within us. With this, I request all the dignitaries and speakers to switch on their camera so that we can have a memory with our chief guest of the day. Let's get ready for a photograph. Everyone, please switch on your camera. All the speakers, all the dignitaries. Thank you. Thank you. Now, with immense pleasure, I would like to invite our next speaker, Ms. Shobha Gupta. Ms. Shobha Gupta is a senior advocate in Supreme Court of India.
She is founder of FLAG, which stands for Free Legal Aid Group, for imparting free legal aid to juveniles who are detained on being found on a wrong side of law. She is founder of We the Women of India. This was founded by her to address the unequal and not so respectful treatment of women in all walks of life, be it at home or at workplace, including the education centers, to create much more informed, equal, and harmonious world around. At present, Ms. Gupta is a panel lawyer of National Human Rights Commission for more than 16 years and other government, semi-government and private organizations too, such as Educational Consultants India Limited, Rajasthan Rajya Vidyut Prasan Nigam Limited, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, official liquidator attached to Rajasthan High Court, various associations of private schools all over India and many more. Ms. Shobha Gupta's topic for today's talk is rediscovering career passion, training and job opportunities in law and legal education. Please welcome Ms. Shobha Gupta. Good morning to all. It's afternoon now, so I was supposed to speak at 11:30. So good morning to all and good afternoon to all. Thank you, Biani College, for inviting me and having me and giving me an opportunity to speak to all of you. I was hearing Thanviji, and the subject was very dear to me as well when he was talking about the role to be played by media. But now coming back to my topic, which I need to tell to all of you. See, we all are going through a time which we had never thought of, it would ever come to us. It has never been scheduled. We have never planned our lives like this, that a sabbatical would come, and a sabbatical which we do not know when it is going to end. A sabbatical of the nature which would be prevailing world over, worldwide sabbatical. If, we were told before 24th of March 2020 that something of this nature can happen in our lives, that the whole world can come to a stall, can come to a standstill, and suddenly everything would be closed. Can you imagine? Your picture halls are closed, your colleges are closed, schools are closed, courts are closed, offices are closed, and that is not happening, in a town, in a city, in a state, in a nation, world over. And so to begin with, to come to terms to this aspect that things can come to this way. Things can come to a stall because of a virus we cannot even see by our bare eyes. We do not know how does it looks like. But that miniature small creature has stopped all of us and created a fear. So much of fear. We all know if we are going on roads, we might, meet with an accident, and, some harm can be caused. But we still do go out, still drive our cars, we still, travel. So it's not as if because of a fear and apprehension of damage to be caused, we stop running our life the way we have to in a routine manner. But this has stopped us, the whole humankind. Animals were spared, they were all free. And when this happened, I was just thinking, had somebody told you before 24th of March 2020 that, there would be a time when we all would be sitting at home, four bounds of our offices. We would be interacting through media, like this medium, for all possible manners. So chit chat, meeting your friends, having your parties done, sending your invitations through virtual meetings, board meetings, the meetings with the clients. Then, so much so that going on, courses are being completed.
So everything, when this lockdown started, we thought we are going to, have a, pause for 15 days, maybe 30 days, maybe 45 days, and then everything would be normal, back to normal, the way we were before. We never thought of that, it would never be the before, never be the same as it was before 24th of March. We never knew that it's a complete new world, new system we are going to deal with and to live with. And this is what we call as new normal, a new world, a new mannerism to interact with the world. And that is our new normal, not wearing the mask alone. So mask, sanitization are two things, but to interact, like right now what we are doing. I am sitting here, had Biani, spoken to me and asked me, would you be able to come on 19th? I would have said sorry, because 18th is my last working day in Supreme Court. It would be not possible to just rush like this. Somebody sitting, Mr. Manish is sitting in Japan, I believe right now. He is interacting with you from there. Everybody, at different corners. Most of us are sitting in our offices, like I'm sitting in my office. You people are sitting in your comfort. You have been spared with that efforts of bouquets and, so many of the formalities, because all that we are doing virtual. But what amazes me is what an amenity the God has created in the shape of mankind. We are so adaptable. Like, we have to be put to a trouble, to a situation, and we adapt things so fast. Like, I know when this lockdown happened, for a while, for a 2 or 3 days, 4 days, we were like, okay, abhi kuch nahi karna hai. Then suddenly things started working for us, and we started, talking more and more. Within a week's time, Supreme Court started, dealing with very urgent matters through video conferencing. And then a whole system was put in place that now the courts can function. Initially, there were 2, 3, 4 matters which were listing in a week. And we, the lawyers, I put myself to social services. I was arranging ration for people, and dry ration, cooked food, all over the Delhi, across, crossing Delhi. So I had no time to do any of the court matters. A few of the senior colleagues told me, Shobha, you must take an experience. You never know. The normal courts would start and you would miss this experience. So at least for an experience sake, do one matter. I said, I have no time. I would not be doing anything, because right now I don't want to take out a single second from my social service aspect. And this court things can continue for your life. So I don't mind missing this experience. I never knew that I would not be left with any choice. Like, it's not my choice to have that experience or not. We were supposed to get into it, because by the time June passed by and we realized, oh my God, it is going to last a little longer. And by the time court had the realization that we have to really function our court in a regular manner through video conferencing. Now, I would tell you, lawyer, for me, this whole thing, like now it's been 9 months. I'm doing all my matters, day in, day out, we are doing matters. But it is, even till date, a little bit, enchanting for me. Like, it's very, very an experience which I can't give you in words. It gives me an immense pleasure going through this experience. If you people, like few of those are sitting over there, are upcoming lawyers, you would not be knowing the actual system we are in. We have a very, very, formal system of working. So judges and lawyers have a huge distance between them. The whole process of filing a matter takes a toll on a lawyer's office. So it's always a kind of, war we get into when a client comes, getting his papers, meeting him, preparing the documents for Supreme Court. You have to translate every single piece of paper into English. So everything, then things reworked, retyped, put in the course, then defects put in by a registry. It takes, your whole office has to really put in their efforts to get the matter numbered, then to be listed,
and then argue. Then you go, you stand in the, you don't get the chance to sit and argue. You stand before the court on the dais, then you are arguing, court is listening to you. So there's a culture we follow, a culture which has a distance inbuilt in it, which has, a kind of, judges are sitting on the upper side, you are, standing here, you are standing, they are sitting, and so much of the, discipline involved into it, mannerism involved into it. We used to keep talking that, we have to someday improve our judicial system to come to terms where we are having a Golmage Sammelan, a table, big table where the judges are sitting, the lawyers are sitting, even the clients are sitting, and just go talk, because this is a constructive process. To a judge, I go as a lawyer to represent my client's case, to tell them, see, this is wrong which has been done to my client, and I am coming to you because you have been given a constitutional power to take a call who has done what wrong, and if I have been wrong, what compensation to be given, and how this has to be corrected. But in all the process, which has to be a constructive and a reformative thing, and result orienting, solution orienting process, there was a huge distance created, a distance of system. So a lawyer, the client is not supposed to speak in front of the judges. He is not supposed to stand in the same queue where the lawyers are standing. He would be having a separate portion in the courtroom, completely at the end, where he can barely hear out the judges, what judges are saying, what the lawyer is saying, what is the interaction going on. So most of the time when we come, the client would be asking us, ma'am, hua kya hai? What were the judges saying? We couldn't hear out. So that is his case or her case, but that person has been kept, completely at the sideline. What has happened now? Suddenly things have changed. How suddenly things have changed? Now my client can tell me in the evening, late in the evening, that there is a matter which has urgently to be filed. I'll ask him, okay, push the papers fast, mail me. The client would be mailing me the papers. Maybe overnight, maybe next day, we would be preparing it without any barrier of time limit. Otherwise, for court hours and when we were doing it physically, you can file something between 10 to 5. Here, I can file any document maybe at 8:30, maybe at 9:30. So there is no time limit. I can push my documents anytime. So I would be pushing it. Now, another best part which has taken place is, earlier, it used to again be a hassle dealing with the registry. Though I always say our Supreme Court registry is the best registry in country. They are the most amiable people, most cooperative people in the registries. But still, it would always take, a lot of hassle. Like the person has gone for lunch. He or she decides to come not within an hour, but maybe an hour and a half later. Now, in court hours, you don't have that much of time to keep waiting for somebody extra half an hour. So you might have to come back. You have to cover all that distance walking. Now we have extension blocks. So the registry has gone miles away. So even we have to depute 2 different clerks for 2 different buildings, because the clerks cannot, do the shifting or shunting between 2 blocks. Otherwise, you would miss the day. And if you miss the day, the client would miss the date. So lot of the, paraphernalia arrangement we used to do before. And it would be like 3 days kind of thing when a small thing can take place, despite our best efforts. Now, people are call away. Fortunately, Supreme Court has, and I do not know about other courts because I do function here. Supreme Court has, upgraded itself beyond imagination, beyond our normal expectation for any government office to come up. It's not a government office, but otherwise for normal people, it's like for all people, it's generally it's a government office. They have, leveled up themselves beyond our expectations. So we have been provided contact numbers, mobile numbers of all the functionaries in the registry. They are all a call away. Sometimes, the phone may not be picked up. That's normal for anyone, because if you are busy here and there, you're attending 10 people, you might miss one call. But then they are very, very responsive. They would give you a call back.
they would be, it's not as if the attitude of government offices, your calls are not welcomed. Your calls are very welcomed. You are given now attention, on one-to-one basis. And how may I help you kind of attitude. Then the matters are getting registered very fast. It is easy for me nowadays in Supreme Court to get filed it today, possibly get it numbered today itself, without rushing from building to building, without rushing from offices to offices, rooms to rooms. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am, you're I thought audible. there was some disturbance. And then from there, I can, again make a request by way of a mentioning letter. Earlier, it used to be a big hassle even to get the mentioning done, because we used to mention before the court, and chief court mentioning has to happen at 10:30 in the morning. So assume your matter has been numbered by 2:30 today, but you missed the bus because now 10:30 had gone by of the day. So you would be waiting for the next 10:30. And when you are mentioning at 10:30, the court might say, okay, maybe tomorrow, maybe day after. So it's like gap of 2-3 days. But nowadays, I can put the mentioning letter then and there. The registry would discuss with the chief, and maybe your matter, because of the mentioning letter, may come up tomorrow morning itself. So things have not only fastened up, been very easy. And as a lawyer, I can tell you, I'm enjoying this comfort. I'm enjoying this comfort running my whole show, sitting in comforts of my office. My whole staff is sitting in office. They need not to rush here and there. We are doing services, like we have to serve the other party, the other lawyers. And, we have to go to their office. Like my staff would have to go to their office. We would be wasting money in traveling as well. The time. So if I have to serve two matters, my one clerk would be off for the whole day. He would say, ma'am, मेरे को आज डेफ कॉल जाना है, डेफ कॉल के बाद नोएडा जाऊंगा. So his whole day would be consumed. And if I talk in terms of money, then his salary of a day would be consumed in only 2 services. But now it is far more reproductive, because he's sitting here, he has to just push a mail. And the other side would be taking a printouts. Similarly, we are taking printouts, whatever services are being done to us through mails. So everything is done in nanosecond without wasting that time. And at the same time, your boys are doing some other work, some other matters. Now, all that is helping in what? Everybody is hassle-free. You are not eating pollution. You are not inhaling pollution. You are saved by air pollution as well as noise pollution. You are saved by, so much of the hassle of traveling. As a woman, I can tell you, not me, like I travel in my own car, but otherwise we have all people, who are taking public conveyances. They are safe because, it is always a hassle people and traveling, distances. Everybody is in comfort. Have your tea, continue to do your work, and, at the same time attending things. So you are spending 1/10 of the actual time, which we used to in all our activities. Most of the time is now going into reading of the things, research. We are not wasting time in eating samosas and, chit-chatting with the friends, because the moment you are in court, even if you have to do 2 matters, you have to wait for the whole day there. When you're meeting so many people, you are actually standing in the corridor, chit-chatting, going there, meeting with this people, that people, and we end up wasting whole of the day. Even if we don't want, simple hellos and how are you takes your time. We are saved with all of that. Best part apart, like all these are so good parts. Now, in whole of it, when my matter gets listed, and I tell you, that's the most dear part for me as a lawyer. I can write a book on this experience later once the COVID period is over. I enjoy the fact that the judge comes down to my office to hear me out. And this is the feeling I always get when, the moment the judge is on the screen, I am sitting on my chair, I can order tea anytime, though we always try not to have tea on a screen when the judges are there and we are in the courtroom through virtual. But the luxury of the fact that I am at the comforts of my office, I am sitting on my chair, I'm not standing in front of the judge, right? And the judge is also sitting in his office sometimes, or attending courts. So they are coming to the courtrooms. But the attitude is, I feel the judge is in my office. So I be very courteous than before.
because you would be courteous to your guest. And at the same time, the judge is very courteous, because judges get the feeling, I believe, like likewise mine, ki, okay, the lawyer has come to my office, my cabin, and I should be courteous to him or her. So the whole atmosphere has gone changed. Like, we all are more courteous to each other. We are more polite to each other. We are smiling a lot. And this congeniality in the atmosphere, that, judges are not shouting. I'm sorry if some judges listening somewhere, like, it's like that's the normal practice that one can, shout even. But here, normally the judges are, no, Miss Shobha, listen, that kind of attitude, the whole atmosphere has gone for a change, which we were used to really, yearning for. You would be wanting that atmosphere of congeniality. You would be wanting for that kind of, everybody is looking forward to solve the situation in a good way possible. So I am loving that atmosphere where everybody is more polite, more peaceful, and for the fact that we all are, are much more comfortable than we were before. We are surely missing the fact that, we are not meeting physically, because physical meeting, when you face somebody face or one to one, it's hell of the difference. And I'm more than sure once we are allowed to go out and things are normal, we would be loving that. But even this is very enjoyable. And the fact that we have not stopped. Can you imagine, India is 135 crores population. You have so many courts, so many states, and so many high courts are going on, and every single district court, high court, Supreme Court is functioning like this. We could think of developing the system, and you would be amazed to see what happens, when the days started and system was not so okay. And none of us were very, very comfortable and, very accustomed to all of it, to the new change. We are improving our offices as well. We are upgrading our offices for this new normal now. So a lawyer would be sitting in a car, or a lawyer might be traveling from one place to another place, and he would, decide to do the hearing from the car only and would not disturb his schedule. So it's not as if, earlier it used to be, oh, up to court jana hai. So you would not do anything, because till you back from the court, you can't do anything else. But here now you can continue to do with your other works. You can actually attend your son's or daughter's class in the home, and at the same time you can attend your court matters also. Amazing part is, I am sitting in Delhi, but at the same time I can attend a court in Mumbai, I can attend I can attend a court in Supreme Court, I can attend a court in Rajasthan, sitting in the same place. So my earning capacity goes up without having the hassle. The client's part, which I, also relish the most, they are sitting now, at the parallel level. So either in your office or their own office, you share the link with them. So at least they can hear what is going on, how good their lawyer performed, and how was the reaction of the court. And they are seeing all that at the parallel level. It's not as if, they are placed at the last rung of the room. So for clients also, this is very, very satisfactory. And I believe even that is improving us as a lawyer to perform much better. Because now we know it's not as if we can come back and tell our clients, see, ye to judge ne samjha nahi, like I said this and other things. Now I know he is watching even my facial expressions. He is even watching me if I am getting, a little tizzy about the query made by the judge, or if I'm not ready with the question judge posed to me. So the client can tell me on my face, ma'am, you were not prepared. I believe you didn't have the answer for that particular query. So now as a lawyer, if we are responsible enough, we know that, the client is sitting next to us through a virtual meeting and he is watching us. So if I am not someone who is easy and, ready with the excuses and would love to give excuses, I would like to improve myself. I may fail in one hearing, but then I must not fail in another hearing. That kind of improvement. So I think like a whole lot has gone for good. We could have never imagined, to a most progressive judge, if this suggestion would have, see, it is not as if any of the new technology has come.
these Zoom meetings, Google meetings, video conferencing, video calls, everything was available before. It is not as if anything new has been invented after COVID, but we never thought of using it. If your children are abroad, you would be having a video conferencing, Zoom conferencing, Skype, all of that with them, but not for meetings. At least not in India, we were accustomed of this thing. We were not using it professionally. Now, can you believe, like, if I have to do a matter as a senior counsel and my briefing counsel has to brief me, I would be giving him an appointment. Now, he might be traveling an hour to come and brief me for half an hour. And then going back, traveling that 1 hour. And sometimes, if there is a traffic, like Delhi suffers a lot of traffic jams. So then in that case, he would be getting another half a lot and a whole schedule can go, for a toss. But now we are having 2 hours, 3 hours long conferences between us through video conferencing, and that's very productive. Like, you feel like as if you have not met the person, except the fact which I always miss, that offering tea and biscuits or samosas, like, when somebody is coming and you are having meeting and you just can't offer the cup of coffee. That's something I always still miss. I feel bad when I am having coffee and I'm just telling on virtual that, sorry, I can't offer you. I just simply don't like that. But work part is not suffering. In fact, when you get over with that meeting, maybe like I had done a 2.5 hour long meeting, the volumes were, in bulks. And we could finish every single page by virtual, and we were so self-sufficient. Next day, we actually rocked. We had a good order because these meetings are going very good. Everything is going amazingly good. It amazes me, like, why did we not think of it before COVID? And why a COVID was needed for all of us to realize that we have already like systems in function, the technology in function, which we can use. And believe you me, we are very, very tough in adaptations when it comes to things are not falling upon us. We are very good at adapting when it falls upon us. So if somebody told us before COVID, why not do it through Zoom? I personally would have said, forget it. Why don't you just come over and have a meeting with me physically? Like, what is this? And now I know, even if this COVID is over, I personally would be preferring it. Similarly, if the judges were told, the Chief Justice of India would have told that why not start the courts virtual, he would have thrown this idea out of the window like anything. But now I'm sure everybody would be, looking forward for it. Can we have a alternative? Can we have an optional system of court hearings through virtual? And I can tell you, more than 60% lawyers would be preferring it. If you people are following court proceedings, lawyers sitting in London are doing the court proceedings, virtually attending all possible courts in India. They would not have been able to, but they are. So for me as a lawyer, I tell you, this legal profession has been benefited a lot when it comes to adapting and improving for good, performing well in a tough situation. And actually giving an example for all possible purposes that, when it comes to you, you can adapt things in a good way, perform well. And, out of all odds, you can still show that, throw the light of good to everybody. Students part, I have to sense up to cover, and my topic covers that also. So I'll tell you, students, I was just talking to my intern, she is in my office and she's a student too. So I was just wondering how that has helped her. And she was telling me that, classes, what you are doing is something you are having now, recording of everything. So your lectures are virtually with you, the complete lectures you have, the recording. So even if you have missed something, you can revisit the lecture, the recording, and you have all notes, audio-visual notes available with you. Depending on how other colleges are performing, but as far as her college is concerned, she can vouch for that. I believe most of them are doing this way only. So she has the lectures ready, audio-visual, which we could not have before. If I missed the class, I missed the class. If I was attending a class, not attentive, I missed the portion of it, then I missed it. Similarly, the notes which are being exchanged are now ready with you.
So you have not only in print, like typed format, but audiovisual notes available with you. Your time is saved again here. Also traveling time is saved. Your having to really rush to college, be there in time is saved, because you can just wake up 15 minutes before and attend your class. That's your choice, you take bath or not, but you can attend the class within 15 minutes after getting up. So that is good part. What I feel is you people must be missing, or like if some of you are law students, I believe the big loss is of internship loss, because I can tell you, like, I have got so many applications, so many, like innumerable, from so many colleges. I couldn't say yes to even single of it, because I was not sure how would you do it. For an intern to tell, only research is not internship. And through virtual, I can just say, okay, you do research on this aspect. Because of this, all things we are doing, meetings, court hearings, everything we are doing through virtual, we are spending a lot of time on computer. And, our vocal cord is really tired by the end of the day, and that's the disadvantage. So I was not in a position to, put myself into the trouble of attending my interns also through virtual. So I, unfortunately, my office could not say yes for internship. So I believe that is one loss the students suffer, that internship thing, if most of the offices have behaved like me. To assume for a moment an intern has been allowed to go for internship through virtual, I'm more than sure a discipline is something which you are supposed to learn as an intern when you attend the office. Even we, when we passed out as a law students, as a fresh year lawyers, what we had to learn is the discipline of an office. And what is discipline? Is, going office in time, leaving office after finishing your work, being attentive in the office, not chit chatting, not spending your time in other things while you are in office. Now, this is a whole culture with which you have to imbibe to be a good professional. Unless you have imbibed that culture, you might be very brilliant, you might be very good at your research work, but that part would always be lacking. That culture of discipline to attend your office by giving your 100% minus anything else. Minus means minus WhatsApp, minus Facebook, minus any social networking, social sites when you are in office. So if your boss is a little tough one, he or she can bring that culture in you to give preference to your work, to give preference to the work given to you in your internship also, and not to, just do it along with other things, other activities, not take it lightly. So I believe even if you are allowed an internship, that part is something which you would miss, that culture to learn, to imbibe in yourself. And this growth of culture, when you do one internship after another internship in your 10 semester, if you have 5 years course, that growth is something which is unmatchable. And which I personally feel is something, we have not been able to deal with when it comes to the virtual world of ours, this new normal, which are asking us to deal with virtual things. But, again, maybe I'm lacking with that, because, we have to learn with that. If people have to henceforth work through home, then what culture I'm talking then? Possibly then I need to change myself, because then they would be doing it from home. God knows how would they cope it up. Like that is something, a question mark to me. I have no answer for that aspect. But rest is enjoyable. There is always a plus and minus of everything. Plus, as I told you, minus is this meeting, that charm, that warmth of one-to-one meeting is missing. Like, assume if I am today at Jaipur in Biani Girls College, I know how warm you people are. I've been there before. And you're hosting. I would have loved to enjoy that. Being there, attending those nice, gestures. And so that we miss.
that we surely miss. But the rest of it is so good. Thank you. I'm done. Miss Monica, like you can carry on. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. On a very short request, आपने इन सारी चीज़ों को हमारी एक्सेप्ट किया और इतनी ब्यूटीफुली, इतनी अच्छी तरह से आपने कोविड द न्यू नॉर्मल के ऊपर जिस तरह से बताया है, यस, जिन चीज़ों को हम पहले सोच नहीं सकते थे, हम इमेजिन भी नहीं कर रहे थे, हम उन चीज़ों के साथ आज जी रहे हैं एंड द हैप्पीएस्ट थिंग इज बहुत खुश होकर जी रहे हैं. सो थैंक यू सो मच मैम. मेरा एक क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये रहेगा कि आपने बुक के बारे में जिक्र किया है, तो प्लीज मैम थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज द पर्पस, किस टॉपिक के ऊपर किस तरह से आप उस बुक को रेडी कर रहे हैं मैम? नहीं, कर नहीं रही हूँ अभी जी. I'm saying if I would love to write a book on this experience of how we the lawyers have so enjoyably, so progressively, so positively dealt with the situation and come up as a victorious one. जी. तो मैम हम जरूर इस बात का इंतजार करेंगे कि जब भी आपकी वो बुक आप लिखेंगे एंड कंप्लीट करेंगे, देन यू विल शेयर विद बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस. ओके. और मैम एक बात और कि हम इस अपॉर्चुनिटी को भी कभी नहीं खोना चाहेंगे कि हम नेक्स्ट बाइकन जब रखें या नेक्स्ट कोई भी ऐसा इवेंट रखें जिसमें हम आपकी प्रेजेंस हमारे ऑडिटोरियम में जरूर चाहेंगे. एंड दिस इज द प्रॉमिस कि आपको उस वक्त इन सारी सिचुएशंस के बाद जब द न्यू नॉर्मल पे हम बढ़ जाएंगे तब आपको यहाँ पर आकर अपनी प्रेजेंस देनी है मैम. I would love to be. And Monica, just give me 2 seconds or 2 minutes to just say one thing. In my introduction, you informed that I have initiated a forum in the name of We the Women of India. Flag has done before, but We the Women of India is right now going on. And since this is girls' college, I would be requesting all of you to visit the links of We the Women of India, and I'll share with Monica ji. Definitely. And she must share with you all. And I would really request, I'm using this platform to tell all of you, to request all of you to understand the fact that how important it is for the women. Yes, ma'am. Be it working women or women at home, to enjoy the existential value, to enjoy the fact that I have an equal world to live. I enjoy the respect which is equal. It is not as if somebody would give me in gift or somebody would give me in mercy a respect or a space of their choice. Yes, ma'am. So start behaving good, start learning to respect women, and women, a call to all of you to please ensure that you are being conducted well by others. And for that, you must ensure that you are conducting well yourself and you are not letting anybody to deal with you not equally or unequally, right? Start working on it. Start claiming your equal space. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. We would love to join the We the Women of India. और बियानी गर्ल्स ऑफ कॉलेजेस से बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म इस बात को शेयर करने के लिए और क्या होगा. सो मैम पर्सनली अ बिग थैंक्स टू यू फ्रॉम मोनिका पालीवाल ऑल्सो कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए हमारे बाइकन में अपनी प्रेजेंस दी है. सो वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वेरी इंप्रेसिव, very interactive and beautiful session, ma'am. Thank you so much. Thank you, Monica. Thank you. Thank you, Monica, ma'am. Thank you, Shobha, ma'am. Truly, you are a role model to many of the women and to the aspiring lawyers. I request that we click a photograph for a memory with Shobha, ma'am. Everyone, please switch on your camera so we can have a memory with Ms. Shobha Gupta. Monica, ma'am, please switch on your camera. Yes, let's have a memory with Ms. Shobha Gupta. Thank you. We are done. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now, the moment has come to add a golden feather in the hat of success. We are going to invite selected young researchers for the oral presentation. You will be getting 5 minutes each to showcase your presentation, your research, and your discoveries.
So please make sure that you take care of the time. Before starting, I feel honored to introduce our judges of this session. We have Ms. Malti Saxena, who is the day convener of Social Science Department and head of Social Science Department, Biani Girls College. And we have Dr. Rihana Khan, who is the day convener of Law Department and is head of Law Department, Biani Law College. So now let's start with the oral presentation. Our first presenter is Miss Neha Sharma. Can we have Miss Neha? Yeah. Yes, Okay. Neha. Namaskar, everyone. Hello. Namaskar, everyone. I Yes, am Neha, Neha you can Sharma. continue. I am Neha Sharma, research scholar from Banasthali Vidyapith. Neha, yeah, okay, fine. Your presentation is visible. Thank you. Okay. I hope you all are well and good in this pandemic situation. So, without wasting time, I just come to my topic. My topic is status of CSA in India and world, the objectives and the need of legal education in the context of good and bad touch. If we talk about the topic, we have the two key points here. The first is legal education. Obviously, legal education is the direct meaning of the education of law and the knowledge of law. Then the other key point is good and bad touch. So I talk about the good touch. It takes the touch very we can say that very pleasing touch, and we talk about the bad touch. It is about CSA. CSA means child sexual abuse. Child sexual abuse is one of the most sensitive topic of this time. So, if we talk about the CSA, the most serious problem is, in all over world, UNICEF claims that every year, about 1 million children become victims of sexual abuse globally. It is estimated that 1 out of 2 children aged 2 to 17 years experiences some form of violence each other. If we talk about the situation in India, we can situation in India later. Then we can see the status of CSA in the world. You can see the data here, the identified victims recorded in 2019, identified victims here, identified offenders here, and the countries that are connected to the database. These are taken from the International Child Sexual Exploitation ICSE database. So next, if we talk about the situation in India, you can see here NCERB, according to the National Crime Record Bureau data, 32,608 cases were reported in 2018, while 39,827 cases were reported in 2019 under the protection of children from sexual abuse. So we talk about the sexual abuse situation in India or in the world. If we talk about the law in the world, you can see in your screen that there are so many laws. Like under Article 34 of the convention, every child has the right to be formed from sexual abuse. And if we talk about the law in India, so we have the POXO Act. The full form of the POXO Act is Protection of Children Against Sexual Offences Act. It passed in 2012. It is gender neutral and provides for the protection of minors during the judicial process. So, we talked about child sexual abuse, like good touch and bad touch. We talked about the law related to CSA, whether it is from world or India. Now, if we focus on the topic, main objectives of legal education in India as well as in the world. So we can see here, knowing the signs, how to identify child maltreatment. Actually, because law actually explain the real definition of maltreatment, so anyone who knows the law can define or identify the signs of maltreatment with children. The next one is to get the offender punished appropriately. Yeah, actually law protect our rights, so we can punish the offender. Next, to increase knowledge and skills regarding law, to get the information about the rights against child sexual abuse, to create a fear-free environment for children.
Now we can see the need of legal education. That what are the needs of legal education related to child sexual abuse or bad touch? So first we can see for awareness of crimes related to good and bad touch. It is very needful. Actually, it is very needful for today's time. Also very important that all children, their parents, teachers and other people should be aware of the laws, because these kind of crimes in the present are increasing. It is needful and also very important that all children and their parents, teacher are aware of the law, that they can protect themselves and their children and their students from CSA, and also they can explain to the children that how should they react to the situation or good touch or bad touch. So for the protection of children, it is very needful. Next, if we conclude it, we can say that CSA or good and bad touch is not a new problem for the world. These crimes occur equally in India as well as abroad. Such crimes with children increases with individuals are not aware of the laws and they suppress the incident on spot. Okay, there is a strong need, very strong need. I think the very strong need that everyone should be given the legal knowledge and legal education that they can control such crimes in society. It is very important to know that the law is protect of our rights. So thank you so much. Thank you, Neha. Thank you so much for the presentation. Thank you so much. Now we have Miss Neelam Kumari with us. Can we have Miss Neelam Kumari? Yes, ma'am. Yes, Neelam, you can start with your presentation. Okay, so just before Neelam, okay, Neelam, you can Yes, ma'am. start. Yes. Okay. नमस्कार, मैं नीलम कुमारी, शोधार्थी, महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी आमेर, जयपुर। आज की संगोष्ठी में नमस्कार, मैं नीलम कुमारी, शोधार्थी, महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी आमेर, जयपुर। आज की संगोष्ठी में मेरा विषय है महिला सशक्तिकरण में कौशल शिक्षा की भूमिका। जैसे कि हमें पता है कि वर्तमान समय में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। महिलाओं को पुरुषों के कंधे बराबर चलने का भी अधिकार प्राप्त है। जैसे कि हमारे वेदों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, अर्थात सम्मान प्राप्त है, वहाँ देवता निवास करते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण शारीरिक और मानसिक सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करके उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। अर्थात महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लें तथा वो किसी पर भी निर्भर ना हो, इसके लिए महिला सशक्तिकरण का प्रयोग किया जाता है, या हम महिला सशक्तिकरण का एक तरीके से हम शब्द यूज कर सकते हैं। जब महिला सशक्त होंगी तो उसके लिए विभिन्न आयाम भी दर्शाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण में हम देखते हैं कि हमारे समाज में वर्तमान समय में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। वे अपने निर्णय तथा सहभागिता पुरुषों के बराबर दर्ज करवाती हैं, तो उन्हें हम सामाजिक सशक्तिकरण कह सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि आज के वर्तमान दौर में महिलाएं अपने स्वयं की नौकरी कर रही हैं, अपने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने पैरों पर खड़ी हैं। तो वो अपना एक स्वयं का रोजगार निर्धारित करेंगी, या फिर वो किसी के कहीं जगह पे अपना नौकरी करेंगी। इसके लिए वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हैं, अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वर्तमान समय में, जैसे हमारे पंचायती चुनाव हुए हैं या नगर निगम के चुनाव हुए हैं, उनमें भी महिलाओं ने अपनी जो स्वयं की भागीदारी है वो दिखाई है, तथा राजनीतिक स्तर पर भी अपने आप को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रूफ किया है। तो राजनीतिक सशक्तिकरण में भी महिलाएं अपना जो सहयोग है वो पुरुषों के बराबर प्रदर्शित कर रही हैं। पारिवारिक सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है कि जो महिलाएं हैं, जैसे कि हमारी प्राचीन समय में कहावत थी कि महिला और पुरुष
एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जब एक गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाएगा तो दूसरा पहिया बराबर तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पारिवारिक रूप में भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं, एक तरीके से अपना जो सहयोग है वो परिवार में बराबर निभा रही हैं। तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में पुरुष और महिलाएं बराबर का सहयोग पारिवारिक सशक्तिकरण में कर रहे हैं। संवैधानिक सशक्तिकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे संविधान में अनेक अधिकार और कानून जो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि महिलाओं के पर किसी प्रकार की हिंसा ना हो, वो किसी तरीके के किसी प्रकार का हम कह सकते हैं उन पर दोषारोपण ना हो, वो अपनी आवाज़ आराम से उठा पाए, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से समाज के द्वारा जो भी उनके ऊपर दोषारोपण किए जाए या फिर उनमें कोई पारिवारिक हिंसा वगैरह हो, उसके लिए संविधान ने अनेक कानून और जो उनके लिए कानून बनाए हैं, उन कानूनों के प्रति भी जागरूक रहने के लिए रहना ही संवैधानिक सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है। और आखिर में हम बात करते हैं शैक्षिक सशक्तिकरण की। शैक्षिक सशक्तिकरण इन सभी आयामों का आधार कहलाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अगर शिक्षित नहीं होंगी तो उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं होगी, और जब उनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो ना तो वो राजनीतिक स्तर पर, ना वो पारिवारिक स्तर पर, और ना ही वो सामाजिक स्तर पर अपनी सहभागिता दर्शा पाती हैं। तो शिक्षित होना भी अपने आप में एक सशक्तिकरण है, तो शैक्षिक सशक्तिकरण भी अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात कर रहे थे कौशल शिक्षा की, कि कौशल शिक्षा महिला सशक्तिकरण में कैसे अपना अहम योगदान निभाती है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में अनेक ऐसी स्किल एजुकेशंस हैं जो हमारे समाज में प्रोवाइड हैं, हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले है संचार कौशल। कम्युनिकेशन स्किल्स अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचाते तो हमारे विचारों के बारे में पता नहीं चलता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को होना अत्यंत आवश्यक है। फिर है सिलाई प्रशिक्षण और ब्यूटिशियन। सिलाई प्रशिक्षण और ब्यूटिशियन एक ऐसा हुनर है जिसके द्वारा महिलाएं अपने आप को समाज में प्रदर्शित कर पाती हैं, प्रूव कर पाती हैं कि हमारे हाथों में एक हुनर है। तो सिलाई प्रशिक्षण के द्वारा महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार कर पाती हैं तथा आर्थिक रूप से भी सशक्त हो पाती हैं। और ब्यूटिशियन के बारे में तो कहना ही क्या, जैसे कि सबको पता है कि महिलाएं अपनी ब्यूटी के लिए समाज में एक तरीके से विख्यात हैं कि उन्हें एक तरीके से खूबसूरत दिखना है। इसके लिए ब्यूटिशियन अत्यंत कोर्स करने के कारण महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर पाती हैं। कंप्यूटर शिक्षा और विभिन्न भाषाओं का विकास, ये दोनों चीज़ें ई टेक्निकल के इस युग में जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है उसके अंतर्गत अत्यंत आवश्यक हैं। विभिन्न भाषाओं का विकास करके महिलाएं किसी भी स्कूल में अपना रोजगार स्थापित कर सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि विदेशों में भी अपना एक स्वयं का रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद में बात आती है महिला ई हार्ट डिजिटल मंच की। महिला ई हार्ट डिजिटल मंच, यहाँ पे मैं your time is up. ओके मैम, So wind it up fast. Please come to the conclusion. यस मैम, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो महिला सशक्तिकरण है उसके द्वारा स्किल एजुकेशन प्राप्त करके महिलाएं अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकती हैं, अपने जो अधिकार हैं उनके प्रति जागरूक हो सकती हैं, जो अपनी एजुकेशन है उसको आगे बढ़ा सकती हैं और अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए स्किल एजुकेशन अत्यंत आवश्यक है महिलाओं को सशक्त करने के लिए। धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन नीलम आपसे ये है कि अभी आपने बात करी महिला सशक्तिकरण की, स्किल एजुकेशन। तो स्किल एजुकेशन जो विषय है उसमें चलिए स्किल्ड भी हो गई महिलाएं, लेकिन अभी जो पोस्ट कोविड एरा का जो टाइम है, हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर की मूवमेंट्स बहुत कम हो रहे हैं, महिलाएं घर पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से वो उन्होंने जो स्किल एजुकेशन ली है या वो कुछ अर्न करना चाह रही हैं तो किस तरह से अपने आप को एम्पावर्ड कर सकती हैं?
मैम वर्तमान समय में हम देखते हैं कि डिजिटल युग चल रहे हैं और जो भी क्लासेस वगैरह हो रही हैं वो सारी हमारी ऑनलाइन वगैरह चल रही हैं। तो यहाँ पे जब महिला कंप्यूटर का कोर्स करती है या ई हार्ट वाला जो कोर्स होता है वो कर रही है, तो वो अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर सकती है और उसके माध्यम से भी वो अपने आप को सशक्त कर सकती है, आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। तो डिजिटल दुनिया के लिए स्किल एजुकेशन बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक हो चुकी है। तो महिलाओं को जब कंप्यूटर की शिक्षा होगी या फिर विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होगा तो डिजिटल के कारण वो अपने आप को सशक्त कर पाएगी। थैंक यू नीलम। थैंक यू मैम। Thank you, Neelam. Now let's move forward and call Miss Sunita Kumari Sharma. Yes, ma'am. Yes, Miss Sunita, you can continue with your presentation. Yes, ma'am. नमस्कार, मैं सुनीता कुमारी शर्मा, शोधार्थी शिक्षा विभाग, महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आमेर, जयपुर। आज की संगोष्ठी में मेरा विषय है कौशल शिक्षा में साइबर जागरूकता की भूमिका। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि आज वर्तमान समय में हमारे देश भारत में कौशल शिक्षा बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कौशल शिक्षा पे इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कौशल से जुड़ रहा है। जो व्यक्ति किसी कारणवश अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ चुका है और साथ ही वो रोजगार प्राप्त करना चाहता है, तो वो इस स्किल एजुकेशन से जुड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है कि वर्तमान समय के जो युवा हैं, उन युवाओं को यदि हम कौशल शिक्षा से जोड़ दें तो निसंदेह उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होगा, उनके अंदर वो सक्षमता उपस्थित हो पाएगी, जिससे कि वो अपनी आजीविका को बहुत बखूबी अर्जित कर सकते हैं। अगली बात करें हम कि कौशल शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो मेरा मानना है कि कौशल शिक्षा हम इसी उद्देश्य पर मानते हैं कि विद्यार्थी को जब वो कौशल प्राप्त कर लेता है तो रोजगार की प्राप्ति के अवसर मिले। तो निसंदेह कौशल शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी को या युवाओं को रोजगार की प्राप्ति के अवसर मिलते हैं, उनमें आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। जो हमारे युवा हैं, जो आज का यूथ है, जो आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इस कौशल शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर आत्मविश्वास भर जाता है और अपने आत्मविश्वास के साथ वो कार्य करते हैं, जिससे कि वो सर्वश्रेष्ठ साबित होते हैं। बात करूं मैं जागरूकता का विकास, तो निसंदेह कौशल शिक्षा से विद्यार्थियों के अंदर जागरूकता का विकास भी होता है। अब बात करें चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाना, निसंदेह हमारा जो युवा है वो इस समय हमारा कोविड-19 भी चल रहा है और विषम परिस्थितियां जो हमें इस और लेकर के जाती हैं कि हम किस समय कौन सी सिचुएशन में किस तरह से उस सिचुएशन से निपट सकते हैं, तो इसलिए ये कौशल शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि जिसने कौशल शिक्षा अर्जित कर ली है, जीवन कौशल शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो निश्चित रूप से वो चुनौतियों से भी प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बन सकता है। अब मैं बात करूं साइबर अपराध। देखिए, हम ये कौशल शिक्षा तो अर्जित कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा युवा है, वर्तमान समय में हम दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि हमारा युवा अपने इस कौशल का दुरुपयोग कर रहा है, जिसके कारण आज हमारे सामने एक नई समस्या उभर कर सामने आ रही है और वो समस्या है साइबर अपराध की। इस अपराध को अंजाम देने वाले लोग कहीं न कहीं तकनीकी कौशल से जुड़े हुए होते हैं और ये लोग अधिक धन कमाने की चाहत में या फिर लोगों को परेशान करना चाहते हैं, जिसके कारण ये भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हैं और इस अपराध को जन्म देते हैं। और इस अपराध का नाम है साइबर अपराध। ये एक ऐसा आपराधिक कृत्य है जिसमें कंप्यूटर को या तो माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या उसे अपराध कार्य करने का साधन या टूल या टारगेट के रूप में निशाना बनाया जाता है। बात करूं मैं अब साइबर अपराध के कारण क्या है, तो देखिए, मेरा मानना है कि साइबर अपराध का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है मनोवैज्ञानिक कारण, क्योंकि आज का जो हमारा युवा है वो दूसरों को परेशान करे, उसकी साइकोलॉजी इस तरह की हो जाती है कि वो दूसरों को परेशान करके आनंदित महसूस करता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हर्ष का अनुभव करता है, इसलिए ये साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। दूसरा है द्वेष की भावना। निसंदेह हमारे यूथ में आज
प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तत्पर होते हैं। इसी वजह से इस साइबर अपराध का जन्म होता है। अगली बात करूं मैं तो अधिक रुपयों का लालच। निसंदेह हमारा युवा बहुत जल्दी धनवान बनने की कोशिश में लगा रहता है और इसलिए वो इस कौशल का दुरुपयोग करता चला जाता है और उस तकनीकी कौशल का वो गलत तरीके से यूज करता है, जिससे कि साइबर अपराध का जन्म होता है। हम बात करें लापरवाही या सावधानी की तो निसंदेह हमारा यूथ आज इंटरनेट का प्रयोग बहुत सारी चीजों को खोजने और प्राप्त करने के लिए कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि किस समय कौन सी चीज को कैसे उपयोग में लाना है और इस जरा सी लापरवाही के कारण वो साइबर अपराध का शिकार बन जाता है। कई सामाजिक रीजन भी होते हैं जिसके कारण हमारा यूथ इस साइबर अपराध का जन्मदाता भी बनता है और साइबर अपराध से पीड़ित भी हो जाता है। अब बात करें साइबर अपराध के प्रकार, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ दो प्रकार के साइबर अपराध देखने में आते हैं। नंबर एक, ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर को लक्षित किया जाता है, जैसे हैकिंग, वायरस का आक्रमण आदि, और ऐसा अपराध जिसके अंदर हम कंप्यूटर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइबर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, धोखाधड़ी, संपदा अधिकार उल्लंघन, बच्चों के विरुद्ध अपराध आदि। तो निसंदेह हमारे अंदर में एक चीज और बताना चाहूंगी कि साइबर अपराध की हमने 3 श्रेणियां बनाई हैं, और वो 3 श्रेणियां किस तरह की है कि एक तो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध, जिसके अंदर हम ले लेते हैं स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर उत्पीड़न, विभिन्न प्रकार की स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, मानव तस्करी, पहचान की चोरी आदि। इस तरह से लोग आपकी कोई भी पहचान को चुरा लेते हैं और उस तरह से उनको ऑनलाइन कर देते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको सब लोग देख सकते हैं, आपके बारे में सब लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे व्यक्ति की मानसिक क्षति होती है और वो बहुत बुरी तरह से पीड़ित होते हैं। प्लीज कंक्लूड। यस मैम। दूसरी बात करें हम संपत्ति के विरुद्ध अपराध, तीसरी बात करें हम सरकार के विरुद्ध साइबर अपराध। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के हमारे साइबर अपराध हमें देखने को मिलते हैं। आप देखिए बहुत सारे साइबर अपराध हैं, वायरस का हमला, वायरस नेटवर्क, सर्विस अटैक, कॉपीराइट उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, गूगल फ्रॉड, स्पूकिंग, फिशिंग, की लॉकर आदि। नेक्स्ट, भारत में इस साइबर अपराध को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कंप्यूटर स्रोत एवं दस्तावेजों के साथ जो छेड़छाड़ करता है उसके लिए धारा 65 का प्रावधान है। अश्लील सूचनाओं का प्रकाशन यदि कोई करता है तो धारा 67 का प्रावधान है। गोपनीयता को भंग करता है तो धारा 72 का प्रावधान है। झूठे हस्ताक्षर डिजिटल प्रमाण पत्रों का प्रकाशन वो करता है तो धारा 73 का प्रावधान है। और कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग एवं आंकड़ों में परिवर्तन यदि वो करता है तो धारा 66 का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता में भी वेब हैकिंग के लिए धारा 383 का प्रावधान है। फर्जी वेबसाइट और साइबर धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की धारा 420 का प्रावधान है और ईमेल स्पूकिंग आईपीसी की धारा 463 का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी के लिए आईपीसी की धारा 463 का प्रावधान है। तो अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम युवाओं को कौशल शिक्षा से तो जोड़ें, लेकिन कौशल शिक्षा के जोड़ने के बाद हम इस चीज से भी उन्हें अवगत कराएं कि आप अपनी इस कौशल शिक्षा का दुरुपयोग ना करें, बल्कि सही मायने में इसका सही उपयोग करें। लोगों में जागरूकता पैदा की जाए ताकि वे इस अपराध से बच सके। तीसरी बात मैं कहूंगी कि कौशल शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाएं ताकि आर्थिक रूप से आप मजबूत हो सके। कौशल शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर आत्मविश्वास जगाइए ताकि आप जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ा सके और अपना सब कुछ जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सके। और अंतिम एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि साइबर अपराध के विषय में कुछ बिंदु पाठ्यक्रम में समायोजित किए जाने चाहिए ताकि विद्यार्थी प्रारंभ से यदि इन्हें पढ़ेगा तो निश्चित रूप से आज जो ये विडंबना हमें देखने को मिल रही है उस विडंबना से हमें मुक्ति प्राप्त होगी और हमारे बच्चे जो साइबर अपराध से जो ग्रसित हो रहे हैं उससे वो बच सकेंगे। तो मेरा मानना है कि हमें कौशल शिक्षा का उपयोग बहुत श्रेष्ठ तरीके से करना चाहिए ताकि हम अपनी आजीविका को आगे ले जा सके, आजीविका को बढ़ा सके, अपने आप के अंदर इस तरह के आत्मविश्वास जागृत कर सके जिससे कि हम अपने आप को कभी किसी से पीछे ना समझे। थैंक यू। सुनीता जी, यस मैम। मेरा सवाल आपके लिए है। यस मैम। आपने बताया कि कौशल शिक्षा का उद्देश्य। यस मैम। चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम कैसे बनाता है। यस मैम, मैं ये बताना चाहूंगी मैम कि कभी भी कोई भी हमारे सामने काम आता है जो हमारे से नहीं होने वाला होता है। सपोज करिए हम टेक्नोलॉजी से युक्त नहीं हैं, इट्स राइट मैम। तो जब हम टेक्नोलॉजी से युक्त नहीं हैं लेकिन अगर
हमने वो टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है, उस समय वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत बेहतर काम आएगी, बहुत सही मायने में काम आएगी और हम उस सिचुएशन से निपट सकते हैं। यानी कौशल हमारी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे निकालने में सहायक सिद्ध होता है मैम। थैंक यू मैम। एनी क्वेश्चन मैम? सुनीता जी। यस मैम। हमारी कॉन्फ्रेंस का थीम है आज का रीडिस्कवरिंग कैरियर पैशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो पोस्ट कोविड एरा में आप साइबर अपराध की बात कर रहे हैं। इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज कैसे देखेंगे, जरा बताइएगा हमें। मैम, कैरियर अपॉर्चुनिटी साइबर अपराध के क्षेत्र में भी हम कौशल शिक्षा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से युक्त तकनीकी कौशल हम प्राप्त कर रहे हैं। तो तकनीकी कौशल के माध्यम से हम इस कोविड-19 में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें, क्लासेस हम चला सकते हैं, ताकि जो बच्चे अभी रिसेंट में हम देख रहे हैं, इस कोविड-19 में भी साइबर अपराध से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। इस समय वैसे ही अर्थ की कमी हो रही है, लोगों के पास धन की कमी है, और लेकिन उसके बाद भी उनका जो बहुत मेहनत का कमाया हुआ धन है वो भी हमारे साइबर ठग बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक से उड़ा ले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि हम अगर उन्हें अवेयर कर देते हैं, मेरे अंदर अगर ये टेक्निकल नॉलेज है, अगर मैं उन्हें अवेयर कर देती हूँ, दैट मीन्स वो इस ठगी से बच सकते हैं। तो मेरा चुनाव, इसीलिए मैंने ये विषय चुना है, क्योंकि वर्तमान समय में हम यही देख पा रहे हैं कि हमारा यूथ अपनी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके और साइबर अपराध को जन्म दे रहा है। तो अगर हम उन्हें अवेयर कर दें तो निसंदेह शायद इस एरा में भी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है पैसे को बचाना, तो शायद वो इस कोविड-19 में अपने महत्वपूर्ण जो उनकी मनी है, उनका पैसा है, उसको वो सेव कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, यस मैम, उनको हम सुरक्षित बना सकते हैं। यस मैम, यस मैम, अवेयरनेस के साथ हम उन्हें सुरक्षित बना सकते हैं। थैंक यू मैडम। Thank you so much. Thank you. Now I would like to call Miss Pinky Sankala. Sankla. हाँ, नमस्कार। Pinky ji, okay, your presentation is visible. Thank you. Okay. Namaskar. I am Pinky Sankla, research scholar of Suresh Gyan Bihar University. My guide name is Dr. Bhavna Kulshrestha. इस इंटरनेशनल वेबिनार का मेरा टॉपिक है सामाजिक विषयों के लिए छात्रों के कैरियर विकल्प। सामाजिक विज्ञान विषय की ऊपरी परत हटाकर देखें तो हम पाएंगे कि उसकी बुनियादी प्रकृति का सरोकार लोगों, जगहों, संस्थाओं और के किस्से कहानियों से ही होता है। उन्हें हम अपने चारों ओर की कहानियों में बिखरा हुआ देखते हैं, चाहे वो टीवी हो, फिल्मी पर्दा हो या फिर अखबार हो। सामाजिक विज्ञान विषय हमारे जीवन के बारे में होता है। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो विषय होते हैं अतीत से हमारा संबंध जोड़ते हैं और इस तरह से जहां आज हम हैं वहां पर हम किस तरह से आए, हम पर शासन करने वाली संस्थाओं के माध्यम से ये हमें वर्तमान से भी जोड़ते हैं। हम जिस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं उसकी समझ हमारे भीतर विकसित करके अतीत और वर्तमान को परिचित संदर्भ में हमारे सामने लाते हैं। वास्तविकता यह है कि सामाजिक विज्ञान विषय एक बेहतर दुनिया बनाने का सपना देखने में हमारी मदद करता है। जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु से आती है। सामाजिक विज्ञान यह जानने के लिए जरूरी है कि जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं उनकी विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए। उसी के अंतर्गत हम अपने पारंपरिक मूल्यों और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन बना सकें ताकि हमें सार्वजनिक क्रियाओं को पूरा करने का विवेक प्राप्त हो सके। इसी तरह कहा जाए तो सभी तरह की नीतियों और रणनीतियों का संबंध मानव जीवन से होता है और इस तरह से देखें तो कैरियर के लिहाज से इस विषय का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। मानव सभ्यता, संस्कृति, सोसाइटी, जातीयता, सामाजिक संगठन आदि की जानकारी से हम अपने वर्तमान समय को और भी बेहतर बना सकते हैं।
इन विषयों के बारे में हम अपने बच्चों को शिक्षित करके उनका सामाजिकरण कर सकते हैं। तो इन विषयों से मेरा तात्पर्य मानव शास्त्र है, जिसमें हम मानव के समाज के अतीत और वर्तमान का अध्ययन करते हैं। इतिहास है, जिसमें हम व्यक्ति के अतीत का अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र है, जिसमें हम व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मानते हुए राज्य और संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। भूगोल, जिसके अंदर हम पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें हम दूसरे देश के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी आपस में दो देशों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। और जैसे समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र के माध्यम से हम व्यक्ति के समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं इसके बारे में बताते हैं। भाषा विज्ञान के माध्यम से हम भाषा के अर्थ और स्वरूप को जानते हैं। विधि शास्त्र के माध्यम से हम कानून बनाने वाली विधियों को समझते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, तो हम एक सामाजिक विषय के माध्यम से, यानी एक सामाजिक विषय के माध्यम से जिसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित होते हैं, उससे बच्चों को शिक्षित करके उनका सामाजिकरण किया जा सकता है। इससे समाज में हमारी संस्कृति भी बनी रहती है। भारतीय संस्कृति के मूल्यों को हम बच्चों के समक्ष सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से बेहतरीन तरीके से अपनाने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के छात्रों के सामने कैरियर की अपार संभावनाएं होती हैं। सामाजिक विषय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। बीएड करने के बाद आप राज्य द्वारा प्रायोजित पात्रता परीक्षा से सरकारी अध्यापक बन सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में नेट करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के किसी भी विषय में पीएचडी धारक एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं और प्रिंसिपल भी। और फिर जैसे जैसे आपका अनुभव होता जाएगा, आप और लोगों को भी शोध कार्य क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं। जो भी शिक्षार्थी हो वो 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सामाजिक विज्ञान अध्ययन का बहुत गंभीरता से अध्ययन करते हैं, तो वही विद्यार्थी आगे चलकर आईएएस, आरएएस, सोशल वर्कर, मीडिया, कॉरपोरेट घराने में नौकरी प्राप्त करना, एनजीओ में प्रवेश, एनजीओ से जुड़कर समाज से जो जुड़े हुए विभिन्न विषय हैं जैसे लिंग भेद है, पर्यावरण है, इन पर अपना काम कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर वो अपनी राय दे सकते हैं, सरकारी संगठनों से जुड़ सकते हैं। तो वर्तमान में कैरियर के ऑप्शन ने सामाजिक विज्ञान विषय के महत्व को बहुत ही बढ़ा दिया है। और साथ ही जो नई शिक्षा नीति है उसने तो कला और विज्ञान के भेद को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाया है। तो इस वर्तमान समय के अकॉर्डिंग तो हमारे सामने सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के सामने कैरियर की अपार संभावनाएं हैं। थैंक यू। पिंकी, अभी पोस्ट कोविड एरा में आपको क्या लगता है सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए आपकी दृष्टि में कौन सा करियर बेस्ट ऑप्शन है? मैम, इस वक्त तो आप देखिए कि जो अपन सारे सब्जेक्टों की अपन ऑनलाइन स्टडी चल रही है, मतलब बच्चों को समस्याएं आती है, लेकिन अगर हमारा टारगेट होता है, अगर हमारे को पढ़ना ही होता है, तो हम उस पर पूरा अपना 100% एफर्ट डालकर उस ऑनलाइन प्लेटफार्म से भी इस विषय का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे हमें आरएएस बनना हो, आईएएस बनना हो, जो भी इसके रिलेटेड वो हैं, जो भी हम करना चाहते हैं सोशल स्टडी में, चाहे हमारा जो भी कैरियर हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो आप कोई से भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि कोविड के टाइम में ये कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर ही, हमारे आसपास ही सारी दुनिया है और सब कुछ नेट पर अवेलेबल है। हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, बस ये है कि अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी पड़ती है। नहीं, जैसे ऑनलाइन के अंदर अगर बच्चे कोई करियर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कि वो जाकर के अपना करियर बना सकते हैं, जो ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं अपने? ऑनलाइन में आप अपने जो भी, जैसे सोशल साइंस है, उसमें उस विषय को भी आप ऑनलाइन डिलीवर, टीचिंग में तो आप अपना सारा ऑनलाइन डिलीवर तो एक कैरियर है। हाँ, टीचिंग तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई। उसके अलावा मैं जानना चाह रही हूँ आपसे उसके और अलावा अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं?
जैसे मैम ये है जैसे एनजीओ से जुड़कर भी तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एनजीओ से जैसे ऑफलाइन भी जुड़ते हैं तो ऑनलाइन भी जुड़कर उसमें काम कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, सेमिनार्स वगैरह कर सकते हैं, वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, बच्चों को उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं, जो भी समाज की जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में जागरूक कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। जैसे अभी कोरोना है तो उसके अंदर हमें लोगों को जागरूक करना था साफ सफाई के लिए या चेतना जागानी थी, तो वो भी हमने इसी के माध्यम से किया। भाई ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर तो बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन हम कोविड में ऑनलाइन कर सकते थे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Now I would like to call Dr. Binu Singh. Can we have Dr. Binu Singh? Yes, I'm very much here. Thank you so much for giving me this platform. And let me share my screen, and I'll be continuing the topic which Madam was discussing just now. How to share my screen? I'm unable to see. Ma'am, first you open your presentation and after that do the sharing. No, but there is no shared screen over here. I cannot see share screen. Just a second. Ma'am, what medium are you using? Are you using laptop? This is phone from which I'm doing it. Okay. And in the morning also they have done the rehearsal, but right now I don't know why it is not showing me that option. Your rehearsal was successful with the phone? You could see share Yes. screen? Yes. Okay. Just a second, ma'am. Let me check with the technical session group. Just a second. All right. So I can see share whiteboard, but not the share screen option. Ma'am, is your PPT open? Your presentation, is it open? Yes, it is there on other screen. Okay. Ma'am, let's do one thing. We move towards the next presenter, and till that time we can solve your problem. Okay. Right. So Thank I you so would much. like to invite Miss Riddhi. Miss Riddhi, are you there? Are you there? Miss Riddhi, yes. You please start with your presentation, and Dr. Binu, you will be getting connected with a technical person to resolve your problem. Yes, ma'am. We can't. You're not audible, Riddhi. You're not audible, Miss Riddhi. Yes. Ma'am, I am also sharing the screen via mobile, but the screen sharing option is missing in this. Okay. The same problem is with me as well. Like Binu ma'am is having the same thing is going. Okay. So do we have Nishant with us? Nishant? Yes, ma'am. Am I audible to you, ma'am? So we'll start with Nishant, and I think we have the presentations with us of Binu and Miss Riddhi. So we will do the screen sharing, and till that we can listen to Nishant. Okay. So please wait, Binu and Riddhi. We'll do this screen sharing for you. Okay, Nishant. So you can start with your presentation. Yes. Yes. A very good morning to all of you. My name is Nishant Rathore. Your screen is shared, but I can't see your presentation. You have to open your presentation Ma'am, is first. that visible? Your screen is shared. You're sharing the screen, but your presentation is not visible. Ma'am, is that visible now? No, it's not. You first open the presentation. First, stop the screen sharing and open the presentation, and then do the screen sharing. Okay, ma'am. स्क्रीन शेयरिंग हो रही है लेकिन ये प्रेजेंटेशन नहीं आ रही।
Okay, Nishant, you resolve your problem. We have Binu's presentation with us. So we will be presenting that first. By that time, you can get ready with the presentation. Your problem will be resolved. So, Dr. Binu, you can come back and do your presentation. We are doing the sharing for you. Dr. Binu Singh, yes. Yeah, I'm there, but I can see Nishant Yes, Rathod ma'am. doing her. We are doing the Doing his, presentation. Just give us a minute. yeah. Yes. Very good afternoon, all of you. I'm Dr. Binu Binu, Singh. can you see the presentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah, I'll be just putting next so that you can do that. A very good afternoon, all of you, and very thank you for giving me this platform to speak on the topic teaching during COVID-19 in Gujarat, the new normal. I'm working with the Department of Sociology, Faculty of Arts, the Maharaja Sayajirao University of Baroda at Vadodara. So can you put this next screen? Okay. Novel coronavirus has brought the world to halt. Almost all country schools were closed, and according to Pearson.com, 300 million. Yes, just this slide. Yes, 300 million learners worldwide are affected by the spread of coronavirus, and educators are striving to ensure that learning continues in spite of massive disruption. Yes, ma'am. Next slide. But this did not stop teachers doing their teaching. Almost all started working from home and it became new normal. Teaching is done online on an untested and unprecedented scale. The move to remote learning has enabled by several online tech such as Google Classroom, Blackboard, Zoom, Microsoft Teams, all of which play an important role in this transformation. With the help of ICT in education, online video-based micro courses, e-books, simulation, model, graphics, animation, quiz, games, e-notes, all are making learning accessible, engaging, and contextualized. With this pandemic situation, the online digital learning and teaching act as a supplementary tool. Please put the next slide. But most of them face difficulty in streaming it due to lack of infrastructure or were well not trained to it. This paper tries to analyze the online activities by teachers and how it can be the new normal. Will this COVID-19 will make the online teaching and learning as one of the major change in education? And what are the threats of online teaching and what could be the remedial solution? Next slide, please. When the lockdown was the method, there are various methods to study. So I have used functional perspective. Snowball method was taken into consideration for data collection. About 200 teachers were interviewed. And again, the survey was done online. Next slide, please. When the lockdown was announced on 24th March 2020, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, as the only solution to fight against COVID-19 through social distancing, the education systems were at the verge of completing yearly system or semester system in colleges and universities. The exams were held and there was no planning done as nobody knew that this coronavirus will hit so hard all over the world. But the biggest challenge was to complete the syllabus. Thanks to technology, with the help of this, teachers were able to complete their education. And just a second, put this slide only. Yes, thank you. So with the advanced tools embedded on the platforms such as
online, Zoom online, Canvas, or Google Classroom, we can capture screenshots and gather data on students' engagement during the virtual classes, says Professor Dave of SLS PTPU University. Discussion forums and assignments have gone online completely. The COVID pandemic has changed the way several sectors were perhaps forever. One of the most obvious fields is education. More and more institutions have switched to online mode during the national lockdown. In the primary educational institute in Ahmedabad and Gandhinagar, virtual is new normal for both lectures and evaluation. Through online platform was readily available, but the usability for teaching and learning purpose was not realized. Government of India has initiated National Digital Library of India, Directory of Open Access General, Shodh Ganga, EPT Parchala, but the use of open access was done during this time. Please, next slide. So the teachers are taking academic Time's up. Dr. Binu, your time is up. So please come to the conclusion. But I couldn't speak much. All right. Yes, but you just had 5 minutes. So you have to wind it up in 5 minutes only. Yes. So can you just put next slide, please? So let me put this. This is according to the Gopalpura Primary School in Anand district are taking their classes through WhatsApp. This is voluntary association which was done by teachers so that the kids don't forget what they have learned in classrooms. And next slide, please. And this is one example which you can see on the slides with a big thing. Yes, next slide, please. Yeah, this is an example of Sham Chawda. He was actually in Ahmedabad, but he fell in love with Kashmir, and he was able to relocate and do the teaching, staying intact with Kashmir. Yes, next slide, please. Yes, there are various threats which we are facing as being teachers, vision syndrome, then ear infections, and yes, we are not able to demarcate our work and leisure life. And yes, last slide, please. Yeah, this is what, and the teachers are going to have a new horizon that after COVID-19, definitely things will change. We are going to synchronize the online platforms with our, physical classrooms. And yes, it will give us freedom, that is one-to-one interaction with students, which we have learned during COVID-19. And again, this has helped those mischievous students who used to distract the classes. So definitely the online platforms will help them to engage, or you can say have a one-to-one relation, which will change the scenario of present society of being a teacher. Thank you so much. Thank you, Dr. Binu. Is there any question from the judges? डॉक्टर बीनू, यस मैम, न्यू नॉर्मल की हम सब लोग बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे आप सयाजीराव यूनिवर्सिटी में हैं, और आपके यहाँ पर क्या न्यू नॉर्मल के अंदर जो टीचिंग हो रहा है, जैसे हम यहाँ राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन टीचिंग के स्ट्रेस में जा रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो भी खुद स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या न्यू नॉर्मल के अंतर्गत होना चाहिए ऐसी चीज जिससे कि एक जो हमारा ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म बना है वो एक रेगुलर बेसिस पे हम उसको शुरू कर पाएं? अदरवाइज जो बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस, अभी आपने अपनी स्लाइड में हमको शेयर भी किया कि काफ़ी सारे आई स्ट्रेस हो रहा है, उनको ब्रेन से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए हमारे न्यू नॉर्मल में जिससे कि एक स्मूथ ऑनलाइन टीचिंग जो है वो चलती रहे? Yes, ma'am. Actually, the thing is, right now, we cannot think anything else other than COVID-19. So, it's the front line thing is that we have to fight against COVID-19. And for that, we have to stay at home. And again, I'm telling you, this online platform itself is a remedial solution for various things which are happening. Like, we can implement virtual water coolers. The Maharaja Sayajirao University is already implementing all that. They have arranged yoga sessions and then various online competitions.
That helps the students to release their tensions and stresses. And also for teachers also, they are arranging such sessions which are, virtual water coolers in the terms of HR, we call that. And so that is helping them out in a big way. And yes, I say that this will help. The government was always after integrating the ICT tools, but now, if the students, like I have seen many disabled students who were, though our scenario spatial management is strong enough, but still due to some conditions they were not able to come to class. But now what we can do is we will be going with our mobiles and laptops to the classes, synchronize those students who are not able to come because of any reason, and they can join and they can be the part and parcel of the class. That is what the education is about, means reaching to all. And this platform will help us to synchronize more with the online tools and technology. Thank you. Thank you, Dr. Veenu. Thank you. Now, I would like to invite Ms. Riddhi. Yes, ma'am. Good afternoon. Yes, Riddhi, you can start with your presentation. Good afternoon. Ma'am, I want to thank first of all to the whole Biani group of colleges for giving me the opportunity to speak and to present my small abstract. So here I am talking about teaching as a career for social science students. And I will start with the role of a teacher. Basically, what is a teacher's role in the society? So I have taken a quote of John Dewey, that is, education is not preparation for life. Education is the life itself. So as we all know that teacher has been regarded as a guru or as he occupies a pride place in our Indian society. If we trace it from the last many of the years back, we can see that the guru is just regarded as equivalent to the god. So it has been like teachers are a great like workers, or I can say they are providing a great service to the society by the use of their knowledge, their skills, their intelligence, and many more things like the wisdom, whatever they possess. So they are sharing all the things. In the next slide, I want to describe social science, how it works as a career. Like, we know that social science is an interdisciplinary subject. Why? Because it has many streams, many subjects are there which are interconnected. So the key word in this slide is the interdisciplinary, on which I want to focus. Like it leads to the path which leads actually require analytical thinking, critical thinking, and some logical perspective to the student if a learner require, or if a teacher, whosoever is teaching. These basic skills are required as being a social science student or a teacher. Then research, we know that many researchers are working, those who are going for the PhD or for junior research fellowship programs, they are opting this thing. Now, in the next slide, how to be a prominent teacher for social science. So it is not like only the degrees or if I say masteries are working in this field. Appropriate training is also required. As I am working as a coordinator in school in Chittor, so I face many persons who are having deep knowledge. But the basic thing is how to teach the students, how to teach them with a great behavioral approach that a teacher needs. So for a prominent social science teacher, one must require a passion and interest in the subject. A kind of commitment or a kind of firm attitude should be there. In the next slide, we are discussing about the teaching qualifications and strategies. So again, I want to repeat, like only the degree course is not a matter. We need actually the trained teacher to teach or to give the right path or direction to the student. Because if we talk about our teaching era and if we talk about our learning chapter, that time the teaching was entirely different by the teachers. And nowadays we are using ICT tools and many more advanced technologies. So the teaching aids or the resources, whatever teacher is using, he or she should be very much acquainted with that. They should like use playway methods or learning methods to teach the students in the class. And the rule of stick policy should not be there. Yeah, ma'am, if we can proceed to the next slide. Okay. So here the essence of education is like the best education
which is given to the students is it should be drawn out of theme. Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers. So I want to explain the quote at the end, which means that education is bringing the queries from the depth of the heart of students. It is to develop the inquisitive learners, to solve the curiosity or the arising questions among the learners or in the small brains. So we see that many students in the class, they're asking various questions and the teacher is enjoying that session while solving their doubts. So this is all about my presentation where I have stressed on these 5 words. Thank you, ma'am. Thank you. Are there any questions from the judges' end? Hello. What are the other job options in social sciences nowadays? आपने टीचिंग की बात करी. Ma'am, apart from teaching, yes, ma'am. Apart from teaching, there are many options because it leads to a lots of career path. If I talk about the students who are going for competitions, they can opt various social science services or government sector jobs. Like teaching is a part of a kind of job which is for the students, but they can opt for various administrative jobs. They can go for forestry, administration, foreign services, and maybe a kind of civil services we can talk. And apart from this, they can go for this professor degrees, or if I say they can work as a college lecturers. And many skills are required. They can start their online courses or online coaching centers as well. So there is no limit of career in social science. Thank you. Okay, ma'am. Thank you so much for giving the chance to speak. Thank you, Riddhi. Now, I would like to invite Mr. Nishant. Mr. Nishant, please. Yes, Nishant. Just wait for a few seconds. We are just presenting your presentation. A very good afternoon to all. My name is Nishant Rathor and I am a student of LLB second year, Biani Law College. First of all, I would like to thank all my teachers, Rihanna ma'am, Monica ma'am, Madhuri ma'am, and director sir, Dr. Sanjay Biani sir, and all the guest members and all my dear friends for giving me an opportunity to present myself on this huge platform. The topic for my presentation is career in law. So before discussing about career in law, first we should be aware about what law is actually. So law is the official rule of the country. It mentions to do's and not to do's. And when we are talking about the law, we should consider the supreme law of this country, that is the Constitution of India, which dispense the powers to legislature, executive, and the honorable judiciary of India. Next is the scope. Before discussing about scope, I would like to discuss about a common man's views about law. Few people, not everyone, few people says कि जो कुछ नहीं करता है वो लॉ करता है. तो to them I would like to say कि आप एक बार आइए और जब आईपीसी और सीआरपीसी एंड आर्टिकल्स याद करना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि कौन नहीं कर पाता है. So talking about in olden days, there was very limited scope of law, as the students of law can only become an advocate or a judge. But nowadays, with changing time and modernization of the society, the scope of law has become everlasting, because every individual in his life at any point of time requires a lawyer. Every company requires some people who can suggest them for legal things, and every department, even the defense forces, also requires law students in their forces. And the most important thing is very few people select law as their career. So the competition here is not that much, but the scope is everlasting. The next thing is career opportunities.
There are n number of career opportunities in law field, but I have listed down some of them. An individual can become an advocate by doing LLB or BLLB course, and after that registering with the Bar Council of India. An individual can become a public prosecutor by giving some examinations, and he can help genuine people for who are in needs. And many corporates and private companies are in need of people who can provide the legal advices and who can take their stands legally, and these people are called corporate lawyers and legal advisors. The opportunity to join the honorable judiciary of India is also being given by the law study as a judge. For that, we have to appear for the judicial services examination. And last but not the least, the most fascinating thing about law for me is that in law, a lawyer can be in defense forces because before, sorry, a person can be a lawyer in defense forces after giving JAG examination, Judge Advocate General in the Indian Army. So, a lawyer and an officer at the same time. Now, the next question is, does money actually matters? So, I have almost every one of us have heard that money is not everything. But what I think is to realize this statement that money is not everything, we need a lot of money to realize that. So money actually matters. It is not everything, but we require money for everything. So talking about money in this field, the salaries of judges, public prosecutor, and army lawyers is a very handsome salary. They get a handsome paid, and a privately practicing lawyer can earn even crores of rupees. But that is not easy because cases comes to those lawyers who are having experience and who are having good knowledge of their field. So in not in only in law field but in any other field, if you want to be successful, then you have to be proper knowledge and proper experience of your own field. And now the advantages of studying law. The first and the most important advantage that I think is the exposure. Because being a lawyer, we face a lot of people, we fight a lot of cases, and we came across a lot of things, a lot of people, a lot of cases. By that, we came to know about in-depth knowledge of human behavior and human psychology, and which will help us in creating a very good future. And aspirants for government examinations like UPSC, chartered accountant, or company secretary, doing LLB or BLLB is one of the best options because there are many papers which are related to law, so they are automatically getting prepared for them, and polity as well. Shant, your time is up. Please come to the conclusion. Okay, ma'am. So for an ordinary individual, doing not doing law, be having knowledge of law is very important, because if we are having knowledge of law, then only we can have a unbiased point of view about that situation. So concluding my speech, field doesn't matter, and in any field your marks or subjects doesn't matter. What actually matters is your knowledge, your experience about your field, and hard work. With that, I would like to conclude my session. Work hard with smartness. This is the key to success. Thank you all. Thank you, Nishant. Is there any question from the judges' end? Any questions? Ma'am, please unmute yourself. Hello, Nishant. Yes, ma'am. Why law profession you choose? Ma'am, I have choose law profession because I am very passionate about joining the Indian Army, and I am appearing for CDS examination, and I am choosing law as a backup because after doing law, I can appear for JAG entry, and by doing that, I can join Indian Army as well as an officer itself. So that's why I have chosen law as my career. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you Thank for you, being all Nishant. my. Yes, ma'am. Now I would like to invite Mr. Hunar. Unmute. Hunar, are you there? Yes, ma'am.
Okay. A very warm good afternoon to one and all present here, to my teachers and my friends. I am Hunar Sharma. I am from BLLB semester 3rd from Biani Law College. Today's my BICON topic is law career option, courses and job opportunities. So here we start. Law career option and job opportunities. First of all, while we have choose the law, we have to know what is law means. So law means law is the body of principle recognized and applied by the state in the administration of justice. And full form of LLB is, ma'am, please wait. And the full form of LLB is Law Legum Bachelors. Many of the people, those who are doing LLB, they don't know the full form of LLB. So then we have the next slide. Benefits of completing law. When we are completing law, there are multitudes of careers option, financial stabilities, respect and prestige, awareness of rights and responsibilities, development of self-confidence, and intellectual challenges. And after this, the courses which offered by law offered bachelor's of LLB 3 years, integrated undergraduate degree BLLB 5 years, master of LLM or business of law, or doctor of philosophy. Jobs after completing law is you can be an advocate, you can go in judiciary, you can go in private companies, you can write law books also, and legal advisor also, and teaching. Opportunities after completing the laws are you can be a lawyer or a paralegal or a legal secretary or a compliance specialist or a conflicts analyst and legal recruiter, and also a court messenger and court administrator. I hope you like my project. Thank you. हेलो होनार, Yes, ma'am. आपने बताया Yes, ma'am. what is law, Yes, ma'am. Yes, ma'am. who makes the law, Ma'am. Yes, ma'am. कानून कौन बनाता है, Ma'am, government, constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बता रखा है, No, ma'am. No idea. स्टेट पढ़ा आपने, Yes, ma'am. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 देखा आपने, Yes, पढ़ा, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So now I would like to invite Miss Tanu. Yes, Tanu, please start with your presentation. Good afternoon, teachers. I am Tanu Kalyan from Biani Law College. So today I am going to discuss about the status of legal education in India in global context. Here is my presentation. Is it visible, ma'am? Ma'am, my presentation is visible or not? It's not visible. Can you try to share it again? Tanu? Ma'am, it's... Your screen is sharing, but your presentation is not visible. So give it one more try. Ma'am, it's loading.
Tanu, you please resolve your problem. By that time, we will move towards the e-poster presentation and we will come back to you. So I would like to invite Ravina Singh and Shivantika. Are you there? Our first presenter for e-poster presentation. शो ही नहीं हो रहा और ना ये चल रहा Tanu, please It mute was not yourself. responding. We will take you afterwards. You can resolve your problem by that. Ravina, are you there? Yes, Ravina. Okay, so Ravina, please start with your e-poster presentation. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. I present here. I Ravina Singh and Shivantika Zadon, BWork Fashion Designing third year. Is present here to explain over e-poster on topic impact on fashion, COVID-19 epidemic on the Yes, Ravina. pandemic on the fashion Presentation is industry. visible. Ravina, you can start presenting your presentation is visible. Your e-poster is visible. You can start talking about it. Ravina, are you there? Can you hear me? Audio on? Yes, ma'am. Ravina, please start. Everything is fine. Your presentation is visible. You are audible also. Please start. Okay, ma'am. Good morning, good afternoon, everyone. I present my e-poster impact on the COVID-19 pandemic on the fashion industry. I present my poster through COVID-19 pandemic affect the global fashion industry as government closed down manufacturing units, stores closures, and event cancellations to stop the spread virus. एज वेल एज मैम इसके जो मैन्युफैक्चरर्स है ना उसमें सेल्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है पीपल्स वर स्टेइंग एट होम देयर फॉर लेस emphasis on getting dress up and buying clothes which ultimately affect sales and opportunities है डिज़ाइनर्स विथ डिज़ाइनर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिली है जिससे वो क्रिएटिव माइंड से अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर सके एंड लोगों को सेव कर सके कोविड-19 से जिससे उन्होंने अपने मास्क डिज़ाइन किए अलग अलग वेरिएशंस में और मैचिंग मास्क क्रिएट किया जिससे उनके आउटफिट में मैच हो और वो डिज़ाइनर लगे मतलब फैशनेबल दिखे और रिटेलर्स को भी बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा उनके डिपार्टमेंट को और उन्होंने अपने ऑनलाइन वेबसाइट एंड पेज उन्होंने शुरू किए जिससे कस्टमर्स को उनके साथ कनेक्ट इजीली हो और वो अपने प्रोडक्ट यूज़ कर सके उनके हेलो Ravina, please continue. यस मैम मेरा कंप्लीट हो चुका है ओके थैंक यू मैम Is there any question from the judges end? मीना आपका प्रेजेंटेशन हमने अभी देखा यस मैम यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की बात आप कर रहे हैं यस मैम तो जैसे स्किन फ्रेंडली कुछ चीजें डिजाइन करी जा रही हैं अभी फैशन डिजाइनर्स की तरफ से और भी Yes, बहुत ma'am. सारे कि भाई वायरस को ये चीजें रोक सकती है कुछ इस तरह के मास्क डिजाइन कर रहे हैं आप बात कर रहे थे अभी यस तो मैम आपको क्या लगता है आप अपना एक व्यू दीजिए कि आपको अगर फैशन इंडस्ट्री में जाना है फैशन इंडस्ट्री को बूम करना है आगे तो आप अपनी तरफ से कौन से ऐसे सजेशंस देंगे मैम अगर फैशन इंडस्ट्री में जाना है एज अ स्टूडेंट एडवाइस देना पड़ेगा आप ऐसे बोल रहे हैं हाँ जी आप भी तो कुछ तो- क्रिएट करने का सोच रहे हैं यस मैम आपके सजेशंस हम जानना चाह रहे हैं मैम फैशन इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मतलब कि आप
उसमें कुछ भी कर सकते हैं, अपने क्लोथिंग ब्रांड खोल सकते हैं, आप फैशन स्टाइलिंग कर सकते हैं, फैशन स्टाइलिंग में जा सकते हैं, और मर्चेंडाइजिंग में जा सकते हैं। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं इसमें आज आप कर सकते हैं। नहीं, ये जो 7-8 महीने हम लोगों ने निकाले हैं, तो यस उस मैम। टाइम पे आप भी घर पर रहे, तो आपने क्या सोचा कि फैशन इंडस्ट्री के अंदर मैं अगर एज अ फैशन डिजाइनर मैं एंट्री लेती हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे आगे के लिए जो क्लोथिंग है या ड्रेस स्टाइलिंग है तो उसमें मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? यस मैम, चेंजेस ये है कि हम अपना जो फैशन है वो हम रिसाइकल कर सकें। जैसे मतलब हम क्लोथिंग फैब्रिक को सेव कर सकें, फिर हम रीयूज़ कर सकें क्लोथ्स को। हम हाँ, मतलब सबसे जरूरी चीज तो कि अब लोगों के पास में जैसे पहले बेतहाशा मनी जो है हर इवेंट और हर ओकेजन पे हुआ करता था लोगों के पास में, अब वो नहीं होगा, तो उसको रीयूज करने के यस मैम। तरीके आप लोगों को निकालने होंगे कि हम जो ड्रेसेस जो पहले यूज करके छोड़ देते थे तो अब वो रीयूज कर सकते हैं यस उनको। मैम, और तो अपनी स्टाइल से अलग अलग वेरिएशंस से। चलिए, थैंक यू। Thank you, Ravina. Now moving towards Tanu. Tanu, please start with your oral presentation as you could not complete it. Yes, Tanu. Sorry, ma'am, for the inconvenience. That's okay. Your presentation is visible now. Okay. You can start with your presentation. Today we were going to discuss about status of legal education in India in a global context. Second slide, please. So in this topic, we were going to discuss about the introduction and two bodies of legal education, three set of legal education in India, changing contours of legal education, and conclusion. Change, please. So, legal education traditionally has been neglected in India. It is one area in which there is no change during the last 150 years, except for the duration of courses and addition of some fundamental subjects. In India, legal education is more theoretically rather than practical exposure. National Law School experiment in India, which has to an extent revived the interest in legal education to remain elitist and out of reach for children from middle and lower groups. Since the past few years, the roles of lawyers have drastically changed. Their roles demand specialized knowledge and skills. Next slide. So, in India, legal education is coming under twin bodies, Bar Council of India and University Grant Commission. After the enactment of Advocates Act 1961, Bar Council of India becomes the apex body for the entire legal profession. Section 7 of Subclause 1 of Advocates Act provides that one of the functions of BCI is to recognize universities whose degree in law shall be qualified for enrollment as an advocate. Second, however, sorry, can you? However, legal education remain within the purview of University Grant Commission, which was an expert body constituted by the Government of India under UGC Act 1956 with a view to coordinate and determine standards in institution for higher education or research or scientific and technological institution. Stratification of legal education also crept in the country with the establishment of national law schools and global law schools. Currently, there are three set of legal education institutions in the country. Global Law School for the upper rich, which collect higher fees, profess to provide legal education at global standards with collaboration with leading law schools in US and UK. National law schools for the rich, where fees are comparatively high and is rising, where the elite student from upper strata society. Other law schools for middle class and poor students with a facility with law facility and low quality intake. There were some changes in the contour of legal practice. Many corporate houses involved in litigation not for winning the litigation but to get the best out of it. Individual clients too have been expecting a lawyer to be a solution provider rather than a litigation manager. With the changes brought in procedural law in the country in 2005, and the court has moved
or the courts have moved only to litigation management modes. While the Law Commission has advocated the needs for the shift to provide objective and methodology in legal education in the change of requirement of law practice. Now here I want to conclude my presentation. Legal education is going through a very exciting phase. In India, India has the largest population of lawyers in the world. There is a need for eminent lawyers. The opportunity for bring a bright law graduate are massive, and the new generation law schools have a major role to improve the standards of legal education in India. Hence, the scholars of legal education is becoming more and more specialized as well as envisioned by the well wishers of the legal professionals. Thank you so much. तनु, यस मैम। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन है? यस मैम, राइट टू एजुकेशन है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे 6 to लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और भी है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स में? आई डोंट नो। चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, Tanu. Now I would like to invite Shaheen Khan and Aditi Seni for their presentation, e-poster presentation. Good afternoon, honorable guests and respected teachers and everyone present here. I, Shaheen Khan, along with Aditi Sani of BWOK Fashion Designing Second Year, want to explain what we have prepared in our e-poster. Our e-poster is on career in fashion industry. As we all know, I am a student of fashion designing and my co-participant also. So we'll briefly explain the working and careers of our fashion designing. As everyone thinks that if a student is pursuing fashion designing, so it must be tailoring. But it is not like that, and it is not the whole truth. We also have numerous more career options. Including some of them are fashion illustrator, fashion stylist, textile designer, public fashion public relation, garment technologist, retail buyer, personal stylist, merchandiser, fashion photography, etc. But as we have a shortage of time, so I'd like to explain some of them only. फर्स्ट फैशन इलस्ट्रेटर। फैशन इलस्ट्रेटर एक तरह से स्केचेस बनाता है एक अपने क्लाइंट के लिए, जो उसका क्लाइंट उसको बताता जाता है चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग वो एक स्केच तैयार करता है। उसमें उसकी एक्सेसरीज भी आती हैं, मतलब फुटवेयर से लेके उसका हैट वगैरह सब चीज़ से ऑल इंक्लूडिव वो उसका एक स्केच रेडी करके अपने क्लाइंट को दे देता है। फैशन स्टाइलिस्ट क्या करता है कि एक मतलब फैशन स्टाइलिस्ट का ये होता है कि उसको मेकअप भी देखना पड़ता है, फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ उसके अंडर में आता है, उसको सब कुछ ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ता है। सेकेंड देन थर्ड इज टेक्सटाइल डिज़ाइनर। टेक्सटाइल डिज़ाइनर मतलब जो हमारा फैब्रिक होता है, टेक्सटाइल होता है, मतलब वो फैब्रिक जो 2D में हम यूज़ करते हैं हमारे गारमेंट्स को बनाने के लिए, वो हमारा टेक्सटाइल डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। मतलब हमारा फैब्रिक वूवन होगा, नेटेड होगा, मतलब सर्दियों के लिए होगा, गर्मियों के लिए होगा। दैट अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर विल डिसाइड। सेकेंड नेक्स्ट है फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर जैसे कि अब सब लोग जानते ही हैं कि फैशन डिज़ाइनर में मतलब उसका हम सब कुछ रेडी करते हैं, ड्रेस वगैरह, फुटवेयर, मेकअप वगैरह सब चीज़ें उसमें मतलब एक अच्छे से प्रेजेंटेशन आ जाती है। देन आता है फैशन राइटर, मतलब जो फैशन के बारे में लिखते हैं, मतलब जो फैशन के बारे में लिखते हैं कि फैशन में क्या आना चाहिए फ्यूचर में, क्या अभी फैशन के बारे में चल रहा है, एंड मतलब फ्यूचर में क्या आना चाहिए, जो पास्ट में हो गया वो सब चीज़ें फैशन राइटर एक अपनी मैगजीन में
न्यूज़पेपर्स में अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, ब्लॉग्स देते हैं, अपने टेलीविज़न पे इंटरव्यूज़ देते हैं। मर्चेंडाइज़र होते हैं जो मीन्स एक तरह से इंटरमीडिएट होते हैं, वो खुद मतलब जो बेच रहा है डिज़ाइनर जो है या फिर जो एक कंपनी है उससे वो खरीदता है एंड बाद में रिटेल उसको करता है या एक्सपोर्ट करता है हम बोल देंगे। तो उसको वो एक्सपोर्ट करता है, देन उसको रिटेल बायर्स खरीदते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल उसको सेल आउट करते हैं। देन पर्सनल स्टाइलिस्ट आता है, जैसे हमारे इंडस्ट्री में जानते ही हैं आप सब लोग, हॉट कुटूर गारमेंट्स होते हैं, तो वो एक तरह से पर्सनल स्टाइलिस्ट जो होता है वो उन पे वर्क करता है, मतलब उन हॉट कुटूर गारमेंट के अकॉर्डिंग वो फुटवेयर डिसाइड करता है, एक्सेसरीज डिसाइड करता है, ज्वेलरी डिसाइड करता है, पर्स हो गया, गॉगल्स, हैट वगैरह सब कुछ वो अपना डिसाइड करता है। देन आता है फैशन पब्लिक रिलेशन, मतलब इसमें पीआर्स इसको हम बोलते हैं। तो इनका काम होता है कि फैशन लेबल्स और इन सबको स्ट्रॉन्ग बनाना, ब्रांड का एक जो ब्रांड नेम होता है उसको पब्लिश करना होता है इनका। नेक्स्ट है गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट, वो जॉब प्रोवाइड करता है एंड Shaheen, your time is up. Okay, ma'am. Thank you, all of you. Thank you for listening me and giving me your precious time. Thank you. शाहीन, फैशन ब्लॉगर का क्या रोल है फैशन को रिप्रेजेंट करने में, स्टाइलिंग में या किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में? मैम फैशन ब्लॉगर जो होता है वो फैशन के बारे में लिखता है कि मतलब अभी हमारा क्या चल रहा है फैशन में एंड फ्यूचर में क्या आने वाला है। जैसे अभी हमारी रिसेंट सिचुएशन है कि लोग इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं परचेज कर पा रहे, तो वो अपने ऐसे मतलब आर्टिकल्स, अपना ऐसा क्वार्टर्स प्रेजेंट करते हैं, ऐसे क्वार्टर्स मतलब वो लिखते हैं कि जो भाई लोगों को मतलब इंस्पायर करता है कि भाई हाँ ठीक है, आपको ये क्यों खरीदना चाहिए या फिर ये क्यों नहीं खरीदना चाहिए। मतलब वो लोगों को फैशन के लिए मतलब अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने आर्टिकल्स, अपने जो भी मतलब उनके फोटोज हैं या फिर जो भी मतलब वो लिखते हैं या प्रेजेंट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, वो सब चीज़ें वो प्रेजेंट करते हैं फैशन को प्रमोट करने के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you. I thank all the participants for sharing your reflective knowledge with us. Biani wishes you all a very bright future ahead. Now, moving forward, I would like to say aim is to be the best you can. Aim the best that you can. When you have done it, you will be in a winner always. You will always be a winner. So, with this quote, it is time to recognize the winners for the oral and the e posters presentation. For this, I would like to request our judges, Dr. Rihanna Khan and Ms. Malti Saxena, to announce the results. Before that, I would like to say something about our college. At Biani Group of College, one finds a perfect blend of professional and technical education with environment for research and innovation. Our faculty members are committed to providing a world-class education to the students. We train young minds with an ethical and social vision. We instill in them a positive value system that shapes the attitude, outlook, and conduct through our personality enhancement program and skill enhancement program. The focus is on achieving the professional excellence and to impart the real time knowledge. We offer a wide range of courses along with skill course and Japan technical internship program. The Center of Excellence for Digital Innovation at Biani Group of Colleges gives you the exposure to the latest marketing trends and technologies happening in this industry. The research activities at Biani Group of Colleges are encouraged through international exchange programs that involve an integration of academic excellence and research based development. Our association with the leading universities and industries from Japan unfolds quantum exposure for our students. The Entrepreneurship Development Cell and Center of Excellence for Innovations are the initiates to give first-hand exposure to the young students in the areas of digital marketing, design, technology,
healthcare, biotechnology, and management. Kalpana Chawla Memorial Awards are given annually by the institution to the students of class 12th. Biani International Conference and Technical Internship Training Program are the key features of Biani Group of Colleges. We have excellent infrastructure where students get all the facilities like smart classrooms, auditorium, conference hall, Wi Fi, on campus hostel, canteen, sports area, etc. These were all the achievements of Biani. Also, I would like to mention this that I feel proud to say this that more than 1,000 viewers are watching this conference through Facebook and YouTube Live. With this, let me take an opportunity to introduce you about some of the websites and apps that are introduced by Biani Group of Colleges. The Biani Group of Colleges, in that we have a study-based material website called gurukpo.com. Its app is named as Guru KPO Plus, and we have a newspaper too, which is named as Biani Times. All of these are founded by Dr. Sanjay Biani. GuruKPO.com comprises of study material and educational videos that are available free of cost from class 10th to university level. We have Guru KPO Plus, that is an app for education. It is an e-learning app. The app offers comprehensive learning programs that are related to management, commerce, science, biotechnology, information technology, humanities, journalism, fashion, nursing, healthcare, and pharmacy, along with soft skills also. This app offers free live classes by best educators. We have in Bayani Group of Colleges facilities that are for the overall development. We have Bayani TV and community radio station, that is the Radio Selfie 90.8 FM, to nurture the students. The institution publishes Bayani Times newspaper that is published every month. Bayani TV has its own features, which has many documentaries, series of Srimad Bhagavad Gita, Sanjay Ki Nazar Se, and The Counselor Show. These are some more achievements and the contributions of Bayani Group of Colleges to nurture the students and make them more aware and make them expose them to the world and learn from the world. Thank you. Moving forward to the award ceremony, I would like the judges to announce the judgment. A very good evening to all of you. आज का जो हमारा सेशंस रहे उसके बाद में हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन सेशन हुए, ओरल प्रेजेंटेशन, जिन भी जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उनके जो प्रेजेंटेशन थे वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा। और हमारे जो थीम था आज का, रीडिस्कवरिंग पैशन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, उससे रिलेटेड जो भी उन्होंने ओरल प्रेजेंटेशंस यहाँ पर और ई पोस्टर प्रेजेंट किए स्टूडेंट्स ने, उनका रिजल्ट अब मेरे हाथ में है। तो सबसे पहले मैं ओरल प्रेजेंटेशन का रिजल्ट अनाउंस करना चाह रही हूँ यहाँ पे। उसमें रनर अप रही हैं मिस तनु, लॉ डिपार्टमेंट से। कॉन्ग्रेचुलेशंस तनु। ओरल प्रेजेंटेशन में फर्स्ट प्राइज विनर रही हैं नेहा शर्मा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से।
कॉन्ग्रेचुलेशंस नेहा। और अब हम बात कर रहे हैं ई पोस्टर्स की। स्टूडेंट्स जो फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ई पोस्टर प्रेजेंट किए और बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ने करियर अपॉर्चुनिटीज इन फैशन डिजाइनिंग को साकार किया। अपने प्रेजेंटेशन के अपनी एक स्लाइड में उन्होंने अपनी बात को पूरी तरह से रखा है। तो ई पोस्टर प्रेजेंटेशन की जो रनर अप रही हैं वो रही हैं रवीना और मिस शिवांतिका। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। और ई पोस्टर में विनर रही हैं फर्स्ट प्राइज की शाहीन एंड आदिति। शाहीन एंड अदिति, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो भी यहाँ पे कंटेस्टेंट्स आए थे प्रेजेंटेशंस के लिए उन सभी को बहुत बधाई। आप सभी ने बहुत अच्छे यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। Thank you, ma'am, and congratulations to all of the winners. Now, we have been listening to our distinguished guests, eminent speakers, and participants. All these valuable insights has given us a new perspective. With this, I would like to invite our Honorable Organizing Chair, Professor. With this, I would like to invite our Principal Ma'am, Dr. Neha Pandey, Principal of Biani Girls College, for her closing remarks. Good evening, everyone. In fact, I was, hearing to the presentations given by the students, and they have been doing extremely well. But since we are coming to the, final part of the conference, let us just summarize what we did for 3 days. So, as all of you know, that the theme for the conference this year was the new normal industry academia alliance in post-COVID era. And I think most of the speakers have spoken very well. They have really enriched our knowledge and we feel delighted. And I'm sure the students would have also been benefited by these invited speakers. And let me take back to you the first day when we had guest of honor, Professor Rajiv Jain, Honorable Vice Chancellor of University of Rajasthan. And on second day, we had chief guest, Professor Rajesh Kothari, who is the Vice Chancellor for ICFA University. And on the third day, we had chief guest today, that is Shri Om Thanvi ji, who is the Honorable Vice Chancellor for Haridev Joshi Journalism University, and also for Rajasthan Skill University. And today we had two guests of honors. One was Professor Naveen Mathur, who came in the morning session, inaugural session, and also Mr. Syed Shahid Hassan Sahab, who's the chairperson for Law Bar Council of Rajasthan. And over these 3 days, we had many speakers coming up from Japan, USA, West Indies, Oman, Antigua, and many other countries. And we had almost 40 speakers over these 3 days. So the 3 days have been very, very knowledge sharing kind of sessions. And I'm sure all of us have really taken a note, and certainly there have been some learnings from that. And there are new critical applications for research, new ways to connect, and there are many scientific collaborations about which we have discussed even during the pandemic. And there was a presentation given by our industry partner, Well Group, who talked about the opportunities for the nursing care students in Japan. They also have opened up opportunities for the IT industry for the students who are studying in Biani Group of Colleges. So the outcome, I can say again for this 3 days conference, is that the students who are from IT sector should start preparing themselves for the language courses, because they can start working immediately after their graduation, provided they have language skills as well. So during their 3-year course, they should try to attain at least N3 level of certification from that's called JLPT, Japanese Language Proficiency Test, N3 level if they require.
and then they can certainly get the jobs with the Well Group. That is the opening that Well Group has given for the IT sector students. And a new virtual reality opens up a wide field of opportunities, and questions arise if we will ever go back to the old normal. Because traveling to attend a meeting far off, even in Jaipur kind of a city, would take an hour. But when I sit today and do it via, online platform, it becomes so easy for me. So I think I would rather love to stay with this new normal. So I think there have been a lot of takeaways in this regard, be it a faculty, be it a research scholar, be it an industry person, we all had something or the other to take from this conference. And with these words, I would like to sum up this conference as a very knowledgeable session that has gone by. And I'm really thankful for my industry partners and academic partners from Japan who have always been very, very, supportive in organizing this conference. We have Saitama University, JAIST, Kyosho University, Kyoto University, Kyushu, and we have our industry partners, Well Group, Ise Foods, Bioseeds, Biosolutions, all of, with the efforts of everyone, and certainly all the faculty members, students, staff of Biani Group of Colleges have put in their best foot forward to make this conference a great success. Now, I would like to invite Professor Manish Biani, Conference Chair, to give his closing remarks. Thank you, Dr. Neha. I am audible? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. I think we had a wonderful time in last Yes, 3 days. Uh, I believe that all of you have well done through this first experience, that how virtually we can connect and we can call the speakers from different parts. Actually, this time it is one of the wonderful experience to call the speakers from many countries. So this is one of the good experience that we realize that by this way we are free to call anyone from anywhere. There is no need to worry about any travel, no budget, and no time consuming, no exhaustion. I think it's wonderful. So this is, I think, one of the new normal of BICON 2020 that we learned we can organize. This is wonderful experience, and I really congratulate all the IT members. All the IT members to fantastically organizing this event. It is very smooth actually. I really experienced. So our very youngest member Aditya and other team IT members for perfectly organizing this event. And of course, the hard work done by Neha Mittal ma'am, all the 3 days, anchoring, connecting all the speakers. Wonderful job, I think. Thank you, Only sir. I would prefer if you can have more Japanese language so you can more better pronounce the Japanese cities and So Japanese I will countries. work on that. Actually, I appreciate all the members if you learn the Japanese, because the language is the first to make the relationship. If you don't know the language, you cannot think for relationship. So it's very important when we are on the global platform, we must need to recognize the importance of language and try to adapt. Because this is my experience. Whenever I go outside in Japan, everyone asks how many language you can speak. So I say three. They feel proud for that. So please learn the Japanese language. And of course, I think it's a great effort. Dr. Tarun and his team and Dr. Neha, you have done wonderful job. I hardly see this time that how you perfectly manage, organize this event. So I really impressed with the work. And since the theme of this work is a new normal, I think all the 3 days, 7 departments have learned the new word, the new normal. All is spoke about COVID-19. I was thinking if someone can discuss about COVID-20 or COVID-21, because this is what we learn. We should talk about the future, how we are ready for the future, how we can deal with the COVID-20 or COVID-21, which is maybe coming in next year. So I think with all the different discipline, if we can more prepare for the future and learn how we, because uh, only then you can lead the nation, lead the world. If you are in advance, if you can learn how we need the tomorrow. So I would be more happy. Actually, few speakers use the term virus X, and I think those have some imagination that what we need in the future.
So I wanted you all to understand the difference and promote the mutual understanding among the participants between all the countries. And through this symposium, this is the platform where we can develop the relationship, we improve our knowledge, our networking, and prepare for the better future. I would like to pay my deep respect to all the participants from all I the would like countries. to add something new, that this time we are getting message from the chief minister of our state, Yes, even health minister, and even education ministers. So it is only due yes, to the Gyan Singh Ji Gotwal sir. We are having yes, 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 good guest, chief yes. guest of honor. Every day, some vice chancellor is connected with our speaker. So this is a great impact and great message to the society. Yeah, So, I really appreciate Dancing ध्यान Ji. सिंह जी से आप मिले हैं पहले? Of course, I know very well. Please, Yeah. So this is because your experience, the networking do that you already have created is the assets for the Biani. because So I networking really is very appreciate. important. Yeah, it's very important. Actually, every time I ask the faculty members to please gain as a new resolution, you should gain the new networking as a new resolution every year. So here I would like to say one thing, that in Japan we have one old saying in Japanese that we call ichigo ichie. Please learn the word ichigo ichie. This word is literally translated one precious opportunity to meet someone in all your life. So I think Beacon is a platform where we can get this opportunity to meet a person that we cannot do in all our life. So this word ichigo ichie is, I think, wonderful word to learn from that. So with this, I would like to appreciate. And although we missed some things, that we could not have the celebration, we could not have the lunch together, we could not have the dinner together. So those part I really missed. But I think our purpose of this event to improve the networking, to learn something new that we cannot do in our normal classroom with all the departments, and our mission in Biani, I think, to join learning each other and to grow faster than other world, and help to others. So this is, I think, we achieved by this theme. And with this, I would like to officially close this event, this 3-day event. And I hope maybe the same platform will be used in 2021, maybe with bigger platform where we have more countries, more speakers, more better knowledge, and please get be ready for future with this new normal. With this, I appreciate everyone. Thank you very much for your great efforts. I really appreciate this platform we created, so we have to keep it grown faster as much as we can. Thank you so much. Thank you again. I really missed all of your presence this time. One more, I would like to add some one more thing. Yes. This time we are conducting the symposium virtually, but we have making small errors, mistakes, and we have learned out of it. So this is the right time that we know what are the mistakes, so that in future it should not be repeated. Yeah. So every person should note it down. So I request all the members to please send me 5 important suggestions. We will compile and we will make a guidelines, so that in future when we connect, then definitely it will give a world class impression. It's a error free program. It's with more perfection. So I request all the members, when we leave this our institution, then submit me 5 points and details of that points, how we can improve the things. Is it right? Is it right? So this will serve our purpose. So immediately Monday we will make detailed guidelines how to conduct the virtual symposium more effectively in future. And this will Yes. Yes. We will keep be learning from those things. Yes. Monday, Tuesday, Wednesday. Definitely we will make it black and white, and we will improve the things in future. Okay. So So at thank last, you I again. got from the quote of that Dhyan Singh Ji. But sir, any remark? Any remark? नहीं, okay, okay, all is well. All is well. Okay, all is well.
But one thing I realized, what we have different in the world, Indian are more friendly, more open. So that's make the difference. And I think with this COVID era, our this quality will bring to become the top three developed economy, I think, in the coming decade, I think. So it's a time for India that how we can come up and to become top three economy in the world with our traditional, with our tradition, with our quality. That we are very open, we are very friendly for the everyone. So with this learning, I would like to close the event. So let me have a clap and everyone, because only those things which we can share now. So let's have a new idea of clapping. I will clap 3 times. Okay, 1, 2, 3. Okay, everyone is ready? I can see only few screen. Okay. Okay. Ready? All are ready? Okay. Yes. 5, 2, 3. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And last important award that we would like to give to Anupam Wellman. Very good listener. Very good listener. Very good listener. And we round of applause. I think she is the most dedicated persons to Biani, I think. Thank you. Thank you very much to all the dignitaries. Now we will capture our memories. Yes, should sir. should we have the national song? Yeah. In fact, outside is locked. We have Madan sir ready with the balloons, the usual balloon ceremony that we used to have. Yeah. So should we have the national song? Outside the. Outside? Here we can capture the photograph. Okay. Okay. So, okay. Can we connect it outside also? Yes, yes, we will do. Okay. Okay. Please enjoy. Let's enjoy the balloon ceremony. Yes, connected. So it's a coordination of one person, Tarun sir, a new person, a young person, first time. Who responsible? So we talk about in our account, both are young and first time they are doing that. It means young is young. दिखा दिया मैंने तो बैक कैमरा ही नहीं चलता इसमें रूम में बैलून दिखा बैलून दिखा Wonderful. सभी बाहर सारे बाहर चलते हैं वहां से दिख Radio function.